Hello everyone, this is Sudipta welcoming you all to the StudyIQ OPSC channel. So आज हमें बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिबा कहा उपरे ना कंप्यूटर एमसीक्यूज उपरे जोडा कि जेकोनसी ओडिशा गवर्नमेंट रो एग्जाम आसीओ जोथरे कि कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आसीबो जोटा कि आपन को बहुत ही हेल्पफुल करिवो एंड आपन माने जदी एपर्यंत एनरोल करि नांदी देन हमर परीक्षा एंड प्रथम बैच लॉन्च हे जाईची बोथ फॉर OPSC SO pai and OSSC CGL pai. Do enroll the batch and stream the live session. And guys, जदि भी आपण मानकर किछि भी डाउट रहिला देन कमेंट सेक्शन रे आपण मते ए बैच रो एंड रे पछरी परिबे. सो लेट न करी कि फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास कोन देखिबा. अगेन कहि दोछि आपण माने किछि भी कोड यूज करी कि लाइक सब टीचर्स मानकर एजुकेटर्स मानकर डिफरेंट कोड अच्छी बट मो कोड होची SSP लाइफ आपण ताकू यूज कले गोटे डिस्काउंटेड प्राइस सहित अवेल करि परिबे ए बैच को. ठीक अछि बोथ हमर चाहे OPSC लाइक ओएस पई जदि आपण प्रिपरेशन करूचंती देन भी आपनकर बैच लॉन्च हे जाई छी जोटा कि 5th ऑफ मार्च रो हमर लॉन्च ऑलरेडी हे सारिलानी एंड एटा गोटे फंडामेंटल बेंच रहउची बोथ प्री एंड मेंस पई एंड जदि आपण माने यूज करबा को चाहउचंती मो कोड SSP लाइफ देन आपण ओडी डिस्काउंटेड प्राइस सहित पाई जिवे बैच को एनरोलमेंट पाई जिवे एंड हमर 15th ऑफ फेब्रुअरी रो ऑलरेडी CGL एंड SO बैच लॉन्च हे सारिलानी जो माने भी तांका प्रिपरेशन को अधिक बूस्ट दे पई चाहउचंती स्ट्रांग करिया को चाहउचंती से माने मो कोड SSP लाइफ यूज करिकि बैच को परचेस करि परिबे. सो लेट न करिकि फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास कोन अछि ताकू जल्दी देखिबा. ठीक अछि. सो लेट्स सी first question of the class is who is known as the father of the computer. Who is known as the father of the computer? Below are the options, tell me from the below जोटा हमर कोन राइट आंसर हबो दैट हु इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर. दिस इज व्हाट न चार्ल्स बेबेज कंफ्यूज हेबेनी. अलन ट्यूरिंग इज रिलेटेबल टू कंप्यूटर दैट ही इज द फादर ऑफ कोन मॉडर्न कंप्यूटिंग. ओके सो डॉक्टर माने कंफ्यूज हेबेनी दीटा आंसर भितरे कि कोटा हमर राइट आंसर हबो अबाउट व्हाट अबाउट द चार्ल्स बेबेज और द मॉडर्न कंप्यूटिंग. ओके देखो सो चार्ल्स बेबेज कौन होचंती ना डिजाइन द एनालिटिकल इंजिन की डिजाइन करिथिले. हु फर्स्ट इन्वेंटेड द एनालिटिकल डिजाइन जदी करिवो लाइक क्वेश्चन आसिला देन तार भी आंसर आपण माने चार्ल्स बेबेज मारिबे. व्हेयर एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग जदी आसिला देन अलन ट्यूरिंग एंड तांको ना अनुसार कोन ना ट्यूरिंग मशीन भी से इन्वेंट करिथिले. ओके एंड इनिग्मा कोड जोटा इन्वेंट करिथिले व्हेन द वर्ल्ड वॉर 2 टाइम रे हमर कोन इन्वेंट करिथिले. एंड अबाउट द जॉन वॉन न्यूमैन डेवलप्ड द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर. देखंतु न्यूमैन रो ही रिलेट हे कि तांको ना आसीबो. वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर किए करिथिले ना जॉन वॉन न्यूमैन. ब्लेस पास्कल किए करिथिले ना पास्कल लाइन इन्वेंट हेतिला कहा द्वारा जोटा कि गोटे मेकानिकल कैलकुलेटर कहा द्वारा इन्वेंट हेतिला ना ब्लेस पास्कल को द्वारा. मने रहिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु which of the following is an output device. So there is options keyboard, mouse, monitor, scanner. So from the below which is the right answer? Now this is what this is monitor. How? Because monitor an output device that displays visual information from the computer. Why not others? Because keyboard an input device रे जाउची, mouse input device रे जाउची, scanner input device रे जाउची and तांकर performance भी हमर कोन तांका according different अछि. Okay next देखो question which unit is responsible for all logical and mathematical operations in a computer. Which unit is responsible for all logical and mathematical operations in a computer? The options are control unit, arithmetic logic unit, memory unit or input unit. Let's see the answer which is this is LU, that is arithmetic logic unit. Performs all mathematical calculations. देखो ALU लॉजिक आसिला जते बेले लॉजिक वर्डटा आसिला आमे लॉजिकली जिंस कोठु पढुचे हमर कोठु मैथ रु ही पढुचे तो ताकू रिलेट करिक मन रखबे कोन अरिथमेटिक रु कोन आसीबो मैथ आसीबो. सो मैथ रे हमर कोन अछि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ए सब हमर कोथि रे अछि हमर मैथ रे अछि अरिथमेटिक रे अछि. सो ताकू रिलेट करिक मन रखिबो जते बेले आसीबो परफॉर्मेंस ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रिलेट टू व्हाट ना अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. Control unit directs the flow of data and instruction within the CPU.
सो कंट्रोल यूनिट रो कोन काम रहउची रिलेट टू सीपीयू मेमोरी यूनिट मेमोरी मींस कोन स्टोर करके ही रखुतबो स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरीली और परमानेंटली कोठी ना रैम रे रोम रे ओके input unit कौन होची ना receives data from external devices okay example keyboard mouse and send it to computer or for processing okay clear next question देखिबा now what is the full form of CPU ma'am समस्त जानी थिबे what central processing unit central program unit computer processing unit control processing unit so right answer कौन हबा हमर देखो so this is what ना हमरा central processing unit the brain देखो बहुत पिला कंफ्यूज हुंती either this is central processing unit or control processing unit ठीक confusion आसे ना so मन रखिए कौन CPU लाइक मन रखु सेंटर ऑफ अट्रैक्शन किए आम टोटल होल कंप्यूटर सेंटर रो लाइक मन रखियो अच्छा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सीपीयू सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नु मन रखियो सेंट्रल सो से कंट्रोल टोटल माइंड रो जेमती पळेबो सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द फुल फॉर्म ऑफ व्हाट ना सीपीयू द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर रिस्पांसिबल फॉर executing instructions and processing data so central program unit these are the incorrect options according to all okay next so which type of memory is non-volatile the options are RAM cache ROM or register which type of memory is a non-volatile memory option wise देखो कोटा हब right answer ना this is ROM why read only memory एमिति भी पड़े कि फुल फॉर्म ऑफ RAM ROM ए सब रो फुल फॉर्म भी पड़े सो ROM इज रीड ओनली मेमोरी whereas RAM इज रैंडम एक्सेस मेमोरी दिटा टिके ट्रिकली मन रखिबो ठीक अछि रीड ओनली मेमोरी इज अ नॉन वोलेटाइल memory retains data even when the power is off used to store firmware ओके एंड RAM रो काम कोन रहउची ना इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी RAM एंड ROM भीतर एति की मन रखिबे RAM टा कौन ना इज अ काइंड ऑफ वोलेटाइल मेमोरी एंड ROM टा कौन ना इट इज अ काइंड ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी ठीक अछि सो RAM रो काम कौन होची ना लूजेस डाटा व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ RAM रो ये काम होची कि जदी से लाइक हमर शट डाउन करि दउ छ हमें हमर सिस्टम देन जो के डेटा रही थिबो सेटा कोन हमर इरेज हो जाए बट रोम अछि बोले हमर कोन रहउची ना आफ्टर पावर ऑफ ही हमर कोन ना हमर रीड ओनली मेमोरी रे कैप्चर हेगी से रही पारुची ठीक अछि सो कैचे ए टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी दैट टेम्परेरीली स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डाटा फॉर क्विक रिट्रीवल ठीक अछि सपोज आपण माने किछि पीपीटी प्ले करूचंदी या फिर किछि भी डॉक्यूमेंट रखिचंदी सडन बैक हे गला या फिर आपण माने किछि कि एग्जिट हे गला देन पुनी सेम जिंस को जदी आपण माने सेम फोल्डर जाई कि सपोज डॉक्यूमेंट वाला वर्ड एक्सेल किछि भी आपण ओपन करूचंदी तो वर्ड फोल्डर को गले अगेन से ता सिस्टम भीतर भी कोठ ना कोठी रिसेंट वाला व्यूज रे आपण को देखै दबो आपण पुनी ताको रिकवरी करि परिबे रिट्राइव करि परिबे सो दैट्स बिकॉज़ ऑफ व्हाट ना कैच इनसाइड द इनबिल्ट बिकॉज़ ऑफ द इनबिल्ट कैच इन द computer so a type of volatile memory that temporarily stores frequently accessed data for quick retrieval and register a volatile memory register is what it is a volatile memory inside the CPU that stores small amount of data temporarily for processing okay now see the next question what is the smallest unit of data in computer like computer रे हमरा जेति के हमें कोन एक्सप्रेस करूचे तार गोटे कोन यूनिट भाबरे कहि परिबा कोन बीट बाइट निबल किलोबाइट सो फ्रॉम द बिलो कोटा हमरा राइट आंसर हबो दैट सबटू स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा बोली हमें ता कहूचे बीट बाइट निबल किलोबाइट गिव मी द राइट आंसर दिस इज व्हाट बीट why because binary digits is the smallest unit of data in a computer जोटा कि रिप्रेजेंट करूची केते ना 0 और 1 को ताठू तळु को तो किछि नाही बाइट केते करूची ना 8 बिट्स ओके निबल करूची 4 बिट्स किलोबाइट 1024 बाइट्स ओके जोटा कि सबुठू अधिक हो जाउची मने रहइबो बीट देन बाइट देन निबल देन जाई सॉरी बीट देन रहउची निबल देन बाइट देन हमर कोन होची किलोबाइट ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स which generation of computers used vacuum tubes the options are
first, second, third or fourth. This is a most asked question in every exam जो थी भी हमारा कौन ना पढ़ुची computer. So let's see the right answer. This is what आमर फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब आमर यूज होता केबे ना फर्स्ट जनरेशन जिते बेले आमर कोन एते डेवलप हेई नथिला कंप्यूटर रे सेते बेले आमर कोन ना वैक्यूम ट्यूब यूज होउथिला 3 इडियट मूवी रो माने पकई दियो माने पड़ जिवो से टाइम रे आमर कोन यूज होइतिला ना वैक्यूम ट्यूब यूज होइतिला ना सो यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्क्यूटरी जोटा कि 1940s रो 1950s टाइम रे हमर जब इन्वेंट हेइतिला कंप्यूटर फर्स्ट हमर कोन ना वैक्यूम ट्यूब के यूज करिथिले सो लार्ज एंड इनएफिशिएंट एग्जांपल आपण माने काहा को दे परिबे ना फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रो इनियाक एंड यूनिफैक रो ओके सेकंड जनरेशन यूज्ड ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स नेक्स्ट हमर जते बेले डेवलप हे चलिला कोन हेइतिला ना देन हमर ट्रांजिस्टर यूज हैला इंस्टेड ऑफ व्हाट इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर So say that 1940s ro 50s, then 50s ro 60s, then 60s ro 70s, then 70s ro like onwards. So second generation हमर कोन ट्रांजिस्टर यूज हेइथिला इंस्टेड ऑफ व्हाट वैक्यूम ट्यूब्स मेकिंग कंप्यूटर स्मॉलर एंड मोर एफिशिएंट कोन यूज हेइथिला सेकंड जनरेशन को रिलेट करिवो ट्रांजिस्टर सहित थर्ड जनरेशन रे कोन हेइथिला लाइक वैक्यूम ट्यूब तापर आसला ट्रांजिस्टर पर कोन आसला ना इंटीग्रेटेड सर्किट मैम आसीथिला केबे 1960s रो 70s रे आसीथिला जोटा कि थर्ड जनरेशन कोन रहउची ना इंटीग्रेटेड सर्किट्स रहउची फोर्थ जनरेशन रे कोन रहउची ना यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर्स देखो फर्स्ट आसला कौन ना वैक्यूम ट्यूब्स तापर सेकंड जनरेशन इज ट्रांजिस्टर तापर फर्स्ट रु सेकंड को ट्रांजिट हैला ट्रांजिट रो फुणी आउट टिके इंटीग्रेटेड पार्ट आसिला एमिति रिलेट करी करी मन रखिबे देन इंटीग्रेटेड परे जोटा हमर एबे लाइक 2025 जदि आपण कैलकुलेट करूचंती एज्यूम करूचंती आपनकर देन कोन होउची ना हमर माइक्रो प्रोसेसर बहुत टाइप रो कोन न्यूली डेवलप्ड हे गलानी सो आपण माने फोर्थ जनरेशन में लिखि परिबे 1970s रो प्रेजेंट रे कोन यूज होची ना माइक्रो प्रोसेसर्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर द ऑप्शंस आर एमएस वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल क्रोम और टैली Now, which of the following is an example of system software? Let's see the answer. This is what? Operating systems. Okay. So, system software that manages hardware and software. Okay. ताको हमें कौन कहूचे ना हमारा operating systems example Windows, Linux and macOS दे परिबा ठीक अछि एमएस वर्ड रे कोन रहउची ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग गूगल क्रोम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर इंटरनेट ब्राउजिंग टैली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे हमें टैली यूज करूचे मन रहिबो कोड हमरा ऑपरेटिंग सिस्टम्स रे यूज होउची ना विंडोज लिनक्स और मैकओएस ओके मूविंग टू द नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस from the below which of the following is an example of input devices तो ऑप्शंस आर स्पीकर प्रिंटर माउस और मॉनिटर देखंतु इनपुट पचारिला आउटपुट पचारिथिला सो हमर कोन थिला मॉनिटर सो देखंतु इनपुट रे कोन होउची ना दिस इज माउस ओके सो स्पीकर होउची कोन ना आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस साउंड obviously output device printer kon rahuchi na this is also a output device used to print documents monitor is also output device used to display visuals and text jemti ki kahithili agoro so mouse kon rahuchi na input device used to control the cursor and interact with the computer ठीक अछि तो cursor को हमें कोन टाइप रे बुला बुली करी की इनसाइड द कोन हमरा डिस्प्ले जोडा रहुची हमें जे कोन सेंस सिलेक्ट करूचे थ्रू व्हाट माउस ना Next, which key is used to refresh a web page in Windows? हमें तो Windows open करी की किसी work करूचे, then हमें refresh button मारूचे, तो which key is used to refresh a web page in Windows? The options are F1, F5, F12 or F8. This is what? This is F5. Refresh the current web page or Windows F5. F1 कौन करूची ना opens the help menu in the most applications
whereas F12 opens the developer tools in web browsers like Chrome and Edge. गोटे पेज रे आमे थाई कि जदी गोटे F12 ओपन करूचे देन हमर गोटे टूल ओपन हे जाउचे कोथिरे ना आमे हेल्प करि पारुचे सर्च फर्च करूचे जदी Chrome and Edge ता ओपन होउची. सो F8 कोन करूची ना यूज टू एक्सेस द बूट मेन्यू इन ओल्डर वर्जन्स ऑफ विंडोज. नेक्स्ट क्वेश्चन, which memory is volatile in nature? मु तुमको कही कोटा नॉन वोलाटाइल थिला. सो नाउ द टर्म फॉर वोलाटाइल. देखो वोलाटाइल कोटा ना रोम, हार्ड डिस्क, रैम और डीवीडी. टेल मी दिस इज व्हाट ना हमर रैम. बिकॉज देखो ऑड वन आउट इजिली कर देबो वंस तमे जानिलो कि नॉन वोलाटाइल की अछि रोम अछि. दैट मीन्स ता कैटेगरी रही सब थिबो ता भितर गोटे थिबो जोटा कि नथिबो. बिकॉज रोम और रैम आपण मन रखतिले कोन रोम इज द नॉन वोलाटाइल वन whereas RAM is the volatile one. बाकी जहाँ थिबे odd one out करी दबो, right? So random access memory is the volatile memory that loses data when power is turned off. काहे कि ताको volatile कहा जाउची कारण से भूली जाउची. volatile को रिलेट करंतु तार बहुत ही भूला मन सेथि लागि से कोन ना भूली जाउची ताको इतपै volatile कहा जाउची. and हमर ROM कोन से सब मन रखुची. so random other memory कहीं की ताको कहा सॉरी रीड ओनली मेमोरी कहीं ताको कहा जाउची. दिस इज व्हाई रैंडम एक्सेस मेमोरी रैंडमली सब से भूली जाउची सेथि लागि ताको कोन ना रैम कहा जाउची. एंड रीड ओनली मेमोरी कहीं कहा जाउची दिस इज नॉन वोलाटाइल. रीड करूची जे थरे रीड कर दी ता माइंड रे सब स्टक कहि के रहि जाय. दैट मींस हमर कोन रोम इज द नॉन वोलाटाइल वन जोटा कि सब डाटा कैप्चर करके रखुची डाटा लूज होनी. ओके. सो हार्ड डिस्क नॉन वोलाटाइल स्टोरेज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज. डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क नॉन वोलाटाइल ऑप्टिकल स्टोरेज यूज्ड फॉर डाटा स्टोरेज. सो डीवीडी हो हार्ड डिस्क हो या फिर हमर कोन रोम हो these are all kind of non volatile memory. मन रखिबा एमिति भी एग्जाम रे पकई पारे कि रोम न थाई कि पचारिबो from the below which is the कोन नॉन वोलाटाइल मेमोरी. तो इथिरे हमरा हार्ड डिस्क भी थाई पारे डीवीडी भी थाई पारे. सो बेसिकली जेति की पार्ट्स हमर रहिछि सब ऊपर किछि किछि नॉलेज थिबा दरकार. ओके. नेक्स्ट देखिबा What is the full form of HTTP? आपण माने देखि थिबे आमे किछि ब्राउज कला बेले आसे स्टार्टिंग रे HTTP समथिंग समथिंग www एमति किछि आसी थाए ना HTTP आसी थाए नल www आसी थाए किछि भी गोटे लिंक ओपन करिया बेलु आसी थाए. सो ए लिंक रा माने कोन लाइक HTTP स्टैंड फॉर व्हाट हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरलिंक ट्रांसमिशन प्रोसेस, हाई ट्रांसमिशन टेक्स्ट प्रोटोकॉल और हाइपरटेक्स्ट टेक्स्ट प्रोसेसिंग. देखो this is what ना hypertext transfer protocol कौन करूची ना हमर टेक्स्ट को ट्रांसफर करूची एंड सर्च करिबारे हेल्प करूची. दैट्स व्हाई इट इज कोन हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. मन रखिबा हम टेक्स्ट को जते बेले से ट्रांसफर करूची हमकु गोटे गिवन हम जोटा रिक्वायर्ड डाटा अछि ताकू हमकु दोउची. दैट्स व्हाई हमें कोन ताकू कहूचे ना HTTP. सो ट्रांसफर करूची डाटा कोन हम रिक्वायरमेंट अनुसार हमको इंफॉर्मेशन गैदर करके दोउची. दैट्स व्हाई हमें ताकू कोन यूज करूचे एज HTTP ए प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट. ट्रांसफर वेब पेजेस दैट्स व्हाई आपण मन रखिबे ट्रांसफर करूची वेब पेजेस. दैट्स व्हाई दिस इज ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म्स कैलकुलेशंस. मैं बे कहि दिली को पार्ट हमर कैलकुलेशंस को कना स्ट्रांगली सपोर्ट करे कहा द्वारा कैलकुलेशन पॉसिबल होउची कंप्यूटर रे सीपीयू, रैम और हार्ड डिस्क और रोम. लेट्स सी दिस इज व्हाट सीपीयू because the central processing unit जोटा कहि दिल ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मन रखिबो. सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. आमर जेमति कहंदी ना द पावर हाउस ऑफ द बॉडी इज द माइटोकॉन्ड्रिया सेमिति द पावर हाउस द ब्रेन इज ऑफ द कंप्यूटर इज व्हाट द सीपीयू. विदाउट सीपीयू a computer cannot be work. So this is the brain of the computer responsible for performing calculations, executing instructions and processing data. And RAM is a temporarily जोटा हमें कहउतले कोन this is the what random access memory randomly भूली जाउची. that means temporarily use होउची. temporary memory used for storing data during processing but doesn't perform the calculation. So hard disk is storage device that holds data permanently. ओके हार्ड डिस्क रे कोन हमें परमानेंटली डाटा स्टोर करी रखुचे बट दिस इज नॉट हेल्प इन कैलकुलेशंस. सो रोम टा हमर कोन गोटे
स्ट्रॉन्ग मेमोरी जो सब डाटा एक्सेस होकर रोचे बट ये कौन ना आमर गोटे कैलकुलेशन किसी से हेल्प करूनी रिलेट करी मन रखिदब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस so below are the options so from the below which of the like options are right about not a storage devices hard disk is a storage device monitor cd pen drive am storage cd storage so right answer koda habo na this is monitor which is not hard disk cd pen drive these are kind of what storing devices apun mane day to day life re use karuଛନ୍ତି so easily odd one out kari paribe so monitor hoji kono nai display output device that shows visual data but does not store any kind of information okay next which programming language is considered the first high level language which programming language is considered the first high level language this is C Fortran Python or Java कोटा Python Java C विषय सब जानछ मैम Fortran कौन फर्स्ट टाइम सुनिलु की so right answer कौन हबो ना Fortran हबो why because Fortran कौन होची ना formula translation is what ना Fortran okay for is formula and tran is translation nothing else आ भाबिबेनी कि किछि गोटे बहुत ही complicated word टा कौन sudden computer आसी गला so was developed केबे हेतिला ना 1957 by IBM so Fortran को किए हमर इन्वेंट करिथिले कि डेवलप करिथिले कहि परिबे इन्वेंट हबनी कंप्यूटर किछि भी जिंस देते बेले नुवा की like kind of invent हुए ताको हमें कोन डेवलप कहूचे okay so was developed by 1957 and by IBM and is considered the first high level programming language एमिति भी question आसी पारे the first high level programming language is what the options are Fortran C Java Python or Linux something किछि भी दबा so the right answer will be what Fortran मन रखिबो F for Fortran F for first high level programming language okay so C होची developed 1972-57 रे हितला हमर कोन ना Fortran ता परे आसिला 72 रे हमर C by Dennis Ritchie it's a general purpose programming language widely used for system programming what is Python this is created in 1991 by Guido von Rossum what Guido von Rossum द्वारा हितला so it is a high level interpreted language known for its simplicity and the readability Java introduced by Sun Microsystem in 1995 first asila kono na amara Fortran then C then Python then endrest amara Java it is an object oriented language designed for cross platform compatibility using the JVM so which of the following is an operating system MS Word, Linux, Chrome or Photoshop which of the following is an operating system let's see the answer what this is Linux गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम जेमिति हमर कोन जावा रहउची सी प्लस रहउची पाइथन रहउची दिस इज तांको कैटेगरी रही लाइनक्स ही होची गोटे operating system so an OS operating sorry yes then open source operating system that manages hardware and software resources MS Word this is a word processing application used for creating and editing documents तो MS Word हमर यूज होची कोथिरे ना हमर वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन एटा गोटे जोथिरे हमर एडिट आमे तो यूज करू छे डे टू डे लाइफ रे जानि छे सो क्रोम इज ए ब्राउजर फोटोशॉप इज ए ग्राफिक डिजाइन जोथिरे हम कोन इमेज एडिट करू छे ओके नेक्स्ट देखिबा व्हाट डज GUI स्टैंड्स फॉर is that graphical user interface general utility interface graphical uniform interface or global user internet this is what this is graphical user interface a visual way of interacting with a computer using icons windows and the menus instead of text commands so graphical user interface is what na GUI जोटा कि कोथरे हम यूज करू छे ना icons windows and the menus instead of what ना text command बदलले हम ताकू यूज करू छे so general utility interface ए सब ऑप्शन रा हम कोन ऑड वन आउट करि दबा ठीक अछि So, which of the following is an example of open source software? From the below, the right answer is what?
Which of the following is an example of open source software? Windows, Linux, Adobe Photoshop or MS Office? Gote open source software example quota. Now this is what? Linux. Why Linux is so much important, guys? Because Linux is an open source operating system, meaning its source code is freely available for anyone to modify and distribute. Whereas Windows Windows is the proprietary operating systems developed by Microsoft, not an open source. Okay. So what is Adobe Photoshop? Adobe Photoshop ta mane use karuche hi amo mobile le bhi taku use hei paruchi. So it is a paid property software for image editing developed by jota ki paid achi koda free achi na. Linux is the free, rest of all are paid. So MS Office is suite properties, okay, sorry, proprietary productivity applications, Word, Excel, etc. हमरा कोथि MS Office रे आसुची. This is हमरा कोन एको भी crack version रे use करूचे. This is be also paid. Okay, जोटा free रहुची कोटा ना. Linux is the free one. So next question, which computer language is used for artificial intelligence? Tell me. Which computer language is used for what? Artificial intelligence. Java, C, Python or Lisp? Let's see the right answer. This is what? Namora Lisp. Why? The Lisp is one of the oldest programming language used for AI. Sabutu jodi pacharibo emiti which is the oldest programming language, options are they thiba, then sabutu kota na Lisp hochi. Jota kodre jota ki AI re use hochi. Emiti ki sabutu oldest boli taku choose kar dabani because amara start heitila first na amara mane rakhithibo jota asthila first question is the what? This is question nahi man paduni yaar. Gote minute. Photon, right? Reflect भी करूची light देखा जाबनी. So photon टा होची सबटू first. That's why तमे मन रखी परिबो what? Now photon. And Lisp is the oldest programming language जोटा कि यूज होची कोउथरे ना हमर AI रे यूज होची. Okay? Photon and Lisp भितरे टिक्के confuse हबनी. AI रे यूज होची जोटा old सेटा होची Lisp, whereas first generation जोटा यूज होची सेटा होची कोन photon. Okay? So this is due to its flexibility in symbolic processing and rapid phototyping. Okay, Java used in AI for developing machine learning applications and enterprise solutions. So exam re tike ebe update version of question asi jau jota ki tame AI upare and IoT upare machine learning upare tike update hei ki hi jibo, thik achi. So a low, what is the C? Like C is the low level language used for system of programming. Python is a popular modern language for AI and machine learning due to its vast libraries like namaro transfer flow. Oh sorry, tensor flow. Sorry for the. Okay, and the PyTorch. Which shortcut key is used to paste copied content? So copy paste करिया पे हमें को shortcut key को use करूचे. Which shortcut key is used to paste copied content? So Control C, Control X, Control V or Control P. The copy paste that doesn't mean कि Control C भाभी दबा. So कोटा हवा? Now obviously Control V ही इतवा. Let's see. So Control V is the. Control A jete bele hame suppose choose karuche. Control C. Control C is what? Used to copy select the context. Control X is used to cut select context. Okay. And Control P used to open the print dialog for printing document. Control like hame kiछि bhi word re use karuche. Word, Excel, PowerPoint use kala bele amar kona na Control V, C, X is the must one. Na Control Z bhi amara. Okay. पुन थरे वापस आसिया पे किछि भी गोटे प्रोग्राम को जदी wrong हे जाइछि. Next question, what does RAM stands for? This is what? RAM कहिथिली guys. मन रख random access memory जोटा randomly भूली जाउथिला. Okay? Next. And read only memory विषय जानि छ and हमरा RAM कोन रहउछि rapid action memory भी रहउछि जोटा कि एटा wrong option रहिबो and run access memory that is जदि एमति भी question आसी पारे जोटा कि हमरा कोन भूल भाल रहिबो. ठीक अछि? Next, which storage device is fastest? Which storage devices is the fastest one? Quota storage na hard disk rahiba, DVD rahiba, SSD rahiba na Blu-ray disk rahiba. So the right answer is what? Now this is SSD. This is what? Solid state
ड्राइव एग्जाम रे यार भी फुल फॉर्म आसुची सो फुल फॉर्म अनुसार ही मन रख ठीक अच्छे सो एसएसडी स्टैंड्स फॉर व्हाट ना सॉलिड स्टेट drive okay are the fastest storage devices because they use flash memory and have no moving parts enabling faster data access and transfer speeds okay so what is HDD this is hard disk drive okay slow than SSD okay एमिति ही बस मन रख hard disk is a like drive जोटा कि कौन होची ना हमर SSD टू निहाती स्लो ही रहउची okay and DVD optical storage with significantly slower than the SSD and also than the HDD and Blu-ray disc faster than a DVD but still much slower than the SSD. So next question what is the full form of USB like हमें जो USB cord use करूचे ठीक अच्छे USB पोर्ट भी यूज करूचे सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB इज इट यूनिवर्सल सर्विस बस इज इट यूनिवर्सल सीरियल बस और इट इज यूनिवर्सल सीरियल yes data same gala na sorry uniform serial bus or universal serial bus or the uninterrupted system boost what have a right answer let's see this is what na universal serial bus ओके गोटे यूनिफॉर्म सीरियल आसीबो गोटे यूनिवर्सल आसीबो सेइथुर यूएसबी मन रखिबे एमिति मन रखिबे कि अरे यूएसबी द यूनिवर्सली कोठी बे एक्सेप्टेबल हे जिवो लाइक कोन से भी सिस्टम हो सेथरे तो यूएसबी पोर्ट ओटे थिबो ही ओके सो यूएसबी इज स्टैंड फॉर कनेक्टिंग कोन पेरिफेरल्स लाइक कीबोर्ड्स माउस एंड द कीबोर्ड माउस एंड द स्टोरेज डिवाइसेस टू कंप्यूटर ओके नेक्स्ट देखिबा which company developed Windows OS from the above which company developed the Windows operating system the Apple IBM Microsoft or Google which this is by Microsoft developed the what Windows operating system first ही मन रखिबो Windows operating system कहा द्वारा develop हेतिला ना by Microsoft in the year 1985 okay Apple developed Mac OS Mac टा मन रखिबो कारण एप्पल रो IBM is known for early computing hardware develop करिथिला किए IBM Google develops Chrome OS okay Chrome is कार Google नाम जोटा डे टू डे यूज करूचे and Android also by Google next which device is used to connect a computer to a network which device is used to connect a computer to a network this is printer scanner modem or keyboard which device is used to connect a computer to a network the options are printer scanner modem or keyboard कौन हबो ना this is modem केमिति because a modem is used to connect a computer to a network such as the internet by converting digital signals to analog and vice versa so digital signal को analog रे convert करूची then again analog को digital रे convert करूची किए ना हमरा modem एटा को मन रखि था सो हम एमिति मन रख कि एटा गोटे मॉडर्न वे हे गला जोथिरे के हम कोन इंटरनेट टा कोन गोटे मॉडर्न सिनेरियो त मॉडर्न एजेस रे हम इंटरनेट रे यूज करूचे आगुरु तो करू नथिले बुझुछन नै तो ताकू रिलेट करिवो कोन ना सॉरी मॉडेम ओके सो मॉडेम को कोन कहा सहित यूज करिवो ना मॉडेम को यूज करिवो हमरा कहा सहित ना इंटरनेट रे सो मॉडेम इज रिलेटेड टू एमति कहता मॉडेम इज मॉडर्न अच्छा मॉडेम एंड मॉडर्न टिके सेम सुबुची ना सो मॉडर्न एटा सब यूज होची केबे ना मॉडर्न एजेस रे जोटा कि मॉडर्न एजेस रे हम कोन यूज करछे ना इंटरनेट यूज करछे तो ताकू रिलेट करी कि मन रखिवो सो प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स स्कैनर इज यूज टू डिजिटलाइज हमर कोन करिवो ना डॉक्यूमेंट्स physical documents and keyboard is a input device okay next one rakho which of the following is not an input device which of the following is not an input device the options are mouse scanner printer or keyboard ko ता भितर कोटा गोटे इनपुट डिवाइस हबनी obviously odd one out कर दबा this is what the printer is an output device हम पढ़ी थिले ना जदी देखि देले गोटे क्वेश्चन मन रखि देले अच्छा ये तो आउटपुट डिवाइस बाकी ऑप्शन देखिबा दरकार नै इजीली ऑड वन आउट करी की आंसर मारिबो ठीक अछि नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS के BIOS भी पढ़ंदी के BIOS पढ़ंदी जहाँ भी इच्छा पढ़ी पारा बट फुल फॉर्म ही मन रखिबा इंपोर्टेंट राइट सो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम
binary input output system, basic integrated operating systems, or based input output storage. What is the BIOS? This is basic input output system. ठीक है? B for basic, I for input, O for output and S for system. I O माने मन रखिबो कि जोठी हमर input output थिबो, and basically हम जोठी input and output करूची, this is what ना हमर BIOS. Okay, मन रहिबो. Next, which type of software is an antivirus? Antivirus is a kind of like software, code type, system software, application software, utility software, or open source software. What? Now this is a utility software. Okay, so antivirus software falls under utility software because it helps maintain, analyze and protect the computer system from the malware and the threats. कहते ना गोटे गोटे जिते बेले आम लैपटॉप यूज करूचे या फिर कंप्यूटर यूज करूचे सेते बेले देखुचे ना किछि किछि एंटीवायरस वाला मेसेज आसी जाउची, योर सिस्टम इज लाइक थ्रेटेंड और योर सिस्टम इज इन डेंजर, प्लीज यूज दिस टाइप ऑफ एंटीवायरस समथिंग मेसेज आसुची ना. सो एटा गोटे कोन ना ताकू यूटिलाइज करी कि आमे कोन ना प्रोटेक्ट हो परिबा. सो दिस इज अ काइंड ऑफ कोन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ठीक अछि, एमिति मन रखिबा. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर कोन रहउची ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड ड्राइवर्स दैट मैनेज हार्डवेयर. व्हाट इज एप्लीकेशन software? Now application software is used for specific tasks like what, word processing hela या फिर browsing hela. This is kind of what application software. And open source software कौन होची ना, it is like open source software antivirus होता किसी भी relation नहीं. This is open ना, this is open source. Open source antivirus केमिति आसीबो, जदि open source antivirus आसीबार like relate हेइ थांदा, then antivirus तो easily हमर कोन कंप्यूटर को हैक करि पार थांदा, कंप्यूटर भीतर को पसी पारि थांदा. Right? So next देखिबा, which key combination is used to undo the last action? So जेमति कहितली last action किछि भी थिबो ताकू किछि like कोन किछि भी mistake हे गले ताकू हमें undo करूचे केमिति, obviously control undo रू मन रखी control u मारि देबेनी, this is control z ही हबो. Okay, गोटे मिनिट टिके सिस्टम रेस्ट चाहूँगी. Give me a minute. आगू को पढ़े कि yes, so control Z होची कोन ना, shortcut is used to undo the last action in the most applications. So control X कोन होची ना, used to cut selected content. Control U देखंतु uncut like shortcut को कोन हमर जो undo को control U भाबी देबेनी. It कोन एटारे कोन होची ना, it is used to underline text in some applications. Okay, control Y used to redo and undone actions. Okay, next देखो, which of the following memory is the fastest? So which of the following memory is the fastest memory? Is it hard disk, RAM, cache or CD-ROM? कहिथिले बे का विषय ना, SSD विषय, बट एठी तो SSD नाही, ताहाले कोटा हबो, hard disk, RAM ना cache ना CD-ROM. What is this? Is cache. Cache memory is the fastest type of memory located closest to the CPU and is used for what na, quick data access. And hard disk कौन होइची ना, this is a storage device, not a memory. Okay, this is what, this is a storage device, not a memory. So sorry for the inconvenience, got a minute. Okay, so
व्हाट आई हैव सेड ना हमर लास्ट थिला कोन ना स्टोरेज डिवाइस जोटा कि एसएसडी थिला स्ट्रांग वाला सो एबे कोन अछि क्वेश्चन ना मेमोरी सो कैचे इज द मेमोरी इज द फर्स्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी जोटा कि लोकेट अछि सीपीयू पाखरे हार्ड डिस्क होची स्टोरेज डिवाइस आर रैम होची फास्टर देन हार्ड डिस्क बट स्लोअर देन द कैche मेमोरी एंड सीडी रोम होची कोन ना एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम सिग्निफिकेंटली स्लोअर देन द रोम ओके रोम गोची रैम सो रैम कैche एंड हार्ड डिस्क तो हमरा सीडी रोम रहउची स्लो वन बट इट इज आल्सो एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम ताकू भी मन रखिबो स्टोरेज डिवाइस रे हमरा सीडी रोम भी केबे केबे ऑप्शन ने आसी जाए जोटा कि कंफ्यूज हेबेनी सो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी So the options are RAM, hard disk, pen drive or DVD. Which of the following is an example of what? Na primary memory. Let's see the answer. That is what? Now this is RAM. So random access memory is a type of what? Now primary memory that temporarily store data for quick access by CPU. And hard disk, a second storage device used for long-term data storage. Pen drive, a portable storage device categorized as what? As a secondary memory. First, our primary कौन रहिला RAM रहिला. Hard disk is a secondary memory. Pen drive is also a secondary memory. DVD is a optical storage device. Okay, जोटा भी गोटे secondary memory. Next, which computer language is used for web designing? Which computer language is used for web designing? This is C++, Java, HTML or Python. कोटा web designing पे हमें help करूचे ना this is what? HTML. HTTP हमें देखी थिले कौन ट्रांसफर होउथिला then एठी आसिला HTML ताकू मन रख हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एल टा लास्ट अछि एटारे पी थिला बोली मन रखुतला प्रोग्राम देन एटी एल रो मन रखिबे लैंग्वेज टा केमिति टेक्स्ट रे हमें लैंग्वेज टा को edit करूचे सेव करूचे so hypertext markup language is stand for what? HTML is the standard language used for creating and structuring the web pages. What is C++? A general purpose programming language mainly used for what? Software development. And Java, a versatile programming language used in web applications, mobiles app, not enterprise software. So Python is a high level programming language used for the web development, data science and the automation. So these are the options and the explanation. So HTML is the right one, the correct one. जोटा हमर कोन करूची ना is creating and structuring the web pages. Next देखिबा what is the full form of URL? URL is the full form of what? Uniform resource locator, uniform resource link, unique resource locator or unified resource loader. तो कोटा हबो let's see the answer. This is what? Uniform resource locator is URL is the address of a web page. गोटे web page रो address हमें केमिति जानू छे तार URL रो okay or resource on the internet. Next देखिबा which of the following is not a web browser? So from the below कोटा गोटे हमर वेब ब्राउजर नुह क्रोम मोजिला फायरफॉक्स माइक्रोसॉफ्ट एज और एमएस एक्सेल कोटा हबो ऑब्वियसली कोन हबो एमएस एक्सेल हबो बाकी पूरा कोन जेते एमएस एक्सेल आसी गला सेटा गोटे कार एमएस ऑफिस अंडर रे कोन वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट अछि जोटा कि हमरा गोटे कोन नॉन ब्राउजिंग गोटे एमएस मान सॉरी कोन कहिबा हमें ताकू गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम नुह भी हमरा आसी दिला सो दिस इज अ वर्ड ऑड एंड आउट कर देबो जदी गोटे बाहरला हेई नथिबो त बाकी तिको हेइथिबो ना सो क्रोम ए पॉपुलर वेब ब्राउजर मोजिला भी गोटे माने ओपन सोर्स वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज दिस इज आल्सो ए वेब ब्राउजर सो ऑड एंड आउट कोन हबो ना हमर वर्ड एक्सेल इज नॉट ए वेब ब्राउजर नेक्स्ट सी which key is used to delete selected text permanently आमे किछि गोटे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूछे एंड शॉर्टकट की कोटा को यूज करूछे जोटा कि परमानेंटली डिलीट करबा पई द ऑप्शंस आर डिलीट बैकस्पेस शिफ्ट प्लस डिलीट और कंट्रोल प्लस डिलीट व्हाट दिस इज शिफ्ट प्लस डिलीट ओके परमानेंटली डिलीट करिया पई कोन होची ना शिफ्ट प्लस डिलीट
and control plus delete deletes an entire word in text editing but doesn't the affect files permanently. कौन करूची ना control delete करूची कौन ना deletes an entire word in text editing and delete खाली delete कौन करूची ना moves the select text or file to the recycle bin permanently delete होनी जाए कि खाली डिलीट मारले रिसाइकल बिन रे पुणी तक हम पाउछे बुझी पारछ शिफ्ट प्लस डिलीट इज परमानेंटली डिलीट व्हेयर इज कंट्रोल प्लस डिलीट डिलीट्स एन एंटायर वर्ड इन द टेक्स्ट रो एंटायर वर्ड टाको डिलीट करूची जोटा हम एडिट करूचे ताको कंट्रोल प्लस डिलीट रे एंड बैकस्पेस त अपन जानचंदी कोन डिलीट्स टेक्स्ट ऑन द कैरेक्टर एट ए टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स What is the default file extension of MS Word documents? The options are .xls, .ppt, .docs, .txt. What is the default file extension of MS Word document? Document रे कोटा हबो obviously कोटा docs रो document ना .docs refer to what? Document. So MS Word uses docs as the default what file extension of saving documents from version 2007 and later up to now. So XLS used for MS Excel, PPT used for MS PowerPoint, TXT plain text file format तापा हम यूज करूची ओके नोटपैड रे यूज होची नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF This is portable document format or printable data file or processed document file or program data format. What will be the right answer? Let's see. This is what? Now portable document format. PDF is referred to what? This is portable document format. PDF is a widely used file format developed by what? Adobe for sharing and preserving documents across different devices and platforms. Mane rahiba what is PDF and what is the full form of PDF. Let's see the next. Which shortcut key is used to select all context in a document? Which shortcut key is used to select all content in a document? This is Control A, Control C, Control S, Control X. देखो दसला कौन select all आसला माने कौन A आसला so obviously कोटा हबो right answer odd one out करिवो एमिति सब बेले ठीक हबो तार किछि माने नाही जेमिति हमर थिला कोन Control D is not Shift D delete तो एई भीतर टी confusion आसी जिवो ताकू टी मने रखिवो. So Control A will be the right answer. This shortcut selects all content in a document or window. Control C used to copy selected content. Control S used to save the document. Control X used to cut selected content. Which key is used to rename a file or folder? Which key is used to rename a file or folder? F2, F5, F12 or F8. Let's see. This is what? F2. F2 key is used to rename a selected file or folder in Windows only. Okay. F5 used to refresh पे हमें करूँचे सब बले कौन F5 ही मतलब refresh करे. So F12 operation save as करिबा पे option कोठी direct F12 रू. F8 used for कौन boot option आसियो कोथरे F8 रे. Okay. Next देखिबा. Which of the following is an example of secondary memory? Which of the following is an example of secondary memory? This is RAM, ROM, hard disk or registers. Quota. Which of the following is an example of secondary memory? RAM, ROM, hard disk or registers. Secondary memory आसिले कौन रखिबो ना hard disk is a secondary memory. बाकी RAM हो, ROM हो, registers हो, these all are कौन ना हमारा primary memory. मने रहिबो RAM, ROM, register, these are kind of कौन primary memory. Whereas hard disk कौन होउची hard disk is an example of secondary memory. Okay. Next, which shortcut key is used to print a documents? So documents that print करिबा को हमें जाउचे को shortcut key हमें use करूचे. This is Control P, Control S, Control X, Control V. Let's see the answer. This is what? Na Control P.
प्रिंट रु आसिला p बट आसीबो एमती सिलेक्ट प्लस p शिफ्ट प्लस p कंट्रोल प्लस p एथिरे पिला कंफ्यूज हो जाती ओके सो कौन मन रखिबो जते बेले प्रिंट डायलॉग बॉक्स आसिला जे कोनोसी गोटे प्रिंट करिया पे ऑप्शन आसिला देन हमें कंट्रोल प्लस p की यूज करू थाउ कंट्रोल s कोन ना सेव पई कंट्रोल x कोन ना कट डाउन करिया पई कंट्रोल x कंट्रोल v कोन ना कॉपी पेस्ट जो करा होची पेस्ट रहउची कंट्रोल v ओके पेस्ट जदि आसिला केमिति करूचे तो कंट्रोल p टा मन रखिबो सब बेले कोथरे ना प्रिंट पई जदि कंट्रोल p आसिला पेस्ट पई भूले मारि दबनी ठीक अछि नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP in networking internet protocol internal program internet processor intelligent protocol what now this is internet protocol IP is stand for internet protocol is a set of rules that govern data transmission over the internet ओके डाटा ट्रांसमिशन को डिपेंड करे कहा उपरे ना हमर आईपी उपरे कोनती ना आईपी एड्रेस टिके मते कहिलो सो दैट प्रॉपर डाटा ट्रांसमिट हेई परिबो नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर which of the following is an example of an email service provider this is Chrome Gmail VLC player or Notepad let's see the answer this is what na amara Gmail okay Gmail is an email देखंदु मन रहि जबा आराम से Gmail रु ही त हम ईमेल प्रोवाइड करू छे ना किछि भी ईमेल करू छे कहा थ्रू रे Gmail थ्रू रे सो Gmail is an email service provider developed by whom developed by the Google for sending and receiving the emails Chrome a web browser VLC player a media player Notepad a text editor मन रहिबो नेक्स्ट देखिबा so which of the following is not a function of an operating system like below are the function of an operating system so find the wrong one that is not a function of a operating system so kona na memory management file management controlling hardware or compiling code let's see this is what na compiling code rest of all are the kona hame kahi pariba function of the OS because memory management the OS allocates and manages system memory file management the OS organizes stores and retrieves file through file management controlling hardware the operating systems interact with and manages hardware components whereas compiling code is done by compilers not the operating system so compiling code is what now this is done by the compiling operators okay next देखिबा which device is used to control the pointer on the screen which device is used to control the pointer on the screen so कोटा हम यूज करू जे obviously mouse यूज करथि बोधे like I just think like that अपन माने कोन right answer is that keyboard mouse speaker or scanner let's see this is what na mouse because pointer को हमें कहा थ्रू रे माउस थ्रू रे ही हमें डिस्प्ले ऊपर बुलाउचे ना so a mouse is a pointing device used to control the cursor on a computer screen whereas keyboard used for typing speaker audio output input output and scanner used to convert physical documents into digital form scanner used for converting physical document into the digital one next which key is used to lock the computer screen in Windows which key is used to lock the computer screen in Windows कोटा हबो now obviously Windows रे पचारची लॉक हबो माने कोन Windows plus L मार देले हे जिवो ना let's see the right answer control L shift plus L Windows L या फिर alt L what this is Windows plus L the shortcut key for कोन कंप्यूटर स्क्रीन को लॉक करिबा पई कोन हबो ना विंडोज प्लस एल ओके देन पुनी हमर कोन वापस से कोन पूरा लॉक हे जिवो स्क्रीन ओनली माने डिस्प्ले ऑन रहिबो स्क्रीन लॉक हे जिवो देन हमको दरकार हबो गोटे हमर लॉगिन कोड टू ओपन इट कंट्रोल एल कोथि पई ना यूज टू हाइलाइट द एड्रेस बार
मन रख कंट्रोल एल कोथि पई ना हाईलाइट द एड्रेस बार, whereas shift plus L no default function is there for shift plus L, alt plus L भी हमर कोन किछि गोटे फंक्शन नाही जोथरे कंफ्यूज हे कि नेक्स्ट देखिबा which type of the file stores a program's executable code, which type of file stores a program executable code, the options are .txt, .exe, .pdf, .docs कोटा हबो ना हमरा प्रोग्राम्स को स्टोर करिक रखे विथ एक्जिक्यूटेबल कोड कौन हबो ना दिस इज .x सो एक्जिक्यूटेबल फाइल जेतरा आसला exe अछि ना सो सेइथरो ताको मन रखिबो ना .exe यूज फॉर द एक्जिक्यूटेबल फाइल को कौन स्टोर करिया पई इनसाइड ए कंप्यूटर, .txt a plain text file, .pdf a portable document format, .docs Microsoft Word पे यूज हुए कहितली। नेक्स्ट देखिबा so which technology was used in first generation computer, which technology was used in first generation computer, transistors ना तो vacuum tubes, microprocessors, integrated circuits कोटा हमर यूज हेतिला obviously कोटा ना हमर vacuum tubes कहितल ना फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रे vacuum tubes आसीथिला, सेकेंडली हमर ट्रांजिस्टर आसीथिला, थर्ड रे हमर इंटीग्रेटेड सर्किट आसीथिला, फोर्थ रे हमर आसीथिला माइक्रोप्रोसेसर जोटा कि फोर्थ जनरेशन। ओके सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर 1940 रु 1956 भीतर आसीथिला, एटा भी ईयर गैप टा निहाती एग्जाम रे पड़े, दैट्स व्हाई मु जेते थर भी आपन पे एक्सप्लेनेशन बनेइची ईयर गैप को सामना रे रखी की बनेइची सो दैट आपन माने देखि की रिमाइंड करी करी पढ़ी परिबे। ओके सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज व्हाट वैक्यूम ट्यूब्स, second generation is what na transistor used in second generation computers 1956 रु 1963 भीतर। ओके जेते बेले की से वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कला। अगेन माइक्रोप्रोसेसर्स होची फोर्थ जनरेशन, ता पूर्व कोन आस्तिला ना इंटीग्रेटेड सर्किट्स जोटा की यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स मने रहिबो। नेक्स्ट देखिबा which of the following is an example of a first generation computer, कोटा गोटे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एग्जांपल ENIAC, IBM 360, PDP 11 और Atari 8800 what this is ENIAC. ENIAC stand for what na electronic numerical integrator and computer। ENIAC कौन फुल फॉर्म भी एग्जाम रे पकई दिए सो एटा भी फुल फॉर्म सहित मन रखिबो। वाज वन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स बिल्ट इन 1945 रे हेतिला यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स फॉर प्रोसेसिंग। ओके IBM 360 a third generation computer that used to integrated circuits, PDP 11 a mini computer from the third generation जोटा कि 1970s based on कौन ICS। Next, Atari 8800 a fourth generation computer that used a microprocessor माने रहिबो कोटा को जनरेशन रा कंप्यूटर रे आसीथिला फाइन। नेक्स्ट सो टिके फॉन्ट चेंज हे जाई अपन मान को मे बी ऑल ऑफ सडन प्रॉब्लम टिके होउथबो बट इट वाज शॉकिंग फॉर मी टू आल्सो केमिति कोन चेंज हे जाई आई डोंट नो। सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड व्हिच टाइप ऑफ मेमोरी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रे आमे जो यूज करूथिले वैक्यूम ट्यूब्स यूज करूथिले तो सेतरे को टाइप रो मेमोरी आमे यूज करूथिले, इज दैट मैग्नेटिक ड्रम, is that semiconductor memory, is that RAM or ROM? Let's see the answer. This is what na magnetic drum. First generation computers used magnetic drum memory which was a rotating cylinder coated with magnetic material to store data. What गोटे ए टाइप रो सिलिंडर टाइप रो थाए जोटा कि कोन हुए ना मूव इन दी लाइक सर्किल हे कि से कोन मूव करी थाए ता चारि पटे गोटे कोट भी थाए ठीक अछि। एंड सेमीकंडक्टर मेमोरी इंट्रोड्यूस्ड इन लैटर जनरेशंस प्राइमरीली थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। रैम केबे हितिला ना दिस इज ए मॉडर्न सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज्ड फॉर द थर्ड जनरेशन ऑनवर्ड्स। रोम केबे हेतिला ना एटा हमर बहुत ही लेट रे हमर हेतिला जोटा कि कोन हेतिला ना ए टाइप ऑफ दिस इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी वी ऑल नोज अबाउट दैट तो यूज्ड इन लैटर जनरेशंस फॉर फर्मवेयर स्टोरेज। नेक्स्ट देखिबा
what was the primary language used in first generation computers? Tell me, what was the primary language used in the first generation computer? Is that assembly languages or high level language or machine language or Fortran? मन रखिथिबो सब बेले प्राइमरी रे कोन यूज हुए फर्स्ट रु फोर्थ एमिति रिलेट करिके मन रखिबो कोटा यूज हुए सॉरी फर्स्ट टू फोर्थ नहीं दिस इज समथिंग डिफरेंट ना ना फोर्थ नहीं सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस सो आमर कोटा हबो ना आमर मशीन लर्निंग हबो ओके सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड मशीन लर्निंग जोटा कि बाइनरी कोड 0 और 1 यूज हुए which was directly executed by the hardware. Assembly language introduced in the second generation. Assembly language second generation, machine language first generation. High level language not available in the first generation. Started appearing in later generation जोटा कि कोथरे ना Fortran and COBOL use हुए. And Fortran a high level language developed in the 1950s रेटा develop हेइथिला जोटा कि second generation not first generation. Okay. Next. Which of the following was a major disadvantage of first generation computer? Tell me, which of the following was a major disadvantage of first generation computers? This is slow processing speed, high power consumption, large size, or all of the above. Now, which of the following was a major disadvantage of first generation computer? कोटा अब slow processing speed, high power consumption, large size or all of the above. Obviously सबू ही हेथिबो ना सेथिपई हमकु गोटे सेकंड जनरेशन दरकार हैला देन सेकंड जनरेशन ने किछि डिफेक्टिव थिबो सेथिपई थर्ड जनरेशन दरकार हैला जोतिक ऑप्शन ने थिला सबुतिक लागु नथला आपण मानकु गोटे गोटे सबुतिक डिसएडवांटेज बोली लाइक आइदर स्लो प्रोसेसिंग हेथिबो ऑब्वियसली सेथिपई हमें नेक्स्ट प्रति ध्यान देले हाई पावर कंजप्शन होथुबो सेटा भी गोटे ड्रॉबैक भले लागुची लार्ज साइज यस जोटा भी जे कोनसी जिंस हमें स्टार्टिंग रु इन्वेंट करू जे तार साइज ही बड़ थाए देन हमें ट्राई करी कि ताकू केतिक रु केतिक मिनिमाइज करि परिबा तो सेटा भी गोटे फैक्टर ऑफ फियर हेइ थाए नेक्स्ट देखिबा सो ऑल ऑफ द अबव काहेकि होची ना स्लो प्रोसेसिंग स्पीड ड्यू टू रिलायंस ऑन वैक्यूम ट्यूब्स एंड मशीन लैंग्वेज हाई पावर कंजप्शन वैक्यूम ट्यूब्स जनरेटेड एक्सेसिव हाइट and consumed a lot of electricity large size these computers were massive often occupying entire rooms next which component replaced vacuum tubes in second generation computer which component replaced vacuum tubes in second generation computers transistors integrated circuit microprocessor magnetic first कहतली कि आसीथिला ना हमर vacuum tubes आसीथिला second रे transistor आसीथिला then third रे integrated आसीथिला fourth रे microprocessor आसीथिला सेमति देखो सो फर्स्ट कौन होइतिला ना वैक्यूम ट्यूब्स देन आस्तिला ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स को हमर कोन वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करिथिला देन आसीथिला इंटीग्रेटेड सर्किट देन आसीथिला हमर कोन ना माइक्रो प्रोसेसर ओके मैग्नेटिक टेप इज यूज्ड एज ए स्टोरेज डिवाइस ओके तार किछि कोन प्रोसेसर सहित माने जनरेशन सहित लिंक नाही सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर Which of the following is an example of a second generation computer? Is that IBM 1401, ENIAC, PDV11, Cray 1. ENIAC तो आपण मानु कहि देतिली कोन ना हमर फर्स्ट जनरेशन रही गला सो सेकंड जनरेशन कोन रहउची ना IBM 1401 was a second generation computer that used what ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स सेकेंड जनरेशन ने जो हमारा ट्रांजिस्टर यूज हैला किए ना IBM 1401 ही यूज कला कहा बदल रे ना वैक्यूम ट्यूब्स रा कोन रिप्लेसमेंट रे ओके जोतरे कोन मेकिंग इट फास्टर दैन द मोर एफिशिएंट देन ENIAC ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर PDV11 example मन रखी था this is what example of a third generation computer Cray 1 is the fourth generation computer next देखिबा which programming languages were introduced in the second generation which programming languages were introduced in the second generation is that machine language assembly language Fortran and COBOL देटा तक बहुत लेटर रे हेची सो HTML and Java this is not odd one out assembly language or machine language हमरा कोथरे ना फर्स्ट जनरेशन रे रहिला कि सेकंड लैंग्वेज रे हमरा assembly next
अरे फोर्टन एंड कोबल हूँ सेकेंड जनरेशन किछिटा टिके मे बी असेंबली लैंग्वेज आमर कथर हूँ आल्सो यूज फॉर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूजिंग नेमोनिमिक कोड्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी ना कि गोटे मिनिट रहिला टिके करेक्शन कर दबा एटा आउ थरे टिके वेरीफाई कर दिए एमती कौन दे देची गोटे मिनिट ओके सो व्हिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गोटे मिनिट okay this one is right about what ना हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर अगेंस्ट रे ओके सो सेटा टिके हमें रेक्टिफाई कर देबा जोटा हमर थिला सेकेंड जनरेशन ने मु आपन को ना 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 सेटा ठीक अछि फर्स्ट जनरेशन ने मु कहितली ना कोडा मशीन लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज कथा कहि नथिली ना असेंबली कथा सो असेंबली हबनी हमर कोन हबो ना फोर्टन एंड कोबाल्ट लेटर ऑन बट सेकेंड लैंग्वेज रे हमर यूज होइछि माने सेकेंड जनरेशन रे हमर एटा यूज होइछि यस यस मुझे कन्फ्यूज होती सॉरी फॉर दैट ओके सो फोर्टन एंड कोवल एंड लिस्प जदि आसीबो व्हाट ना लिस्प जदि आसीबो से सब हमर कोन ना सेकेंड जनरेशन रे हमर यूज हुए ओके second generation computers introduced high level programming languages like Fortran 1957 and COBOL जोटा कि making programming easier compared to machine and assembly language. So machine language and assembly language के बे ना first generation ने यूज होइतिला first यूज होइतिला machine language तार just टिके first generation रो end आडू को and second रो पूर्वरु यूज होइतिला हमर कोन ना machine learning sorry assembly languages okay so machine learning first generation assembly भी हमर कोन first generation and HTML Java introduced much later. Next, which type of memory was used in second generation computer? Second generation computer रे जो memory use हुए this is kind of what ना magnetic core memory, optical memory, SSD or semiconductor memory. Tell me the right answer is what ना magnetic core memory. Second generation computers कोठु को जाए 1956 to 1963 जाए primarily used what ना magnetic core memory which was faster than the more reliable than previous magnetic DRAM memory okay optical memory introduced much later कोथरे optical memory हमरा कोथरे यूज हुए ना CD और DVDs रे यूज हुए SSD modern storage technology introduced in the late 20th century रे जोटा कि हमरा लैपटॉप रे हमरा यूज रहउची so semiconductor memory become common in third generation computers with the introduction of integrated circuits. What was a major advantage of second generation computers over the first generation? What was a major advantage of second generation computers over the first generation? Small in size देखंतु एडवांटेज पचारची कहार ना सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कौन एडवांटेज अच्छी फर्स्ट अपेक्षा ऑब्वियसली सब गुड़ा हेतिबो स्मॉल साइज मोर रिलायबल फास्ट प्रोसेसिंग अदरवाइज ए सब को छाड़ी कि सेकेंड जनरेशन काहे कि इन्वेंट हैला किछिटा बेटरमेंट पे इन्वेंट हेतिबो दैट्स व्हाई ऑल ऑफ द अबव नेक्स्ट which technology was used in third generation computer first gala second gala now which technology was used in third generation computers is that vacuum tubes तो हमरा first gala transistors कोथरे second रे गला integrated कोथरे ना हमरा third रे जाउची so integrated circuits कोथरे हबो ना third रे हबो microprocessor later on कौन हबो ना integrated circuits okay so third generation computers used integrated circuits which combined multiple transistors onto a single chip improving speed efficiency and reliability. Vacuum tubes used in first generation computers that is from 1940s to 1950s okay and transistors used in second generation computers 1956 through 1963. Microprocessors introduced in fourth generation computers 1971 to at present okay
नेक्स्ट देखिबा which of the following is an example of a third generation computer आमर इनियाक पळेला IBM 360 भी पळेला एबे यूनिफैक आउ PDP 1 विषय देखिबा सो कोटा हबो दिस इज IBM 360 The IBM System 360 was a third generation computer introduced kebe heitra 1964 re, utilizing integrated circuits for improving performance, flexibility and the efficiency. What is UNIVAC? This is a first generation computer. Okay, 1951 जोटा कि vacuum tube रे use हेतिला. ENIAC, this is also a UNIVAC ho, ENIAC ho, this is a first generation computer. Okay, and PDP-1, this is a second generation computer. मन रहिबा नेक्स्ट देखिबा व्हाट वाज द मेन एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आईसी रो रोल कोन रहउची थर्ड जनरेशन कंप्यूटर रे इट इज रिड्यूस्ड कॉस्ट रिड्यूस करूची इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड करूची ना साइज रे स्मॉल रहउची कोन हबो यदि थर्ड जनरेशन कथा आसिला तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव हिथिबो लेट्स सी व्हाट दिस इज ऑल ऑफ द अबव ओके नेक्स्ट Which programming language become more popular in third generation? Which programming language become more popular in third generation computer? Python, Basic, Java, assembly language. Kota habo? Let's see. This is what? Okay. सो बेसिक रोचे हमर कोन ना थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज होतुबा हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ओके जोटा कोन ना बेसिक रो फुल फॉर्म रहउची बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक एग्जाम रे एटा मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन so was widely used due to its easy learning and simplicity making it popular for general purpose programming and what and education. Python introduced in 1990s long after the third generation. Java also 1995 re develop heithila. Okay, assembly language used in earlier generation but was replaced by the high level language. Next, which of the following is not a characteristic of third generation computer? Which of the following is not a characteristic of third generation computer? Used transistors, more reliable than second generation, used integrated circuits, faster processing. Which of the following is not a characteristic of third generation computer? कोटा ना use transistor हमर कोथरे यूज हेतिला more reliable than second generation obviously second generation to से कोन reliable हेतिबो used integrated circuit obviously integrated हमर कोथरे यूज हेतिला कोथरे third generation बचाची integrated हमर कोथरे यूज हेतिला second faster processing so let's see right answer कोटा हबो ना this is third generation हमर कोटा होची ना computer did not use transistors instead by they use integrated circuit. Okay, which made them smaller, more efficient and faster. Transistor were used in कोठी ना हमारा second generation computer रे where integrated circuit कोथरे हैला ना third generation रे ठीक है छी more reliable than second generation. Third generation computers were more reliable due to integrated circuits present inside that. Used integrated circuits. The defining characteristic of third generation computers was the use of integrated circuits. Faster processing with integrated circuits. The circuits processing speed significantly improved compared to second generation computers. Next देखिबा which component defines the fourth generation computer? Which component defines the fourth generation computers? Is that vacuum tubes, transistors, integrated circuit or microprocessor? Kota habo? Let's see the answer. This is what? The microprocessors. Fourth generation computers were defined by the use of what? Na microprocessors which integrated all the functions of a CPU onto a single chip. This innovation led to smaller, faster and more energy efficient computer. जेतेबेले हमर CPU रे microchip यूज हैला सेतेबेले काहा को जनरेशन हे जाइतिला ना फोर्थ जनरेशन यूज हे जाइतिला माइक्रोप्रोसेसर टाइम टा मन रखिबो
ओके वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन इंटीग्रेटेड थर्ड जनरेशन बार बार कहूँ एग्जाम रे जमती कॉपी पेस्ट हवा so which was the first microprocessor developed which was the first microprocessor developed first microprocessor कथा आसिला first microprocessor केबे developed हेतिला Intel 4004 Pentium 4 Motorola 68,000 and MD Ryzen कोटा हबो let's see the answer this is what number Intel 4004 होची first कोन यूज हेतिबा microprocessor okay developed by Intel in 1971 was the first commercially available microprocessor it was 4-bit processor question एमिति पचारि परिबो कि केते like 4-bit processor दे देथिबो which is a 4-bit processor example dash 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 सेतिरा आपण कोन थिबो नामरा microprocessor कोडा यूज करिवे microprocessor okay so Pentium 4 a 30-bit processor released by Intel in 2000 much later than the first microprocessor okay so Motorola 68,000 a 1632-bit केते ना 1632-bit microprocessor developed by कोन Motorola जानि परथुवा Motorola कंपनी ही ताको डेवलप करिथिबो ठीक अछि and AMD Ryzen a modern multi-core processor introduced by AMD in 2017 for a high performance computer. Next देखिबा which of the following is an example of a 4th generation computer? कोटा गोटे example दबो 4th generation computer जोटा कि microprocessor यूज हुए Apple, Macintosh और IBM 360 और Univac और PDP-11 360 तो नहीं Univac तो नुआ PDP तो नुआ रहिला कोटा नामरा Apple Mac Windows introduced 1984 is an example of 4th generation computer which used what now microprocessors of this generation of computers featured smaller size greater efficiency and graphical user interfaces okay IBM 360 this is 363 अच्छी रु 3 रु कर देबे थर्ड जनरेशन यूनिवैक फर्स्ट एंड इनियाक आसिला कोन होतला ना इनियाक भी हमर कोन ना फर्स्ट जनरेशन ओके सो पीडीएफ 11 एडा हो हमरा थर्ड जनरेशन नेक्स्ट देखो which type of memory is used in 4th generation computer को मेमोरी यूज हुए हमारा 4th जनरेशन कंप्यूटर है दिस इज अ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैग्नेटिक टेप सेमीकंडक्टर मेमोरी पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक ड्रम let's see this is what namara semiconductor memory 4th generation computer रे हमर कोन यूज हुए ना semiconductor memory यूज हुए कोथिरे ना RAM ROM and flash memory which are faster more reliable and more efficient than earlier storage technologies सेतिर हमर कोन यूज हुए ना semiconductor memory okay what is magnetic tape this is used primarily in 2nd generation computers for data storage okay punch cards कोन ना इटा 1st generation computer हमर यूज होथला and early 2nd generation computer बेटा यूज हेछि कोडा ना for input and storage magnetic drum used in 1st generation computer as a form of storage before hard disk were developed so जते बेले hard disk develop हेइ नथला magnetic drum कोथरे ना 1st generation computer हमर यूज होथला punch card कोड यूज होथला ना 1st generation यूज होथला and 2nd generation ना early stage रे भी हमर यूज होथला ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा which operating system become more popular during the 4th generation को operating system ता हमर 4th generation में बहुत पॉपुलर थिला this is Windows DOS Unix or all of the above कोन हबो ना all of the above 4th generation बेलको हमर सब किछि आसी जाइथिला because 4th generation केबे होची 1971 रो प्रेजेंट होची and Windows केबे हमर like introduce हेतिला 1985 रे by Microsoft DOS केबे हेतिला ना 1980s रे हेतिला ठीक अछि आ कहा को कंपनी एटा ना हमर IBM ताको लाइक इंट्रोड्यूस करिथिला यूनिक्स एटा डेवलप हेतिला 1970s रे जोटा कि आफ्टर 1971 ही सो ए सब गुडा कोन ना एग्जांपल ऑफ 4th जनरेशन कंप्यूटर विंडोज डॉस दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स जोटा डेवलप हेतिला 1970s परे ओके नेक्स्ट which technology is dominant in 5th generation computer which technology is dominant in
fifth generation computer? The options are artificial intelligence, vacuum tubes, microprocessors, or magnetic core memory. Which technology is a dominant in fifth generation computer? एबे 1 2 3 4 जाने देखते ले fifth generation पर्यंत देखि देबा कोटा हबो ना this is AI. Okay, yes, artificial intelligence. So fifth generation माने कोन एबे का generation मन रखिबो fifth generation ने कोन हमर एबे तो जानि छै AI is the future, as I have said and I am saying it. Okay, and I will say it up to word जेबे जाय हमर AI न आसी छी. Okay, like AI is the future, सब जॉब रिप्लेस हो जिवो, मेन जॉब सब रहिबो, बाकी सब AI रही खेला. So artificial intelligence used in machine learning, robotics, natural language processing, and export systems. Vacuum tubes, what are first generation, microprocessor, fourth generation, magnetic core memory used in second generation computers. Which of the following is an example of fifth generation computer? IBM Watson, Apple 11, IBM 360 तो नुहा, PDP 8. देखो कोटा हबो, and this is IBM Watson. An AI powered supercomputer used in healthcare. कोथि यूज हुए ना हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड द रिसर्च केस रे हमरो IBM Watson को हम हेल्प करू छे, लाइक तार हेल्प नउ छे. ओके, so for fifth generation computers focus on artificial intelligence, AI, machine learning, robotics and the quantum computings. Apple 11 कौन रहउछि ना a fourth generation personal computer introduced by Apple 1977 ne, this is what na fourth generation na computer. IBM 360, this is a third generation computer. PDP 8, this is also third generation computer. Next, what is the primary goal of fifth generation computer? From the below options, what is the primary goal of fifth generation computers? The options are faster calculators, artificial intelligence and machine learning, smaller size or better storage. कौन हबो? Now this is what the primary goal of fifth generation computer is what? Now artificial intelligence and machine learning. Okay, मुझे मिति कहितली is the future. So and natural language processing to enable machine to think, learn and make decisions. Okay, there are also the like few steps are there जोथि ପାଇଁ कि ଆମେ ଟିକେ avoid करूछे. बहुत सारा policy अछि जोथि कि ଆମେ कोन ना AI के यूज करिया पई इन्वेंट भी सॉरी छी, like policy applied हेइ छी, किसी policy ऊपर रिसर्च चाली छी, सेटा इंडिया रे आसीबो या फिर नाही, बट इंडिया रे blindly AI को पर्यंत एक्सेप्ट करा हेइनी. Okay, so faster calculations, while speed is important, AI driven decision making is the key focus. Smaller size कौन miniaturization happened in the fourth generation with microprocessors. Better storage technology improves over time. यार सहित किसी रिलेशन नहीं, एंड मिनिएचराइजेशन रे भी किसी नहीं या सहित रिलेशन. सो मेन थिंग कौन रहउछि ना AI and ML. Which language is widely used in fifth generation computer? Fifth generation computer रे widely को यूज करा जाउछि ए भितरु ऑप्शन देखो, Fortran, Lisp and Prolog, COBOL और Assembly. COBOL and Lisp विषय मु तमन कहिथिले ऑलरेडी जोटा कि यूज सरुछि. ठीक अछि, सेटा कोठी ना हमर फिफ्थ जनरेशन रे. So Lisp रहउछि कोन ना list processing and Prolog is the programming in logic are the most widely used languages in fifth generation computing because they are specialized for artificial intelligence and machine learning applications. These languages are used in where the natural languages processing and export systems and robotics. Fortran amar kothre na Fortran mainly use hochi scientific and mathematical computing re. COBOL designed for business and financial applications, not AI driven task, and assembly is low level languages used for hardware specific programming. Next, which feature differentiates fifth generation computers from the earlier generation? So fifth generation कौन obviously AI and machine learning आसी जाइछि, आउ कौन हे परिबो. Next see what ना हमर fifth generation ने AI and ML add हेछि जोटा कि आगुरु नथिला. Next, which generation of computers is associated with artificial intelligence and robotics? कोटा? Yes, fifth generation computer.
Next, which of the following is not an example of fourth generation computer? IBM PC, Apple Macintosh. So Apple Macintosh koudira na fifth ra asigala, right? So Pentium based systems, na ଟିକେ confused. Let's see the answer. So what? This is fourth generation computer amara कोटा ना microprocessor यूज होउची. Wait, option अच्छी IBM PC ना PC ना IBM 360. Let's see, 360 तो third generation ने थिला. Apple Macintosh fourth generation, IBM PC fourth generation and Pentium based एटा भी fourth generation. So हमारा रहिला कोटा ना IBM PC systems like IBM PC, Mac, Apple Macintosh and Pentium based computers belong to this generation. So computer astila parallel, which generation of the computer introduced parallel processing? Acha, sorry, question is different. I was thinking about something else. So which generation of computers introduced parallel processing and superconductors? Gote question chhadi deli ki? Yes, question hi chhadi dechi gote. Right? Which of the following is not an example of fourth generation computers? What is that? Na konta habo? This is IBM PC, Apple Macintosh and Pentium based computers belong to this generation. Okay, next देखिबा. Fourth generation ना कौन IBM PC fourth generation, Apple Macintosh fourth generation. अच्छा, which is not a? So IBM 360 not a, कारण 360 मु कहितली 3 रु मन रखिबा कोन? This is a third generation computer. से ही तो कहउतली, right? Yes, these are all the fourth generation. So next, which generation of computers introduced parallel processing and superconductors? So these are third generation, fourth generation, fifth generation or second generation. कोथिरे ना जोथिरे हमर parallel processing and superconductors introduce हेइथिला कोटा? Obviously हमें पढुचे का विषय रे हमर fifth generation विषय रे. So fifth generation रे हेइथिबो. So fifth generation computer जोटा 1980s ପରେ हमर invent हेइची introduced parallel processing and superconductors to improving processing power and efficiency. These computers focus on artificial intelligence, machine learning and natural language processing. Third generation using integrated circuit. Fourth generation हमारा microprocessor. Second generation कौन होची transistors. First generation vacuum tube. Okay. Next question. Which of the following best describes the difference between fourth and fifth generation computers? Which of the following best describes the difference between fourth and fifth generation computers? कौन होची ना fifth generation computers are slower than fourth generation computers ना fifth generation केमिति slow हबो एटा त हेइ परिबनी ना. Fourth generation computers uses AI while fifth generation computers do not. एमिति केमिति fifth रे तो AI यूज होला ना थोड़ी ना fourth रे. So fifth generation computers focus on AI and machine learning. Fourth generation computers uses vacuum tubes. No, vacuum tubes कोठी ना first generation रे हमर यूज हुए. So right answer will be what? ना C. Next, which programming languages were developed for artificial intelligence applications in fifth generation computers? Tell me, which programming languages were developed for artificial intelligence applications in fifth generation computers? Which is C++ and Java, Fortran and COBOL, Lisp and Prolog, Python and Ruby. कोटा देची ना fifth generation ने. Let's see what this is. Lisp and Prolog. Okay, and जदि पढ़ी थांता को विषय रे Fortran and COBOL ताहाले थांता कोन fourth. Okay, Lisp and Prolog is the fifth generation. C++ and Java are generally purposes language not specifically for AI and fifth generation. Okay, Fortran and COBOL used in earlier generation for scientific and business applications. Python and Ruby are widely used in AI today but were not developed by the specially for the fifth generation. Which of the following is not an advantage of fifth generation computers? कोटा गोटे advantage नाही हमारा fifth generation computer. This is AI and automation, high processing speed, requires more human intervention, natural language processing capability. What?
Which of the following is not an advantage of 5th generation computer? AI and automation, high processing speed, requires more human intervention, or natural languaging? कोटा हबो नॉट पचारिची मन रख 5th generation रे कोटा नुह AI तो हमर हबो हाई प्रोसेसिंग स्पीड हबो रिक्वायर्स मोर ह्यूमन इंटरवेंशन कारण जेतेबेले AI जेतेबेले आसी जिवो सेतरे ह्यूमन इंटरवेंशन दरकार पड़िबनी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग दरकार हबो किंतु कोटा रिक्वायर्स मोर ह्यूमन एटा हबो कि एटा हबनी सो लेट्स सी रिक्वायर्स मोर ह्यूमन इंटरवेंशन हबनी आज 5th जनरेशन कंप्यूटर्स एम टू रिड्यूस कोन ह्यूमन इंटरवेंशन कम करिवा पई तो AI रो इन्वेंशन हैला ठीक अछि नेक्स्ट which company developed the first microprocessor marking the start of the 4th generation कौन ना फर्स्ट जनरेशन को सॉरी which company developed the first microprocessor marking the start of the 4th generation 4th generation को नजर रखी कि फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर को कंपनी यूज कला ना दिस इज इंटेल ओके सो इंटेल डेवलपमेंट द फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर जोटा केबे 1971 ओके जोटा इंटेल 4004 टा ओके marking the beginning of the 4th generation of computers. IBM is known for कौन mainframes and PCs but कौन तार डेवलपमेंट फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर किछि नहीं माइक्रोसॉफ्ट फोकसेस ऑन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स एप्पल इज फेमस फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स ओके नेक्स्ट देखिबा which of the following was the first microprocessor tell me which of the following was the first microprocessor Intel 8085 Intel 4004 Motorola 68000 Pentium 4 फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर कोटा ना इंटेल ही करथिला ना फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर लेट्स सी दिस इज इंटेल 4004 मन रहिबा ओके नेक्स्ट देखिबा एंड मोटोरोला कोठी हितला 68000 टा यूज अर्ली एप्पल मैकिंटोश रे हमर यूज हेतिला ठीक अछि एंड पेंटियम 4 वाज मच लेटर माइक्रोप्रोसेसर which technology is primarily used in quantum computing so question answer diyo which technology is primarily used in quantum computing the options are superconductors transistors microprocessors or vacuum tubes which technology is primarily used in quantum computing the options are superconductors transistors microprocessors or vacuum tubes quantum computing these are superconductors enable the creation of what na qubits used which is fundamental to quantum computing transistors are used in classical computing microprocessors are integral to traditional computers and vacuum tubes were used in first generation computer okay next which of the following generation introduced cloud computing कोथिरे obviously कोथिरे हमारा 4th नाले 5th रे हितिबो फर्स्ट एंड थर्ड रे तो हेई नथिबो ना लेट्स सी व्हाट दिस इज 5th generation computers introduce cloud computing AI and big data processing okay first vacuum third रे तो जानछन सब integrated circuit and fourth is the microprocessors next which of the following computer generations is associated with large scale integrated and very large scale integrated LSI and VLSI कोटा यूज हुए को कंप्यूटर जनरेशन सेकेंड रे थर्ड रे फोर्थ रे फिफ्थ रे ऑब्वियसली हमें पढुचे का विषय रे ना फिफ्थ विषय रे सॉरी फोर्थ अछि ना अच्छा LSI and VLSI yes LSI and VLSI कोथरे यूज हुए ना हमर फोर्थ जनरेशन ने ओके फिफ्थ रे त हमर AI विषय आसला ना सो LSI and VLSI कोथरे ना फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कोथरे ना इन माइक्रोप्रोसेसर कोथरे थिला ना फोर्थ जनरेशन ने ओके सेकंड रे वाला हमर कोन ट्रांजिस्टर्स थर्ड रे गला कोन used integrated circuits कोथरे ICs गला थर्ड रे and fifth रे हमर AI next which feature was common in third generation computers third generation computer रे को feature टा सेम आसुची use of vacuum tubes magnetic core memory integrated circuits ना optical disk
कोथिरे ना थर्ड जनरेशन रे कोटा हमर आसुची दिस इज व्हाट ना हमर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर रे इंटीग्रेटेड सर्किट हमर कॉमन रहूची ओके व्हिच रिप्लेस्ड ट्रांजिस्टर्स एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस ओके सेकेंड रे ट्रांजिस्टर थिला थर्ड आसिला ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करिकी हमर आईसीएस को आसिला ओके सो वैक्यूम ट्यूब्स वे यूज्ड इन फर्स्ट मैग्नेटिक कोर मेमोरी वाज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स रे कोन ना मैग्नेटिक कोर मेमोरी एंड ऑप्टिकल डिस्क became common in later generation next देखिबा which generation marked the beginning of personal computer तो फर्स्ट एबे पर्सनल कंप्यूटर्स आसिला तो को जनरेशन रे आसिला व्हिच जनरेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ लेट्स सी दिस इज व्हाट दिस इज अबाउट द फोर्थ जनरेशन सो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1970s रो 1990s भितरे हमर इंट्रोड्यूस हेतिला कोन ना पीसीस जोटा कि पर्सनल कंप्यूटर्स बोली कहूचे सो फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एंड ट्रांजिस्टर्स थर्ड जनरेशन यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स ओके Next, which of the following is a key characteristics of second generation computers? Which of the following is a key component or key character of a second generation computers? Used transistors instead of vacuum tubes. देखो second generation पचार obviously first vacuum tube use ला ताकू कौन transistor रे change कला then introduce cloud computing को थी हमारा fourth रे use है ओके यूज्ड माइक्रोप्रोसेसर्स देन एटा कोथरे यूज हेतला फोर्थ रे डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोथरे फिफ्थ रे सो कोटा रहला गोटे रहला नेक्स्ट देखिबा क्लाउड कंप्यूटिंग टा हमर फिफ्थ रे हेतला राइट fourth रे used microprocessor development fifth so next which of the following memory types was first used in third generation computer को मेमोरी टाइप फर्स्ट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज हैला बिकॉज ए जनरेशन रे बहुत सारा क्वेश्चन आसुची सेथि लागि मु बार बार बुले बंके कि तम पाखु क्वेश्चन आनुची अदरवाइज बहुत सारा क्वेश्चन अछि हमको डिस्कस करिया पे मैं इथरा आपनको टाइम वेस्ट करे न थांदी ओके भाबिबेनी कि मैम कोन से जनरेशन रो बाहर नांदी बिकॉज जनरेशन क्वेश्चन दी मार्क कंपलसरी कंप्यूटर ओके सो सेमीकंडक्टर मेमोरी मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी हमर कोथरे न फर्स्ट यूज हेतिला सेमीकंडक्टर मेमोरी ऑप्टिकल मेमोरी और फ्लैश मेमोरी थर्ड जनरेशन बेलु कोन आसी जाइथिला ना थर्ड जनरेशन बेलु हमर आसी जाइथिला कोन ना सेमीकंडक्टर मेमोरी ओके माने रहिबा सेमीकंडक्टर मेमोरी हमर कोथरे ना इंट्रोड्यूस हेतिला फर्स्ट की रैम रे ओके मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी फर्स्ट जनरेशन ने ऑप्टिकल मेमोरी बहुत लेटर पीरियड रे फ्लैश मेमोरी एटा हमर कोन बहुत लेट रे जोटा कि एबे जस्ट 20s रे हमर आसीथिला व्हिच कंप्यूटर इज कंसीडर्ड द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर व्हिच कंप्यूटर इज नोन एज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर टेल मी क्रे 1 IBM 360 जोटा कि थर्ड जनरेशन इनियाक फर्स्ट यूनिवाक फर्स्ट सो या भीतर कोटा व्हिच कंप्यूटर इज कंसीडर्ड द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर व्हाट दिस इज one Cray 1 considered the first what super computer भाबरे Cray 1 को हमरा जणा जाइछि ओके डेवलप्ड बाय whom by Seymour Cray at Cray research center रे जेहेतु Seymour Cray करिसंती तो ना हला Cray 1 ओके IBM 360 this is a mainframe computer जोटा कि कोन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर एग्जांपल ENIAC and UNIVAC these are the first generation computer which of the following statements about the fourth generation computer is true tell me which of the following statements about the fourth generation computers are is true what they were based on vacuum tubes they introduced microprocessors they used punch cards but input they were slower than third generation quota which of the following statements about fourth generation computers is true फोर्थ जनरेशन ने कोटा ट्रू थिला वैक्यूम ट्यूब वाला हमरा फर्स्ट जनरेशन ने ते इंट्रोड्यूस्ड माइक्रोप्रोसेसर कोथरे न थर्ड रे आसी गला फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब सेकंड आसिला हमरा इंटीग्रेटेड थर्ड माइक्रोप्रोसेसर्स ओके तो दे यूज्ड पंच कार्ड एटा भी फर्स्ट आसिला रहिला कोटा दे वर स्लोअर देन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कोटा फोर्थ जनरेशन ना एटा भी तो नहीं आई थिंक एटा हबो introduced microprocessor right
एटा हवा माइक्रोप्रोसेसर मुझे कंफ्यूज अच्छे एटा ही हवा so fourth generation yes fourth generation computers were the first used to microprocessors okay vacuum tube first punch card भी हमरा first slower than third generation तो हबनी ना next which of the following was not a characteristic of first generation computers which of the following was not a characteristic of first generation computers tell me it is huge size not a characteristic but एटा तो huge size ही थिला slow processing speed भी थिला transistor based circuit एटा न थिला high power consumption एटा भी थिला so कोटा हबनी ना transistor based circuit न थिला ता परे हमर आसिला transistor based okay next देखिबा what is the primary feature of the fifth generation computer primary feature artificial intelligence आसी गला माने fifth generation भाबी दबा okay next which of the following input method was used in first generation computer कोटा magnetic drum जदि थांदा sorry punch card अछि ना yes punch card कोटा ना हमर first generation ना let's see कोटा ना first generation computers use punch cards as the primary input method okay they were manually created and fed into the computers for processing माने अछि केमिति CD DVD रे लाइक CD पुश करिके स्विच थिबा बाहर को आसीबा पुणी पुश करिवो माने अछि सेटा मन रखियो फर्स्ट जनरेशन को सो मैग्नेटिक टेप यूज्ड फॉर स्टोरेज बट नॉट एज अ इनपुट मेथड so these are not next which of the following is not an example of third generation computer from the above which of the following is a not example of third generation IBM 360 this is the third generation Univac eta hela first generation बाकी odd one out कर दबा गोटे जदी बाहरिला हमरा कोथिरो फर्स्ट रो बाकी तो हेइ नथिबा ना okay next which feature was introduced in fourth generation computers that was absent in previous generation so which features was introduced in fourth generation जोटा कि third रे absent थिला batch processing real time processing graphical user interface obviously कोटा यूज हेथिबो ना किछटा डेवलप हेथिबो वैक्यूम ट्यूब्स तो हमर फर्स्ट रे गला सो कोन हे गला ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कौन ना GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ओके नेक्स्ट व्हिच कंपनी इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किए को कंपनी थिला जे कि फर्स्ट यूज करिथिला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस द ऑप्शंस आर माइक्रोसॉफ्ट IBM एप्पल और जेरॉक्स को कंपनी लेट्स सी दिस इज व्हाट जेरॉक्स तो फर्स्ट आमर कौन ना GUI यूज करिथिला किए ना फर्स्ट जेरॉक्स यूज करिथिला ओके व्हाट ना आमर सॉरी ओके सो फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट कौन नथिला एंड IBM नुह एप्पल नुह माइक्रोसॉफ्ट कौन करिथिला ना विंडोज IBM known for the hardware okay and apple कौन तार पर्सनल कंप्यूटर्स सब इन्वेंट करिथिला एंड GUI करथिला किए ना जेरॉक्स मन रहिबा next which of the following is not an AI based application used in fifth generation computer which of the following is not an AI based application used in fifth generation computer speech recognition robotics compiler design or export system AI based सहित कोटा नथिबो speech recognition तो थिबो robotics let's see what that this is compiler design because speed amar kon speech भी अछि robotics भी अछि and export system तो हेइ थिबो निहाती but this is not a AI based which na compiler design as it is a traditional software tool for converting code into machine languages okay compiler design काम कोन ना convert करिबो code to machine language next which feature of the third generation computers improved their efficiency over the second generation which feature of the third generation computers improved their efficiency over the second generation used vacuum tubes, used integrated circuit, used AI based system or used quantum processing which process third generation computer कथा आसिला
मन पका ऑब्वियसली इंटीग्रेटेड सर्किट ही थिबो ओके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट माइंड जेमती एकदम फिक्स हो जिवो नेक्स्ट व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड मल्टीप्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग को जनरेशन आसला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोथिरे ना फोर्थ जनरेशन introduced microprocessors enabling multiprocessing and multitasking data making computers more efficient third generation रे कौन हेतिला ना integrated circuits second रे transistor first रे vacuum tubes okay next which processor architecture is gaining popularly for energy efficiency in modern computing को processor टा x86 ARM power PC or Spark कोटा हबो ना this is what ना ARM widely used in smartphones tablets and low power devices due to कोन या पाखरे high energy efficiency and reduced power consumption capacity अछि का पाखरे ना ARM पाखरे okay and what is x86 tell me what is x86 common in desktops and laptops but less energy efficient in compared to ARM okay gotte minute guys so next power PC kind used in older Macs and embedded systems but less common today Spark primarily used in high end service but not widely adopted for energy efficiency consumer what computing but ARM जोटा हमर कोन होई छी ना advanced risk machine what is na ARM is stand for what na advanced risk machine okay this is what na ARM next which AI chatbot launched by OpenAI has gained widespread use in 2023-24 जोटा AI chatbot जोटा कि कोन launched by OpenAI द्वारा हेची कोटा बार्ड ChatGPT Alexa और Watson obviously what widely समस्त यूज करछन कोन ना ChatGPT एटा कहा द्वारा ना डेवलप्ड बाय OpenAI केबे हेतिला ना मोस्टली हमरा 2023-24 रेटा लॉन्च हेतिला word developed by Google but ChatGPT gained more widespread use and Alexa Amazon voice assistant Watson developed by IBM मन रखिबो बार्ड कहा द्वारा Google द्वारा मन रखिबो Google बार्ड Amazon A for Alexa A for Amazon Watson IBM Watson मन रखिबो W को उल्टे देले केमिति M so IBM okay next which cloud computing model provides full applications over the internet which cloud computing model provides full applications over the internet this is SaaS YaaS PaaS or DaaS के हबो ना this is what ना हमर SaaS मन रखिबो कोन क्वेश्चन अछि आउथरे पढि दियो ना which cloud computing model provides full application over the internet so full application internet रे के दिए full जोश रे हमकु की काम करे सासु घरे ना हम SaaS ही काम करे so SaaS रु मन रखिबे full application over the internet के दिए ना SaaS दिए okay so provides full applications over the internet such as Google Docs Microsoft 365 or Dropbox okay next and YaaS PaaS एगुडा भी टिके देखि देथा infrastructure as service is YaaS PaaS platform as service PaaS DaaS desktop as service DaaS so what are they now offers virtual machine storage and networking is YaaS PaaS is what for building applications example Google App Engine AWS Elastic
कौन Beanstalk and Dash desktop as service offers virtual desktops, okay, over the cloud. Next, which company introduced the first 3 nanometer chip in 2023 for high performance computer? किए यूज करिथिला Intel, AMD, TSMC or what ना Qualcomm? किए करिथिला? This is TSMC. Introduced the world's first 3 nanometer chip technology. जोटा 2023 रे कहा द्वारा हेतिला ना TSMC, Apple's A17 Pro and M3 chips दीटा बोली नानो चिप्स कौन इन्वेंट करिथिला मन रहिबा फर्स्ट 3 नैनोमीटर चिप यूज करिथिला किए ना हमर TSMC, ओके. Intel working on Intel 3 and Intel 20A nodes. AMD used TSMC technology but का बोली 3 नैनोमीटर चिप भले करिनी. Qualcomm हमर कोन कोची ना uses TSMC and Samsung for chip production तार ओन न थाए, ओके. Next, so TSMC हमर कोन होची ना this is a Taiwan semiconductor manufacturing company, is the world's largest and most advanced semiconductor foundry. It specializes what in manufacturing chips designed by companies like Apple हो, AMD हो and Nvidia हो and हमर कोन Qualcomm हो, ओके. एंड फाउंड हेतिला केबे 1987 रे हेतिला कोन ना हमर TSFC हेतिला, सॉरी TSMC हेतिला. एंड हेडक्वार्टर कोठी तार अछि ना ताइवान रे अछि, हिंचू ताइवान रे अछि. एंड टेक्नोलॉजी लीडर फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस 3 नैनोमीटर चिप्स इन 2023 कोउथिरे ना एप्पल A17 Pro एंड कोन Mac 3 चिप्स रे हेतिला. मेजर कस्टमर्स तार की एप्पल, AMD, Nvidia, Qualcomm एउडा सब रहउछन तांगर Intel, MediaTek. These are the major components of the major customers of the company. Global market share over 55% of the global semiconductor foundry market. Semiconductor foundry market रो almost 55% leading company होची TSMC. ता बिसरे सेथि पई किछि information देली. Next, which is the latest Windows operating system released by Microsoft? Latest कोना ना Windows operating system Microsoft द्वारा रिलीज हेची what is 10, 11, 12, 365. Obviously के हितिबो ना 11 हितिबो, okay. Windows 11 is the latest Windows operating system released by Microsoft, okay. आ 12 जेतु अपडेट लास्ट जाय अछि 12 भाबी देई कहबनी कि yes 12 भी हितिबो, okay. And Windows 10, predecessor of Windows 11, released in 2015. Windows 365 cloud-based virtual Windows. Okay, this is not a this is not a stand-alone operating system. Which cybersecurity threat? Wait a minute, guys. Latest Windows developed by Microsoft. Okay. So I was just verifying कि या भीतर 12 आसी जाइनी तो गोटे मिनिट. Yeah, not a problem. So, which cybersecurity threat involves attackers tricking users into revealing personal information? Malware, our phishing, ransomware, and the DDoS attack. Which cybersecurity threat? Tell me, which cybersecurity threat involves attackers tricking users into revealing personal information? What is that? That is what? Phishing. फिशिंग रु मन रखिबे हमर थ्रेट कोद रे थाए ना फिशरमैन माने जते बेले सी भीतर को जांदी ऑल ऑफ सडन किछि थॉर्म आसी जाए देन हमर से स्टॉर्म रु रक्षा करिया पे ताकू कोन गोटे लाइक ताका पाखु न्यूज़ पठा जाए अलर्टनेस पठा जाए. सो एटा कहा ऊपर डिपेंड करे ना फिशिंग
So phishing is a difficult task. That's why you can add that phishing is a cyber threat where attackers trick users into revealing personal information through fake emails, website and messages. जेमती कि fake message आसुची, email आसुची या फिर call भी आसुची. So एवढा कहाँ अंडर है ना phishing. Okay, malware, malicious software designed to harm or exploit devices and data. Ransomware, a type of malware that locks or encrypts data and demands a ransom for access. DDoS attack, distributed denial of service attack that overwhelms a system with traffic to disrupt. Next, which authentication method is considered the most secure? को ऑथेंटिकेशन मेथडटा बहुत सिक्योर बोली माना जाए? पासवर्ड ओनली, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कैप्चा और सिक्यूरिटी क्वेश्चंस कोटा देखिथिबा हमर गूगल ले सब आछी कोन ना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. सो कोटा हबो ना हमर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होची मोस्ट सिक्योर कोन ऑथेंटिकेशन मेथड. The most secure authentication method as it requires two forms of verification such as password and a one-time code. Password only, a captcha, security, these are kind of but not the strongest one. So which organization is responsible for global security regulations? Which organization is responsible for global security regulations? This is FBI, Interpol, ICO or CERT. So this is what? This is ISO. International Organization for Standardization, responsible for global cybersecurity standards. Mane rahiba global cybersecurity standards pai responsible which organization? This is ISO. ठीक अछि. FBI, this is the Federal Bureau of Investigation. Okay, Interpol is the International Criminal Police Organization, and the CERT, the Computer Emergency Response Team, respond to cybersecurity incidents but operates at national or organization level, not global level. Mane rakhiba. Next, which ransomware attack in 2023 affected multiple companies worldwide? 23 रे हमर जो ransomware attack होची हेइथिला त को कंपनी बहुत थरा हमर कोन इफेक्ट हेछि? WannaCry, Lockheed, कोन Pegasus और Stuxnet. WannaCry, Lockheed, Pegasus और Stuxnet. कोटा हबो? Let's see the answer. This is what? हमर Lockheed. Lockheed मन रखिबा 2023 रे बहुत थरा कोन threaten heichi, attack heichi, kona now was responsible for multiple global attacks including incidents kona involving Boeing, the Industrial and Commercial Bank of China and Japan's port of Nagoya. So she is the responsible one, Lockheed. WannaCry, a ransomware attack from 2017 that attacked numerous organizations worldwide. ये सब होचंदी कोन गोटे साइबर अटैक टीम जो माने के अटैक करंदी जो 2023 रे अधिक टाइम अटैक हेची लॉकहीड द्वारा. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए VPN? मेन पर्पस ऑफ ए VPN इज व्हाट? ब्लॉकेड्स, सिक्योरिटी, ऑनलाइन प्राइवेसी, स्पीड ऑफ इंटरनेट और प्रिवेंट malware. What is the main purpose of VPN? Let's see. This is what? Secure online privacy. So VPN, virtual private network, is stand for the secure online privacy, encrypts internet traffic and hides a user's IP address, ensuring privacy and security online. Okay, what is the blockades? Some VPNs जोड़ा कना virtual private networks include aid blocking features, but it is not the primary functions. Blockades ra speed of internet, VPNs may slow down internet speed due to encryption and rerouting of traffic. Prevent malware, VPNs do not directly prevent the malware. मन रहिबा security online जोटा हमर secure online privacy direct का सहित ना VPN सहित attach अछि. Next, so which cloud storage provider offers 1 TB of free storage in 2024 रे? कोटा Google Drive,
वन ड्राइव, मेगा और आई क्लाउड कुह कोटा बहुत ही इजी वन जोटा कि एबे मोस्टली देखा मिलूँ क्या द्वारा ना दिस इज बाय मेगा ओके मेगा ऑफर्स 20 GB of free storage with additional bonuses available for new users जदि न्यू यूजर्स के भी ताकू लॉग इन करंती यूज करंती देन मेगा 20 GB रो फ्री स्टोरेज गोटे प्रोवाइड करूची गूगल ड्राइव प्रोवाइड्स 15 GB of free storage वन ड्राइव केते सॉरी yes OneDrive offers 5 GB of free storage, 1 TB available through Microsoft 360 subscription. iCloud provides 5 GB of free storage for Apple users. As of 2024, none of these provides offer 1 TB of free storage. However, TeraBox offers 1 TB of free storage to users. अच्छा TeraBox इठी नहीं option ने. So sorry for the inconvenience. If that will be the TeraBox, then that will be the right answer. Okay. Okay. So next कौन रहुची ना which recent cloud technology is designed for low latency application कोटा एमिति डिजाइन हेची जोटा कि low latency application पई यूज हे परिबो this is internet of things or edge computing or blockchain or hadoop internet of things हबनी hadoop हबनी blockchain and edge computing दीटा देली so right answer कौन हबना edge computing let's see yes so edge computing designed for low latency applications by processing data closer to the source, reducing delays and improving real-time performance. IoT is the Internet of Things, connects devices for data exchange but relies on edge computing for low latency processing. Blockchain, a decentralized ledger technology not specifically focused on the reducing latency. Hadoop, a framework for big data processing optimized for batch processing rather than low latency applications. Mane rahiba. Next, what is the latest Wi-Fi standard as of 2024? Latest Wi-Fi standard kouta Wi-Fi 5, 6, 6E or 7. Let's see, this is what? Now Wi-Fi 7. So as of 2024, Wi-Fi 7 is the latest Wi-Fi standards, offering what? Now significantly faster speeds, reduced latency and increased capacity compared to its predecessors. Got it? So Wi-Fi 5 released in 2014, supporting speed of to 3.5, जोटा कि Wi-Fi 6, जोटा केते 9.6, okay. Whereas Wi-Fi 7 रो केते रहउची ना हमर known as what introduces enhancement such as कौन 320 megahertz ए माने सब केते ना gigahertz रे रहिला बेले ये आसुची 320 megahertz channel width. So Wi-Fi 7 होची the most latest one. Next, which country launched the first 6G satellite? First 6G satellite कोठी ऑलरेडी हमर लॉन्च हे गलानी. This is not USA करिनी, जापान करिनी, साउथ कोरिया करिनी, रहिला कि चाइना. Let's see. China on November 6, 2020 रे already करि सारिलानी where 5 years back. Okay, so China launched what was described as the world's first 6G satellite to test the technology. ए पर्यंत implement हेइनी but satellite launch सरिश. Okay. What is the expected internet speed of 6G technology? 6G technology रा गोटे internet speed रा गोटे expectation देकी satellite launch हेई थिबो. So केते expected करिसंती 1 Gbps, 10 Gbps, 100 Gbps और 1 Tbps. केते हबो? Now this is what? Now 1 Tbps. Okay. So 1 Gbps टा केते ना अचीवेबल 4G LTE रे तो 1 Gbps हे जाउची 10 Gbps हमर ऑलरेडी 5G नेटवर्क्स रे कोन जियो हमर देलानी. ओके सो 100 Gbps ए पर्यंत कोन प्रोजेक्टेड फॉर एडवांस 5G एंड अर्ली 6G deployments but below the expected peak of 1 Tbps. Okay, so 1 Tbps is the expected like thing जोथि पई कि कोन सैटेलाइट लॉन्च हेची बाय द चाइना. ओके. Next, which latest web browser is gaining popularity for privacy-focused browsing? Which latest web browser is gaining popularity for privacy-focused browsing? Chrome, Edge, Brave, or Safari? Kota gaining popularity for privacy-focused browsing. Let's see. This is what?
द ब्रेव रु मन रखिबो जी की प्राइवेसी लाइक फोकस करूची वेब ब्राउजर ऊपर किए ना ब्रेवली ओके ब्रेवली आमे आम प्राइवेट लाइफ को मेंटेन करूछे व्हाटएवर एमिति किछि भी रिलेट करी कि आमे कोन मन रखिबा ओके a privacy focused web browser that blockades trackers and fingerprinting by default gaining popularity for its strong privacy features. So Chrome the most widely used browser कोटा रहिला ना हमर Chrome रहिला is Microsoft browser with built-in security feature. Safari Apple's browser with good privacy setting कौन Safari रहूची ब्राउजर टाकू सॉरी Apple ब्राउजर को Safari को जाए Microsoft रो Edge रहला Google रो Chrome रहिला जोटा कि most widely used हुए Brave is the privacy focused web browser ठीक अछि next which country implemented the first nationwide 5G networks which country implemented the first nationwide 5G network? USA, South Korea, India or Germany? Let's see the answer. This is what? Na South Korea. The first country to implement a nationwide 5G network launched it commercially on Kebe na April 3rd, 2019. रे हमर साउथ कोरिया लॉन्च करिथिला ओके एंड यूएसए लॉन्च 5G इन सिलेक्ट सिटीज बट नॉट द फर्स्ट सो इंडिया लाइक देखो यूएसए कोन लाइक सिलेक्ट ता पूर्वर भी करिथिला किंतु कोन ना पूरा नेशन वाइड से करि नथिला पूरा होल कंट्री को 5G करि नथिला सो इंडिया लॉन्च 5G सर्विस इन अक्टोबर 2022 रे जर्मनी डिप्लॉयड 5G इन फेजेस माने सेमिति भी किछि किछि पोर्शन रे नेशन वाइड करि नथिला ओके next so which AI based coding assistant was launched by GitHub AI based coding assistant was launched by GitHub द्वारा कोटा is that Copilot is that Copilot is that AI coder is that smart script कोटा हबो ना this is Copilot an AI powered coding assistant launched by GitHub developed in collaboration with OpenAI to help developers rewrite code efficiently. Okay, so Copilot कौन रहूची ना this is nothing but AI coder कौन रहूची ना एटा भी हमर कोन not an official GitHub AI tool so smart script not such AI based coding so these are not the just पिलांगु कोन एमिति भटकेवा पई ऑप्शंस दे देची जो माने ढाबा मारिबे से माने आराम से ढाबा मारी परिबे बट Copilot इज an AI कोन पावर्ड कोडिंग असिस्टेंट नेक्स्ट देखिबा so which chip manufacturer developed the most powerful AI chip in 2024 so which chip manufacturer किए रही दिला Intel Nvidia AMD or Qualcomm किए रहउची ना दिस इज व्हाट हमारा Nvidia सो ए समस्ते कौन TSMC अंडर रे रहउचंदी राइट सो ताइवान जोटा हमर ग्रुप रहिची सो Nvidia in March 2024 unveiled its flagship AI chip at Blackwell B200 मने पकाओ सॉरी मने रखो क्वेश्चन एमदी पढे पारे कि लेटेस्ट AI चिप रो ना कोन दैट इज Blackwell B200 featuring over 200 billion transistors and delivering up to 30 times the performance of its predecessors. So Intel continues to develop AI focused processor but did not release a chip suppressing Nvidia's Blackwell B200 in 2024. So main thing रहला हमर कोन ना हमर Nvidia मन रहिबो next which file format is best for high quality but compressed images which file format is best for high quality compressed images PNG JPG WebP or GIF कोटा हबो this is WebP a modern image format developed by Google that provides high quality image with better compression that JPG and the PNG ताठु भी अधिक हाई कंप्रेशन बेटर कंप्रेशन रहउची कहार ना WebP रो ओके नेक्स्ट PNG supports lossless compression
जिते बेले आम कौन गोटे साइज तार एनलार्ज करूचे जूम करूचे देन कौन तार जो ट्रांसपेरेन्सीटा तार माने स्किन धीरे धीरे कौन देखा ना फाटिला चिड़चिड़ा है भाई देखा जाऊँगी किंतु वेबपी रे जदि आम आमर फोटो ट्रांसफर करूचे देन से कौन होनी यही फॉर्मेट रखिले जिते जूम कले भी आम कौन पूरा क्लारिटी सहित फोटो आसूची सो सबुठू स्ट्रंगर एंड हाई क्वालिटी इमेज कौन आसूची ना आमर वेबपी रे नेक्स्ट Which social media platform launched its AI-powered chatbot in 2023? Tell me, which social media platform launched its AI-powered chatbot in 2023? Instagram, Twitter, Snapchat, or WhatsApp? किए? Let's see. This is what? WhatsApp. Sorry, Snapchat. 23 years. Okay. So, in 2023, Snapchat launched My AI, an AI-powered chatbot based on OpenAI ChatGPT. मने रख कोटा ना Snapchat बहुत पिला यूज करुथिबे फोटो खींचिबा पई बट मने रख एग्जाम रे भी या ऊपर क्वेश्चन आसी जाउची कि Snapchat launched My AI in 2023. This is an AI-powered chatbot based. Okay. And integrated into the app to assist users with conversations and recommendations. Instagram and Twitter and WhatsApp odd one out करिवो ठीक अछि WhatsApp रे मन रखिबो किए ना मेटा अनाउंस करिथिला AI फीचर किंतु 2023 रे नाही after all okay which technology is used in metaverse application blockchain VR and AR AI and like IoT or all of these so kon habo na all of the above habo okay so metaverse application integrate multiple advanced technology to create immersive interactive and decentralized virtual environments blockchain ensures security decentralizations and digital asset ownership VR and AR provides immersive experiences using virtual reality and augmented reality devices. AI and IoT, artificial intelligence, enhances virtual interactions while Internet of Things connects real world device to the metaverse. Got it? Which social media platform launched its AI powered chatbot in 2023? I think it repeat है गला, right? Snapchat ना repeat है गला. Let it. So, which UPI feature allows international payments? को UPI हमारे international payment को कौन support करूची? Let's see UPI auto pay, UPI Lite, UPI Global और UPI Scan and Pay. कोटा हबो ना UPI Global. कारण total कौन होची ना full international payment असला माने कौन globally सेटा को accept करिथिबे तापर तो international payment हेतरे हैला ना. So the features allow Indian users to make international payments using UPI at supported merchants in foreign countries also. Okay, so UPI auto pay enables automatic recurring payments for subscription and bill. Auto pay कौन देखी थी ना suppose Hotstar हैला तो Jio Hotstar ही जाइची but Jio Hotstar जते बेले हमर सब्सक्रिप्शन नउचे एंड ऑटो पे कौन सेट करके रखी दउचे से कौन होची हमर एवरी 3 मंथ हो या फिर 6 मंथ जे जेमती सब्सक्रिप्शन नै थिबो ता अकॉर्डिंग हमर कौन YouTube रा भी सब्सक्रिप्शन नेले ता अकॉर्डिंग कौन पैसा तार ऑटो डिडक्ट हे जाउची सो ऑटो पे कौन फोन पे रे ही सेट हे पारुची सो UPI ऑटो पे भी सेट होउची UPI Lite designed for small value transactions without requiring a UPI pin. UPI Scan and Pay, what is that? Now allows users to make payments by what? Scanning the QR codes. आजिकली सब मर्चेंट्स मान पाखे रखुचंदी ना से माने द स्कैनर जो थी हम कौन स्कैन करी की पे करि पारुछे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच डिजिटल करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 2023? को इंडियन करेंसी को 2023 रे इंट्रोड्यूस करा जाइथिला बिटकॉइन ई रूपी CBDC और भारत पे. टेल मी दिस इज व्हाट ना ई रूपी ए डिजिटल रूपी ई रूपी कौन ना द डिजिटल रूपी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कहा द्वारा ना RBI द्वारा एटा हेइथिला केबे ना 2023 रे. Okay, as India's central bank digital currency for both retail and wholesale transactions.
Bitcoin, a decentralized cryptocurrency. CBDC stands for what? Central Bank Digital Currency. Bharat Pay, not a digital currency. Okay. Next, which payment app is India's leading UPI platform in 2024? Kota, Google Pay, Paytm, Phone Pay or Bharat Pay? Obviously, this is as much as easy jota ki Phone Pay. Okay, this is as much as easy. As of October 2024, Phone Pay led India's UPI market with approximately 47.66% of transaction volume and 49.76% of transaction volume. So जो ट्रांजैक्शन लिमिट रहुची केते केते परसेंट हमर कोन ना फोन पे हमर कोन इंडिया मार्केट रे टेक ओवर करिछि. सो गूगल पे 37% नउची, पेटीएम 7.21% नउची एंड भारत पे केते नउची ना हमर लाइक किछि रैंक तार हेई ने पर्यंत माने एते कोन ऊपर को उठिनी हमर फोन पे दा आगा आस्तिला ना. फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ए माने टिके मार्केट नै जाइछंदी सबुटो अधिक के फोन पे. नेक्स्ट, so which government initiative promotes digital transaction in India? कोटा डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया. को पॉलिसी या फिर कहि परिबा को गवर्नमेंट इनिशिएटिव अंडर रे स्टार्टअप हेइथिला? देखंतु कोन ना दिस इज व्हाट डिजिटल इंडिया. ओके, हम डिजिटलाइजेशन हैला कहा अंडर रे? डिजिटल इंडिया अंडर रे हिथिबो. सो these initiatives launched by the government of India in 2015 aims to promote digital transactions, improve online infrastructure and increase internet accessibility across the country. Okay, so startup India under रे तो नुहा, मेक इन इंडिया भी नहीं, स्किल इंडिया भी नहीं. ओके, स्किल इंडिया स्किल डेवलपमेंट उपरे, मेक इन इंडिया एनकरेज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ उपरे, स्टार्टअप इंडिया सपोर्ट्स न्यू बिजनेस. ओके, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप. नेक्स्ट, व्हिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वाइडली यूज्ड इन ब्लॉकचेन डेवलपमेंट? कोटा ना पाइथन, सॉलिडिटी, C++ और रूबी. व्हिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वाइडली यूज्ड इन ब्लॉकचेन डेवलपमेंट? कोटा रहइबो पाइथन, ब्लॉकचेन सहित रिलेट करिवो पाइथन, सॉलिडिटी, C++ और रूबी. कोन हबो ना दिस इज सॉलिडिटी. A specialized programming language primarily used for what? Now writing smart contracts on blockchain platform like what? Na Ethereum. Example भी दे दबो. Okay, तो the exam रे आसे Python used for blockchain related applications, not कना language of a blockchain. C++ used in blockchain development. Ruby not commonly used in blockchain development. मने रहिबो. So solidity specialized program language गोटे कहारो ना हमरो blockchain रो. Next, which programming language was ranked as the most popular in 2024? Which programming language was ranked as the most popular in 2024? What? Python, JavaScript, Java or C++? This is what? Python. In 2024, because देखो 2024 अकॉर्डिंग सब क्वेश्चन आसुची, बिकॉज जस्ट गोटे मास हेछि हमर 2025 सरीवार. सो एबे जदि हमें 2025 ऊपर अपडेट हेबा क्वेश्चन किछि आसी ही बनी. सो 2024 अकॉर्डिंग हमको अपडेट हेबा को पड़िबा. सो व्हाट ना Python 2024 was ranked as the most popular programming language, leading various indexes due to its versatility and widespread use in fields like AI and web development. So JavaScript maintained a strong position, but अधिक popular किए है ना Python. Okay, next, which feature use introduced in Windows 11 to enhance multitasking? Which feature was introduced in, guys देखो like किछिटा कमेंट रे भी लाइक प्रीवियस क्लास मोर जोटा जाइथिला लाइक जीएस रो MCQs 500 MCQs सेथरे भी कंप्लेन रे आसी थिला किछिटा कि क्वेश्चन आंसर देखि देखि कहउछो तथापि कहि परना किछिटा मिस्टेक रहउछि. एमिति नाही, बिकॉज स्टैंड बाय रे एते टाइम क्लास नेबाटा नॉट दैट इजी. ठीक अच्छे, एंड गोटे फ्लो रे कहला बेले केते बेले ना केते बेले फ्लो ब्रेक हे जाए. सो
आज आम ए ह्यूमन बीइंग तो सिली मिस्टेक्स तो रही ही ना सो जदि आपण मैंने क्वेश्चन पढ़ी पारुचंती एंड जानी पारुचंती ताले प्लीज एटा को टिके नेग्लेक्ट करिवे थैंक यू so which feature was introduced in Windows 11 to enhancing multitasking the options are aerosnap snap layouts virtual desktops and the Cortana assistant okay which feature was introduced in the Windows 11 re kon heichi now this is what snap layouts okay so Windows 11 re snap layouts amar heichi a feature introduced in Windows 11 that allows users to quickly organize open windows into predefined layouts for better multitasking okay and aerosnap introduced in Windows 7 re virtual desktop helps manage multiple workspace but is not a new feature Cortana assist a voice assistant Cortana मन रखिबो गोटे voice assistant and aerosnap हमर Windows 7 रे and virtual desktop ताकू ऑड वन आउट करिबो सो लेआउट रहिला ठीक अछि next which AI model was launched by Google in 2024 to compete with ChatGPT which AI model was launched by Google in 2024 to compete with ChatGPT this is Bard Gemini LaMDA or DeepMind AI कोटा हबो ना this is Gemini in December 2024 Google DeepMind introduced Gemini a multi-modal large language model designed to compete with OpenAI GPT-4 so OpenAI रो ChatGPT जो हमर अछि 4 वर्जन आसी छि ता सहित कोन ना compete करिवा पई काहा को करि छि ना DeepMind करि छि काहा को ना Gemini को इंट्रोड्यूस करि छि ओके next which database technology is gaining popularity for AI driven applications which database technology is gaining popularity for AI driven applications को gaining रही छि which database technology is gaining popularity for what ना MySQL SQL or vector databases or what the MongoDB let's see which AI driven this is what now vector database these databases are gaining popularity in AI driven applications because they efficiently handle high dimensional data such as embedding used in machine learning and generative AI models examples include kona Pinecone Waveit, Fice and the Milvus. These are what? The examples of the vector databases. And MySQL is a traditional relational database widely used जोटा कि but not optimized for AI driven पाई एटा यूज हेनी because it is traditional और AI टा होची कोन updated one okay so traditional रा update सहित किछि काम ही नहीं okay next देखिबा so now we will see what is the next question okay so let's see this is what now what was the first generation purpose electronic digital computer from the below options tell me the right answer that what was the first general purpose electronic digital computer that is UNIVAC ENIAC IBM 360 or Mark 1 अपन इजिली ताकू कोन ऑड वन आउट करि परिबे फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर असला डिजिटल कंप्यूटर सो फर्स्ट जनरेशन में कोटा कहितली ना यूनियाक आ यूनिफैक कोथरे रहउची ना फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रे रहउची राइट एंड IBM 360 3 रू रिलेट करिवे काहाकू ना दिस इज थर्ड जनरेशन रहिला के मार्क 1 लेट्स सी हमरा कोन रहिछि एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस so what is the ENIAC रो हमरा जोटा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर दैट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जोटा न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड द कंप्यूटर भबरे काहाकू जणा जाउछि ना दिस इज ENIAC
okay, and it is also the first general purpose electronic digital computer जोटा कि गोटे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमर यूनिवैक भी बट इनियाक को हमर निया जाउची एज ए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर मन रहिबो केबे डेवलप हेइथिला कहा द्वारा ना इकार्ट एंड जॉन मुचे द्वारा हेइथिला सो मोस्टली कौन केबे करिथिले 1945 रे ताको इन्वेंट करिथिले एट द यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट ना पेनिनसिल्वेनिया ओके सो यूनिवैक हमर होइला फर्स्ट कमर्शियल प्रोड्यूस्ड कंप्यूटर 1951 रे हेइथिला फर्स्ट न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर एंड जोटा को हमर कोन कहै छी ना इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भाबरे किए ना इनियाक जोटा कोन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एमिति मन रखिबो फर्स्ट रहउची ई इनियाक रो लास्ट रहउची सी सो ई रु रिलेट करिवो इनियाक होउची कोन ना इलेक्ट्रॉनिक सी लास्ट रहउची डिजिटल कंप्यूटर सी फॉर कंप्यूटर ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक ओके सो यूनिवैक रहउची कोन ना फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस्ड कंप्यूटर केबे लाइक लॉन्च हेइतिला 1951 रे ओके आफ्टर व्हाट इनियाक रो लॉन्च परे ही हेइतिला एंड एटा भी कहा द्वारा ना बाय द इकर्ट एंड कोन मोस्टली द्वारा इन्वेंट हेइथिला सो IBM 360 एटा कोन ना गोटे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर अ सीरीज ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM in 1964 एटा हेइथिला and Mark 1 an electromechanical computer developed by Harvard University in 1944 this is what na electromechanical computer जोटा कि केबे ना इनियाक पूर्वरो ही लॉन्च हेइथिला but this is not a electronic numerical integrator and computer okay मने रहिबो next question now the first generation of computers used which technology फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली वैक्यूम ट्यूब्स थिला ना देन हमर आस्तिला ट्रांजिस्टर देन आस्तिला इंटीग्रेटेड सर्किट देन आस्तिला माइक्रो प्रोसेसर दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर अकॉर्डिंग ही अछि लेट्स सी द आंसर व्हाट ना दिस इज वैक्यूम ट्यूब्स द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940s रो 1956 भितर ही तार कोन डेवलपमेंट हेई कि यूजेस हेइथिला आफ्टर दैट ताको रिप्लेस करिथिला किए ना सेकंड जनरेशन कंप्यूटर दैट इज ट्रांजिस्टर को के रिप्लेस करिथिला ना दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट एंड इंटीग्रेटेड सर्किट को के रिप्लेस करथिला दैट इज माइक्रो प्रोसेसर जोटा कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ओके सो इनियाक यूनिवैक एंड IBM 701 जेमिति 3 रु आपण रिलेट करथिले थर्ड को सो एंड रे अछि केते ना 1 तो IBM रो 3 टा को थर्ड जनरेशन सहित रिलेट करिवो व्हेयरएज 1 को 1 सहित रिलेट करी कि मन रखिवो ओके अदरवाइज IBM नेम रु त माने कंफ्यूज हे जिवो सो ट्रांजिस्टर्स यूज्ड इन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ईयर होची 1956 रे से एंड हैला 1956 रे ऐड हे कि 1963 रे एंड हैला देन 1963 रे ये हैला अगेन 64 रु 1971 अछि हमर की ना थर्ड जनरेशन कंप्यूटर एंड माइक्रो प्रोसेसर अगेन 97 रे से एंड हैला 97 ऑनवर्ड्स हमर कोन चली छी ना माइक्रो प्रोसेसर्स ओके फिफ्थ जनरेशन इज अबाउट व्हाट अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द मशीन लर्निंग ओके नेक्स्ट what does UNIVAC stand for the full form of UNIVAC what is this is a first generation computer okay so what is that universal automatic computer or united network of intelligent computers or universal vacuum arithmetic computer or unified national integrated computer what is that let's see the answer this is what now universal automatic computer UNIVAC is stand by universal automatic computer was कौन जेमती कहितली फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर whereas ENIAC कौन होउथिला ना फर्स्ट हमर कंप्यूटर जे की लाइक ये रहउथिला हमर कमर्शियली यूज होउथिला सेटा हमर नॉन कमर्शियली यूज हे परुथिला ओके एंड कहा द्वारा यांकर भी सेम हमर के फाउंडर थिले सेम जे कि कोन प्रेस्पर इकट एंड द जॉन मुस्ली 1951 रेटा डिजाइन हेथिला ओके सो यूनाइटेड नेटवर्क ऑफ इंटेलिजेंस दीज आर नॉट जस्ट टू तम मानु को ही डिस्टर्ब करिवा पई फ्रॉम द राइट आंसर सो इन which year was the first electronic computer ENIAC developed
सो इनियाक मु तुमको कहि केबे हेतिला ना इनियाक इज ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर केबे हेतिला ना 1945 रु 56 भीतर हेतिला राइट सो 45 रु 56 भीतर जो ईयर थिबो ताकू ही रखिबो बाकी सब ऑड वन आउट कर दबो सो एटा तो जम्मा भी हबनी बाकी सब अछि लेट्स सी केमिति आंसर करिछि सो इलेक्ट्रॉनिक केबे हेतिला ना 1946 रे आज इट इज मु कहि को ना फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रे ओके 1945 रे कोन हेतिला फर्स्ट मन रखो इनियाक जोटा हेतिला हमर केबे ना 1946 रे हेतिला 1945 रे कोन हेतिला ना द डेवलपमेंट वाज नियरली कंप्लीट बट इनियाक वाज ऑफिशियली अनवील्ड केबे हेतिला ना फेब्रुअरी 15 1946 रे हेतिला मन रहिबो ऑन व्हिच डेट द डेट वाज फेब्रुअरी 15 एंड द ईयर इज 1946 ओके So 1950 by this time ENIAC was already operational and new year and this is the कौन तो मानकु just बोका बनेवा पे question no options गुड़ा okay nothing else so who developed the concept of stored program architecture who developed the concept of stored program architecture what is that John von Neumann Alan Turing Grace Hopper or Steve Wozniak किए let's see this is what developed by Newman मन रखिबो फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर कहा द्वारा डेवलप हेतिला दिस इज जॉन वॉन न्यूमन ओके देखो स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर तीनटा वर्ड मिसिकी हेची देन जॉन वॉन न्यूमन तीनटा वर्ड मिसिकी हेची ताकू रिलेट करिक मन रखिबो केबे हेतिला इन द लेट 1940s मन रहिबो So, Alan Turing for the Turing machine, Grace Hopper for pioneering computer programming and developed the first compiler. First compiler was developed by whom? By the Grace Hopper. So, Steve Wozniak कौन करिथिले ना co-founder of Apple Inc. and designer of the Apple I and 2. कौन Apple 1 and 2 सॉरी नॉट आई एप्पल 1 एंड 2 कंप्यूटर्स को कौन डिजाइन करिथिले किए ना स्टीव वॉजनिक नेक्स्ट व्हिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज व्हिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज दिस इज कोबल बेसिक फोर्ट्रान और पास्कल Which programming language was the first high level language? Let's see. First high level language is what? Now this is the Fortran. First high level language. Okay. And was the first high level language developed by IBM in 1957. Fortran कहा द्वारा develop हेइथिला? Now this is developed by the IBM. केबे हेइथिला? 1957 रे हेइथिला. Okay. It was designed primarily for scientific and engineering computations. Okay, so COBOL developed in 1959, mainly used for whom? Used for business and financial applications. BASIC introduced in 1964, designed for beginners in programming. Pascal developed in 1970, used mainly for teaching structured program. मन रहिबो Pascal कोथि पई, BASIC कोथि पई, COBOL कोथि पई, and the year are also important. Next देखो the second generation of computers used which technology? Tell me the second generation computers used which technology? This is vacuum tubes, transistors, integrated circuits or microprocessors. Second first के थिला ना vacuum tubes थिला ताकू की replace करथिला ना transistor replace करथिला let's see. So कोटा हबा हमरो ना द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जोटा कि 1956 रु 63 भितरे अछि यूज्ड ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स सो वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करथिला कि ना ट्रांजिस्टर रिप्लेस करिथिला सो ट्रांजिस्टर मेड्स कंप्यूटर स्मॉलर फास्टर मोर रिलायबल एंड एनर्जी एफिशिएंट कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ओके सो वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन रे इंटीग्रेटेड थर्ड जनरेशन रे माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन रे नेक्स्ट देखिबा okay the third generation of computers introduced which technology the third generation of computer used which technology
Is that transistors? Is that vacuum tubes? Is that integrated circuits or that microprocessor? So third generation किए ना first ला vacuum tubes ताकू replace करथिला transistor को replace करथिला IC integrated circuit. So what will be? This is what? Now the third generation computer 1964 ru 71 भितर जोटा develop ହେଇକି use होउथिला introduced integrated circuits which replaced transistors. Okay, so transistor कौन रहिला second generation, vacuum first generation, microprocessor fourth generation, as I have repeated it several times. So which generation of computers first used microprocessor? Microprocessor कोठी बुले बके की क्वेश्चन दोजी फर्स्ट जनरेशन सॉरी फर्स्ट यूज हेतिला माइक्रोप्रोसेसर को जनरेशन रे ना कोंतु फोर्थ जनरेशन रे ऑब्वियसली राइट वैक्यूम ट्यूब्स देन हमर आस्तिला कोन ट्रांजिस्टर ताकू रिप्लेस करिथिला आईसी को रिप्लेस करिथिला माइक्रोप्रोसेसर. सो दिस इज द व्हाट ना फोर्थ वन. नेक्स्ट so the fourth generation of computers 1971 ru present scenario jaye आपण माने calculate करि परिबे. Introduced microprocessors which integrated the CPU onto a single chip. This made computers smaller, faster and more efficient. So CPU रे गोटे smaller chip जोटा माइक्रोप्रोसेसर आमर ऐड हेइथिला जदि सीपीयू रे स्मॉलर चिप के ऐड हेइथिला पचारिबे माइक्रोप्रोसेसर न पचारि कि देन भी कंफ्यूज हेबेनी आमर फोर्थ जनरेशन बोली मेंशन करिवे राइट. नेक्स्ट देखिबा. सो व्हिच कंपनी इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर? टेल मी व्हिच कंपनी इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर जोटा कि पीसी किए IBM, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और जेरॉक्स कुह किए एटा ऑलरेडी टिके डिफरेंट वे रे मु पचारि सारिछि कोटा हबो ना दिस इज व्हाट IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्पोरेशंस. IBM रो फुल फॉर्म इज वेरी इंपोर्टेंट लाइक कंप्यूटर एग्जाम रे आसी जाए जोटा कि मेनली पिला माने कंफ्यूज हे जानती. So International Business Machine Corporations introduced the first personal computer known as IBM 5150 is the first. ठीक है जी first personal computer मॉडल कौन नेम अछि ना IBM 5150. केबे इन्वेंट हेइथिला ना अगस्त 12 1981 रे हमर कोन लाइक publish हेइथिला. It ran on an Intel 8088 processor and used MS-DOS as its operating system. अब तार OS कौन थिला ना MS-DOS OS को से यूज करी थिला and it is what IBM 5150 processor Intel 8088 processor. So Apple introduced the Apple 1 जोड़ा कि एप्पल 1 and 2 कोई थिला. तो एप्पल 1 1976 रे एप्पल 2 तापर गोटे वर्ष रे 1977 रे. Microsoft did not manufacture hardware, instead it developed kon MS-DOS एते सब सॉफ्टवेयर जिंस अछि and later Windows for IBM. Okay, IBM PCs पई later develop कला but initially से कोन ना जते ऑपरेटिंग सिस्टम्स ताकू कोन इनिशिएट करूथिला ताकू धीरे धीरे डेवलप करूथिला. जेरॉक्स डेवलप्ड बाय अल्टो 1973 रे लाइक अल्टो कंपनी द्वारा किए ना जेरॉक्स डेवलप हिच. वन ऑफ द अर्लीस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स विथ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बट वाज नॉट कमर्शियली अवेलेबल. ओके, नेक्स्ट हु डेवलप्ड द फर्स्ट माउस फॉर कंप्यूटर्स? फर्स्ट माउस जोटा हमर कंप्यूटर किए डेवलप करिथिले इज दैट बिल गेट्स, डगलास ईगलबर्ट, स्टीव जॉब्स, जॉन आर्टनसॉफ. टेल मी हुज दिस इज डुगलास. मन रखिबो माउस डुगल्स एमिति करिक मन रखियो माउस एस रे एंड होची एंड डुगलास एस रे एंड होची एमिति लाइक टिके रिलेट करिक मन रखिबो. ओके, सो डुगलास ईगलबर्ट इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस इन 1964 while working in Stanford Research Institution SRI जोटा. Okay, the original mouse was made up of wood and had two perpendicular wheels. ता चारि पटे लाइक एटा टोटल फिगर तार कोन ना
वुड रहिथिला एंड दी पटे दीटा कोन व्हील लागिथिला ताको मूव करिया पई एठी जेबे एबे हमर कोन पूरा एटा सेंसर सिस्टम हे गलानी सेबे तो वायर्ड वाला थिला ना नथिला वायरलेस सो instead of modern day sensors Anselbot कौन करिथिले इंट्रोड्यूस द डिवाइस ड्यूरिंग ए हिस्टोरिकल historic presentation in 1968 known as the mother of all demos okay एटा मन रहिबो लाइक इंगलबर्ट आउ कौन करिथिले ना मदर ऑफ ऑल डेमोस जो एग्जाम रे आसी जाए मोस्टली एटा इते इंपोर्टेंट नाही आसीबनी स्टिल मन रखि त 1968 रे किए ना माउस जे इन्वेंट करिथिले सी हमर कोन करथिले ना मदर ऑफ ऑल डेमोस भी इन्वेंट करिथिले माउस फॉर माउस एम फॉर मदर ऑफ ऑल डेमोस किए करिथिला ना हमर डुग्लास के एंगलबर्ट ही करिथिले ओके बिल गेट्स co-founder of Microsoft Steve Jobs helped popularize the graphical user interface that is GUI and mouse with the Apple Lisa 1983 रे जोटा डेवलप हेथिला ओके एंड Macintosh 1984 रे so John Atonsoff developed the Atonsoff's Berry computer that is ABC one of the first electronic digital computer which was the first commercially available microprocessor. Tell me which was the first commercially available microprocessor. That is Intel 4004, Intel 8080, Motorola 68000 or Zilog Z80. Ki habo? Now this is what? Intel 4004. Released kebe heithila 1971 was the world's first commercially available microprocessor. It was a 4-bit processor designed by Federico Faggin. Okay, Federico Faggin and Ted Hoff and Stanley Measure at Intel. So like founder माने एते like matter करंदिनी हमरो एग्जाम रे एते आसेनी माने एग्जाम पर्सपेक्टिव रो एते इंपोर्टेंट नाही बस हमको ईयर इंपोर्टेंट आ को जिंसटा लाइक इन्वेंट हेथिला सेटा हम पय केते यूजफुल होउची सो दैट्स इंपोर्टेंट ओके so Intel 8080 1974 हेथिला one of the first widely used 8-bit microprocessor केते ना 8-bit microprocessor Motorola 68000 1971 इन्वेंट हेथिला a powerful 1632-bit केते ना 1632-bit microprocessor okay आउ Zilog Z80 केबे हेदिला ना an 8-bit microprocessor popular in early computers like the TRS-80 and ZX Spectrum. Next, what was the name of the first Apple computer? Tell me what was the name of the first Apple computer? That is Apple I, Apple II, Macintosh or Lisa. Obviously आपण माने कंफ्यूज होतो Apple फास्ट हेथिबो माने कोन Apple 1 ही हेथिबो ना so what this is Apple 1. Apple 1 was the first computer developed by Steve Jobs and Steve Wozniak कोठी in 1976 रे under Apple computer. Okay, it was a single board computer and was sold as a kit requiring users to add their own keyboard and monitor. Only about 200 units were produced. Okay, only 200 piece हमर कोन प्रोड्यूस करा जाइथिला and Apple 2 हेथिला next 76 रे हमर कोन हेतिला Apple 1 Apple 2 हेतिला 77 रे then आस्तिला Macintosh then आस्तिला Lisa पर आस्तिला हमर कोन ना Macintosh okay next in which year was Microsoft founded Microsoft को year रे found हेतिला it was founded in 1970 75 or 80 or 85 this is what na 75 Microsoft was founded on April 4, 1975 by Bill Gates and Paul Allen. किए Bill Gates को तो समस्त जानी चंदी but Paul Allen को कौन समस्त जानी चंदी yes he is also a co-founder of Microsoft. Okay. कोड हेतिला ना न्यू मेक्सिको रे फर्स्ट एटा कोन हमर माने कोन फाउंड हेथिला ओके सो द कंपनी इनिशियली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर फॉर microcomputers and its first major success was creating MS-DOS for IBM PC ओके स्टार्टिंग रे माइक्रोसॉफ्ट कोन करूथिला ना हमर कहितली ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कोन डेवलप करूथिला सो फर्स्ट IBM PC पई MS-DOS से कोन डेवलप करिथिला
1970 एवडा सब तुमको कोन illusion, just nothing else. The first computer virus was called, first computer virus हमें कोन antivirus पक्की दोनो तम like system रे जदि किछि hang होउची या फिर किछि problem देखौची. So this is what, now the first computer virus was called kon creeper, brain, militia or I love you. So what is that? The creeper virus होची first antivirus ताकू कहि परिबा. Okay, the creeper virus was first recorded computer virus, no sorry, not antivirus, the virus developed in 1971, okay, by Bob Thomas at BBN Technologies. It was an experimental self-replicating program that infected ARPANET, the early internet systems running 10x operating systems. Okay, so the virus displayed the message. कौन displays करे message रे ना, I am the creeper, catch me if you can. What? That I am the creeper, catch me if you can. Okay, so it did not cause harm but was the first example of a self-replicating program leading to the development of modern computer viruses. So brain केबे हेतिला ना 1986 रे हेतिला the first MS-DOS virus. Brain होची कोन ना first MS-DOS virus created by two Pakistani brothers. Obviously सेमान ही मुंडा थिबो ना, सेमान ही एमितिया virus create करि परिबे आ किए करि परिबो. So एमिति मन रखियो पाकिस्तानी मानकर कोन दे आर ब्रेनलेस, सेथि लागि से माने भाइरस क्रिएट करंदी. कोटा करंदी लाइक पाकिस्तानी करथिले ब्रेन वाला. ओके, कोथि पई ना एमएस डॉस पई. ओके, सो पाकिस्तानी आर मास्टरमाइंड, एम रु मन रखियो दे आर मास्टरमाइंड, दैट्स व्हाई दे क्रिएट, they work like a brainless orc. Okay, so militia, a macro virus that spread via Microsoft Word email attachment. So militia ru relate karibo kono macro virus and relate karibo kono na Microsoft. I love you 2000, what is that? Na a worm that spread through email with an attachment named love letter for you. What? Na कौन से spread करे ना, जेमिति ये कोठला कोन I am the keeper, catch me if you can, then ये spread कोठला कोन love letter for you .txt.vvs. So this is also important, like को कंपनी द्वारा एटा हेइथिला, को भाइरस रो नेम पचारि दबो, टोटल स्टेटमेंट लाइन टा लिखि कि this is developed by or this is released by which virus, names are this. So I love you 2000. Next, what was the first graphical web browser? What was the first graphical web browser? This is Mosaic, Netscape, Navigator, Internet Explorer or Opera. Tell me, what was the first what was the first graphical web browser? This is what? The Mosaic. Okay, the first graphical web browser was Mosaic. मन रखिथिबो आगरु हमर कोन जेतेबेले टाइल्स या फिर ग्रेनाइट आसी नथिला, मार्बल्स आसी नथिला, सेतेबेले कोन होतला मोजाइक सिस्टम होतला ना आगरु, बहुत पुराना लाइक मु कहबी तो 200 years 100 years पूर्वरो कोन मोजाइक सिस्टम थिला, जोटा कि आम घरे तो एटलिस्ट फ्लोरिंग सब मोजाइक हेक थिला. सेथरु मु जानली कि एमिति किछि सिस्टम अछि. सो एटा घरे पचलाटो कहले कि जेबे मार्बल स्टाइल्स आसी नथिला ता पूर्वरो मिस्त्री माने एमिति काम करथले. सो माने रखो फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर जेतेबेले आसिला, देन आसिला कोन ना मोजाइक. Okay, so first graphical web browser was Mosaic, developed in 1993 by Mark Andreessen and Eric Wiener at the National Center of Supercomputing Applications NCSA at the University of what? Na Illinois. Okay, Mosaic was the first web browser to make the World Wide Web user-friendly by allowing images and text to be displayed together on the same page. It played a crucial role in popularizing the internet. Okay. Next होची जोड़ा Netscape Navigator 1994 इन्वेंट हेतिला based on what? ना Mosaic and became the dominant browser. Internet Explorer केबे ना Microsoft द्वारा Internet Explorer आस्थिला. Opera केबे ना developed by the Norwegian company. Okay, Norwegian company द्वारा कौन हेतिला ना हमर Opera, who co-founded Microsoft along with Bill Gates. देखो आसी गला ना किए ना Paul Allen. Next, the first ever website was
created by which organization? First website को organization द्वारा create करा जाइथिला? NASA, CERN, IBM or MIT? This is what? हमरा कहा द्वारा हेतिला? Now first ever website was created by Tim Berners-Lee at CERN. Okay, what? This is CERN, CERN, European Organization for Nuclear Research. तो first website कोठी ना nuclear research रे ही हेतिला. So nuclear research रो मन रखिबो कोठी अछि ना this is nuclear research. Okay, NASA involved in space research. Okay, IBM, a major computing company, and MIT is known for the technological innovations. Okay, next. Which company developed the first commercial microprocessor? Which company developed the first commercial microprocessor? Is that IBM, Intel, Apple or AMD? Tell me. This is what? Na Intel. First time commercially को microprocessor को company use करूथिला, invent करिथिला Intel. Okay, Intel developed the first commercial microprocessor, that is Intel 4004. Got it? Okay. Next देखो. The first laptop computer was introduced in which year? The first laptop computer was introduced in which year? 19 देखो laptop computer कथा पचारिला. Okay, माने laptop कथा पचारिला. 1981, 84, 89 और 1991 रे केबे हेतिला? It is introduced in 1981 रे. माने रखो late कौन जो starting of 1980s रे हमर हेतिला. 1981 मन रखिबो. केबे ना laptop 81. Okay, the first laptop computer option 1 ना कौन थिला ना option 1 was introduced in 1981 by Option Computer Corporation. Okay, it was not battery powered initially, requiring an external power source. Like battery कौन inbuilt न थिला, charge रे connect करी कि ही ताकू चला होतला, switch off, then the computer shut down. Despite its limitation, it paved the way for modern laptops. धीरे धीरे कौन तार किछटा ड्रॉबैक रही जाइथिला, ताकू धीरे धीरे चेंज करी करी अगेन ताकू कौन हमर न्यू लैपटॉप रे कन्वर्ट करी देले. 1984 एवरा सब कौन इल्यूजन. नेक्स्ट 1991 टा मन रखो जोटा एग्जाम रे आसी जाए. IBM introduced the ThinkPad. ओके, लिखि दिबा लैपटॉप अगर गोटे थिंकपैड सिंबल लिखा हुए थिंकपैड सीरीज बट लैपटॉप्स ऑलरेडी एते बेले एग्जिस्ट थिला. 91 रे मन रख थिंकपैड इंट्रोड्यूस करथिला. ओके, नेक्स्ट हु डेवलप्ड द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? सो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलप करथिले? रिचर्ड स्टॉलमैन, लाइनस टॉरबाल्ड्स एंड डेनिस रिची और बिल गेट्स. नारू ही तुम माने जानि देथिबो. सो किए करथिले ना लाइनस टॉरबाल्ड्स करथिले कोन ना लाइनक्स. ओके, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय whom ना लाइनस टॉरबाल्ड्स. ओके, नेक्स्ट देखिबा रिचर्ड स्टॉलमैन ही फाउंडेड द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन FSP. ओके, and Dennis Ritchie he co-created the C programming. Like C programming first कौन ताको co-create करथिले, like co-founder type रे से जने थिले किए ना डेनिस रिचे. And Bill Gates the co-founder of Microsoft माने जानि छ and developed Windows. Okay, Microsoft रे कौन ना Bill Gates हमर कहि परिबे developed Windows by Bill Gates. Okay, so the first search engine on the internet was कहिथिली first search engine on the internet was कौन थिला? Is that Google, Yahoo या फिर Arki या फिर Alta Vista? So किए? This is Arki. So Arki was the first search engine created in 1990 by whom? By Alan Imtago to index FTF files. Okay. So Google launched in 1998 by Larry Page and the Sergey Brin. Okay, Yahoo founded in 1994. It started as a web directory before becoming a search engine. Alta Vista launching in 1995. It was one of the earliest web search engine. But कौन Google like कौन dominate करके नहीं गला. But Arki was the first search engine. Okay, कहा द्वारा create ही थिला नहीं by Alan Imtago. Okay,
Okay, MTech. In which year was the first email sent? First email को year रे send करा गला. So first email once was sent in which year? This is 1965, 71, 98 or 1990. This is what 1971. The first email was sent by Ray Tomlinson in 1971 using ARPANET network. Co network na using ARPANET network. Okay. Next question देखिबा. What was the first operating system to include a geographical user interface? से operating system रे first include करा जाइथिला काहाकू ना GUI की. Windows 1.0, Macintosh System 1, Xerox Alto operating system or MS-DOS. Tell me what was the first operating system? This is what? Na Altos 01. So Xerox Alto जोटा Alto company द्वारा Xerox टा develop ହେଇଥିଲା. So operating system Xerox Alto was the first कौन OS with graphical user interface. मन रहिबो Xerox टा हमर कोन बहुत जुगरु अछि लाइक जुगरु नै बहुत वर्ष हलानी अछि ना Xerox टा हमर. सो Xerox टा होछि कोन ना फर्स्ट जे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को कोन बढ़ावा देइथिला ता सहित ऐड करिक. ओके. Windows 1.0 launched in 1985. It was Microsoft first GUI based OS. कहारो GUI based by Microsoft. ओके. Windows टा Macintosh त हमर का रहइला ना released in 1984. Okay, and MS-DOS introduced in 1981. It was a command line operating system with no graphical user interface. Okay, the term bug बहुत सारा like obviously हमें माने इंटरनेट यूज करछे माने बग विषय जानी छे. So the term bug in computing was first used by first a bug word ta कोठु आसिला ग्रेस होपर अलन ट्यूरिंग चार्ल्स बैबेज और स्टीव वोजनाइक किए करथिले. दिस इज व्हाट होपर. सो होपर मन रखियो बग इज अ काइंड ऑफ कोन होपर को मन रखियो होपर एंड बग आर सेम कैटेगरी एमिति करी कि मन रखियो. ओके. सो Hooper मन रखिबा bug. So Grace Hooper 1947 she discovered what na a moth stock in a relay of Hubbard Mark II computer and termed it a bug. Okay, so bug मन रख केबे 1947 रे and by whom ना Hooper. Okay, Hooper रू Hooper करी कि मन रखिबा. Next. The first hard disk drive was introduced by which company? The first hard disk drive was introduced by which company? This is Seagate, IBM, Western Digital or Toshiba. So first hard disk drive kaha द्वारा हिथिला? Now this is what? IBM introduced the first hard disk drive. HDD first amar introduce हेतिला by IBM in the year 1956. The model name कौन थिला ना IBM 305 RAMAC. Okay, and storage capacity initially केते थिला ना hard disk रो just 5 MB. Okay, and what is Seagate? Seagate founded in 1978. Seagate introduced the first 5.25 inch HDD in 1980. Western Digital, a major HDD manufacturer but not the created the first HDD. Toshiba known for innovations in storage including flash memory. Okay, किए Toshiba flash memory relate करियो. So who invented the World Wide Web? World Wide Web को की invent करिथिले? Tim Berners-Lee, Vint Cerf, Steve Jobs, Mark Zuckerberg. किए करिथिले ना फर्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब हमर किए करिथिले ना दिस इज व्हाट टिम बर्नर्स-ली. ओके. सो ही इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब 1989 while working on CERN. Okay. The Vint Cerf known as the father of internet. So father of the internet exam रे जदी पचारि देला then किए हबो ना Vint Cerf. Okay, so co-founder of Apple रहउचंदी Steve Jobs and Mark Zuckerberg founded of what? Facebook. Next. Who is the first high-level programming language? Who is the first high-level programming languages? Fortran, COBOL, BASIC or C? Which is the first one?
let's see, this is what now Fortran होउछ हमर फर्स्ट हाई लेवल कोन programming languages develop हेतिला by IBM in the year 1957 okay COBOL 1959 रे ता परे आसीथिला भरी जोटा कि इंट्रोड्यूस हेतिला फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस बेसिक डेवलप बाय 1964 रे आसीथिला ओके क्रिएटेड बिगिनर्स इन प्रोग्रामिंग नेक्स्ट देखिबा सी टा देखि दियो सी क्रिएटेड इन 1972 बाय डेनिस रिचे ओके सो सी टा कोन हेतिला ना वाइडली यूज हेतिला जनरल पर्पस लैंग्वेज भाबरे ओके which of the following is a low level programming language high level gala then low level सबटू कोटा python assembly java or c++ this is what assembly language is a low level programming language that is closely related to what machine code and specific to a computer's architecture okay python is a high level language java also a high level language and c++ also high level language next who developed the C programming language Dennis Ritchie Brian Stotroff James Gosling and Guido van Rossum ki karthile this is what Dennis Ritchie developed the C programming language in 1972 at Bell Labs to improve the Unix operating system okay next dekho C करथिले किए ना रिचे सी प्लस प्लस के करथिले ना हमर स्टोरस्ट्रॉप मन रहइबो जावा इज जेम्स गोस्लिंग एंड डेवलप्ड पाइथन के करथिले ना गुइडो वैन रोसम रिलेट करी करी मन रखिबो केमिति मन रखिबो आई डोंट नो दैट बट द फोर ऑप्शंस आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट नेक्स्ट व्हिच लैंग्वेज इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट व्हिच लैंग्वेज इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट tell me the java python javascript or c++ first web development ପାଇଁ को language use करा जायथिला ना this is javascript okay so it is the primary language for web development used for creating interactive and dynamic web pages java used for backend web applications android development and enterprise applications python commonly used for backend web development data science and automations c++ mainly used for system programming game development and performance critical applications which programming language is used for developing android applications tell me which programming language is used for developing android applications this is swift this is kotlin this is java or both b and c ki hobo na both amra kon hobo na kotlin and kon hobo na java okay so java was primarily language for android development but kotlin was officially adopted as the preferred language by google in 2017 okay so both kotlin and java haba amara kona na as a high level languages primary languages okay next python was developed by कहितली मन रखिबो पाइथन कहा द्वारा डेवलप हेतिला जेम्स गॉसलिंग डेनिस रिचे के करथिले ना सी सो नेक्स्ट ऑड वन आउट कर देलो जेम्स गॉसलिंग गुइडो वान रोसम और केन थॉमसन तो नहीं ऑड वन आउट कर दियो सो के हबो दिस इज रोसम सो गुइडो रोसम करथिले कोन ना पाइथन ही डेवलप्ड पाइथन इन द लेट 1980s and officially released it in 1991 as a high level languages okay so James Gosling creator of the java programming language Dennis Ritchie C pai and Ken Thomas he co-developed Unix and played a key role in the development of the B programming language so what type of programming language is HTML HTML is a what type of markup scripting assembly language or high level language this is what this is a markup language that hypertext markup language मन रखो तार फुल फॉर्म रु ही तमे जानि परिबो दिस इज अ काइंड ऑफ व्हाट ना मार्कअप लैंग्वेज एंड हाइपरटेक्स्ट तार फुल फॉर्म मन रखो एग्जाम रे HTTP HTML कॉमन क्वेश्चन आसी जाउची फुल फॉर्म ओके
So not a programming language but a markup language used to structure web pages and content. Scripting languages like JavaScript and Python fall into the category used for automating tasks and enhancing functionality. Assembly language, a low level language that is closely related to machine code used for hardware specific programming. High level languages like Python, Java and C++ are high level languages designed for general purpose programming with human readiness. Next, which of the following is not a programming language? ए भितर कोटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नुह जावा पाइथन सी प्लस प्लस these are गोटे कैटेगोरी रो सो रही जाउची कि HTML लेट्स सी कोटा होची ना HTML because this is a markup language not a programming language. Okay, next देखिबा जावा is developed by which company? जावा कहा द्वारा डेवलप होइथिला माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सन माइक्रोसिस्टम और गूगल. जावा is developed by what? ना सन माइक्रोसिस्टम. ओके, जावा इज डेवलप्ड बाय मन रख सन रु आसला कोन सन रो गोटे अलगा गोटे थाए ना जो ज्वालामुखी टाइप रो. ओके, तो सन रु ही हमर कोन ज्वालामुखी बाहरे एंड सन माइक्रोस्कोप रु जावा बाहरु जी जे फॉर ज्वालामुखी जे फॉर जावा ए टाइप रो मन रख. ओके, वाज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम्स इन 1995. ओके, बाय जेम्स गॉसलिंग. Then Microsoft developed programming language like C, hashtag and .NET. Framework what? Not Java. Apple created Swift and Objective-C for Mac OS. Google uses Java for Android development. What does SQL stand for? What is SQL? This is simple query language, structured query language, system query language or server query language. This is what? Now structured query language होची SQL. मन रख तो आम गोटे क्यू रे सपोज एसक्यू अच्छी ना एसक्यूएल सो क्यू रे गोटे केमिति छिड़ा हुए गोटे स्ट्रक्चर्ड वे रे आम क्यू रे छिड़ा हुए ना केमिति अंका बंका हेकी लाइन लगे थाए गोटे सीधा क्यू रे छिड़ा पे गोटे स्ट्रक्चर्ड मैनर रे आम छिड़ा हेबाकू पड़े. सो एमिति मन रख एसक्यूएल स्टैंड बाय स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ओके, इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग रिलेशनल डेटाबेस. नेक्स्ट, which programming language is used in artificial intelligence? So AI रे हमर को programming language को यूज करूछे is used in artificial intelligence. This is C++, Prolog, COBOL or HTML. What is that? That is what? ना हमर Prolog. So Prolog होची कौन ना प्रोग्रामिंग इन लॉजिक तार फुल फॉर्म भी मन रख एग्जाम रे पड़े. इज वन ऑफ द प्राइमरी लैंग्वेज यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशली फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट सिस्टम. C++ थ्रू C++ इज यूज्ड इन AI डेवलपमेंट. C++ कोथि पई ना यूज हुए AI डेवलपमेंट पई. इट इज नॉट अ प्राइमरी AI लैंग्वेज. ओके, प्रोलॉग होची कोन ना गोटे प्राइमरी AI लैंग्वेज. COBOL HTML तो हमर कोन होची ना हाइपर मार्कअप लैंग्वेज. ओके, COBOL इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इज COBOL. ओके, नेक्स्ट, which programming language is commonly used in data science? Which programming language is commonly used in data science? This is Java, Python, PHP or C hashtag. Ki haba? Now this is what? Python. Python is the most commonly used programming language in data science due to its vast ecosystem of libraries such as NumPy, Pandas, Matplotlib and and the scikit-learn and the TensorFlow. So एवढा इते इंपोर्टेंट नहीं मन रखिबा बट नमपाई टा को एंड पेंडास को खास करके एग्जाम रे पेंडास विषय रे पचारे एंड नमपाई गोटे थरो ही पचारथिला. सो पेंडास टा मन रख काहा तरे ना पाइथन. Okay, Java is widely used in enterprise applications and big data processing. PHP is mainly used for web development. C hashtag is primarily used for software development. Which of the following is an object-oriented programming language? Which of the following is an object-oriented programming language? C, assembly, Java or COBOL? Tell me. What? C, assembly, Java, COBOL. Object-oriented programming language. Ki haba? Now this is what? Java. Java hi hochi gote object-oriented programming language. Rest C, assembly, COBOL are not. मन रखि परिबो एमिति. Next.
What does PHP stand for? PHP stand for what? Personal home page, hypertext processor, professional home page, or hypertext processing. This is what? Na amar hoji hypertext processor. Eta man rakhibo PHP. तार देखो PHP रु कौन P रु स्टार्ट हेबा कथा किंतु एटा P रु ही स्टार्ट होनी एटा H रु स्टार्ट होची देन हमर कौन P रे सरुची हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर सो एमिति मन रखिबो एटा टिके कौन आबुल ताबुल हे के अछि सो PHP ओरिजिनली स्टूड फॉर कौन पर्सनल होम पेज स्टार्टिंग रे से कौन थिला ना पर्सनल होम पेज रे ही स्टैंड बाय करूथिला बट इट लेटर बिकम ए रिकर्सिव एक्रोनॉमी फॉर PHP हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर ओके Next, which of the following is a dynamically typed language? Dynamically typed language kouta C++, Java, Python or C? This is what? The Python hochi is a dynamically typed language, meaning the variable types are determined at runtime and you do not need to declare them explicitly. C++ and Java are कौन ना statistically typed एमिति भी exam पढ़ी पारे जदि dynamically पढ़ी पारुची then statistically भी पढ़ी पारे so statically कौन होची ना this is statically typed होची कौन C++ and Java. Okay, C is also statically. So C++, Java, C++, Java are कौन ना हमारा statically, whereas the Python is only dynamically. Next देखिबा, which is not a compiled language. Which is not a compiled language? Is this the Java, Python, C++ or C? So compiled कोडा नुह. This is what ना Python. कारण पाइथन गोटे कौन होची एबे ही कहिथिली पाइथन इज एन इंटरप्रेट लैंग्वेज एंड सेटा कौन हमर गोटे कंपाइल्ड लैंग्वेज नुह मीनिंग दैट इज एक्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन यूजिंग एन इंटरप्रेटर इंस्टेड ऑफ बीइंग फुल्ली कंपाइल्ड बिफोर एग्जीक्यूशन सो एग्जीक्यूशन पूर्वरु लाइन बाय लाइन बाय द इंटरप्रेटर एटा यूज हुए okay and C and Java are compiled language. C and C++ are compiled directly into machine code. Java is the first compiled into bytecode and then executed by the JVM. Okay. Next, what is the full form of JSON? What is the full form of JSON? This is Java syntax object notation, JavaScript object notation, Java serialized object naming, Java standard object notation. कौन हबा ना JavaScript object notation. JSON JavaScript object notation. Java हमर कौन गोटे object oriented. Okay, so object रू मन रखिबो Java होजी गोटे कौन ना JavaScript होजी कौन ना object notation. मन रहिबो. Next, which language is mainly used for ethical hacking? Ethical hacking पे को language रा में help नहीं है. Java, PHP, Python और Swift. What is that? Now this is Python. Python is widely used in ethical hacking due to its powerful libraries for network security like and automation and penetrating the testing. Okay. Java not a primarily choice for hacking. PHP used for web development. Swift designed for iOS. Which of the following is not a database language? Which of the following is not a database language? SQL, NoSQL, Java or PLSQL? कोडा हबो this is Java. Java is general purpose programming language not specially designed for the database management. Java is what is a programming language and SQL देखो Java, C++, Python, C एगुडा सब गोटे कैटेगरी रो and ए सब गोटे कैटेगरी रो तो ऑड एंड आउट कर दबो SQL, NoSQL and जो थ्री SQL मेंशन अछि दे से माने गोटे कैटेगरी रो हेथिबे. Java is a different category रो. Okay. Next, which language is primarily used in blockchain development? Blockchain development रे को language यूज हुए Solidity, Java, Python और Swift. कौन यूज हुए ना Solidity यूज हुए. जेमिति कहली कोन Java, Python ए सब कोन गोटे कैटेगरी रो जोटा कि Java is used in blockchain but not primarily. Python is used in blockchain development but it is also not the primary language. Swift is mainly used for iOS. Solidity is the primary language used for writing smart contracts especially on Ethereum blockchain. Mone rahiba what is this is Solidity. Okay, so let's see what is the next question. Okay, who developed JavaScript?
Tell me, who developed JavaScript? The 10 is Riche, Brendan Each, James Gosling, Guido van Rossum. JavaScript के करिथिले? Java is दीटा different. आमर रिचे कौन करथिले ना सी करिथिले, but आमर क्वेश्चन एठी कौन अछि? This is JavaScript. So who developed JavaScript? Let's see. This is कौन ना Brendan Each. ओके सो ब्रेंडन ईच हमर कौन करथिले ना डेवलप करथिले जावास्क्रिप्ट. केमिति रिलेट करिवे स्क्रिप्ट सहित ईच स्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय ब्रेंडन. एमिति मन रखिबो ईच स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट. ओके ईच रो मन रखिबो कोन ब्रेंडन ईच. ओके केबे हेतिला ना दिस इज ऑन 1995. ओके and Riche जेमती कहली डेवलप्ड कौन करथिले ना सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके एंड जेम्स गोसलिंग इज द क्रिएटर ऑफ जावा. जावा रो की करथिले ना जेम्स गोसलिंग. मन रहिबो जावास्क्रिप्ट ईच स्क्रिप्ट सहित ईच को रिलेट करिबो, फिर इज जेम्स सहित जावा को रिलेट करिबो. जेम्स फॉर जावा, स्क्रिप्ट फॉर ईच. ओके सो गुइडो वैन रॉसम कौन करथिले ना पाइथन. ओके नेक्स्ट देखिबा, which of the following is a functional programming language? Tell me, which of the following is a functional programming language? This is Java, Haskell, C++ or Pascal. Which of the following is a functional programming language? Java, Haskell, C++ or Pascal. Let's see. This is what? Namara Haskell. Haskell is a purely functional programming language that emphasizes immutability, higher order functions and lazy evaluations. Whereas Java is a what? Na primary language. Okay, and object oriented programming. Question एमिति भी आसे, which language is a object oriented programming language? That is what? Na Java. Okay, and object oriented programming language also कौन ना C++ भी. Okay, C++ कौन? That's also an object oriented programming language. And Pascal, a structured programming language mainly used for what? Na teaching and early software development. Teaching purpose रे या फिर आमे किछ न्यूली सॉफ्टवेयर डेवलप करूछे ता पई आमे कोडे यूज करूछे ना यूज करूछे पास्कल. मने रहिबो. नेक्स्ट देखिबा, which of the following is an interpreted language? Which of the following is an interpreted language? This is C, Java, Python or C++. Let's see. This is what? Na Python. So Python कौन होची हमारा ना is a kind of what? Interpreted language. Okay. So why? Because its code is executable, जोड़ा कि execute करी हबो केमिति ना line by line using an interpreter. So इटा केमिति यूज हुए ना execute कला बेले हमारा line by line मेथड रे आसे. Whereas C होची कोना ना ये compiled language. Okay, that required कोना गोटे compiler रा required हुए while using C. Okay, कोथि पई ना जेतेबेले हमें translate code करूछे into a machine language. Java uses a hybrid approach. Okay, Java source code is compiled into byte code. एटा भी हमर कोन compiler यूज होची जोथरे कि कोन ना byte code को convert करिया पई. Okay, then C++, this is also compiled language. That means एठी भी हमर कोन compiler requirement होची. Whereas Python is an interpreted language जोथरे execute करिया पई code को line by line method रे यूज करा जाउची. Okay, using an interpreter. मने रहिबो. Thank you. Next देखिबा, which programming language is used to build iOS applications? Tell me, which programming language is used to build iOS applications? कोटा हबा? Java, Swift, Kotlin या Python? Which programming language is used to build iOS applications? Let's see. Operating system कोटा करूछे हमर ना this is what? Swift. Why? The Swift is the primary programming language. देखो primary programming language question ने पचारि which from the following is a primary programming language? Option ने थाई पारे Swift थिबो, Java थिबो, C++ थिबो ता भितर तुमको चूज करिया को मे बी क्वेश्चन आसी पारे. So you have to कोन very clear about the primary language. कोटा हमर कोन होची
Okay, देखिया को पड़िबा. So it was created by Apple, introduced in 2014. Swift is introduced by which company? This is Apple. Okay, केबे ना 2014 रे. As a successor to कोना ना Objective C. कहा को succeed करी छी ना Objective C को. It is optimized for performance, safety and all. Okay. So Java, what is Java? Like Java mostly used for Android development, not operating system. What is Kotlin? The preferred language for Android app development. What is Python? This is not commonly used for what? Used for operating system app. So what will be the right answer? This is Swift. Okay. Next देखिबा. What is the purpose of COBOL? Tell me, what is the purpose of COBOL? COBOL is a kind of web development. कोथि पे यूज हुए ना वेब डेवलपमेंट पे यूज हुए, बिजनेस एप्लीकेशंस पे यूज हुए, गेम डेवलपमेंट पे यूज हुए या फिर एआई डेवलपमेंट पे यूज हुए. COBOL कोथि पे ना दिस इज व्हाट हमारा बिजनेस डेवलपमेंट पे यूज हुए. कॉमनली कोथि ना बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होची COBOL. फुल फॉर्म रही जानि परथुबो कोन कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. This is COBOL. So is a programming language specially designed for what? Now business, finance and the administrative system. It is widely used in banking, insurance, government, agencies and enterprise systems where large scale data processing is required. COBOL has been in use since 1959. एटा कोन यूज होची. Okay, next देखिबा. Which language is known as the mother of all programming language? Tell me, which language is known as the mother of all programming language? कोटा हबो? The options are assembly, C, Lisp or Pascal. कोटा हबो? Obviously कोटा हबो हमर assembly language is often considered the mother of all programming language because it is one of the earliest form of low level programming. So first amara gote kon earliest language jota amara like develop हेइथिला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेटा कोन थिला हमर असेंबली लैंग्वेज. सो जोटा फर्स्ट हेइथिबो ताकू ही हम भाबिबे ना सबुटू मेन लैंग्वेज सेटा बोली. सो फर्स्ट एंड मेनली जोटा कि मदर ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा को जाय ना दिस इज असेंबली लैंग्वेज. एमिति मन रखिबो मदर जे कि सब जिंस असेंबल करके रखंती. दैट्स व्हाई असेंबली लैंग्वेज इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल ऑफ कोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. गॉट इट? So it provides a direct interface with a computer's hardware, making it foundational for understanding how computers execute instructions. Assembly was developed as a more readable alternative to what? Na machine code. मशीन कोड को जते बेले कोन बाइनरी सिस्टम मशीन कोड को जते बेले रीड करिया पई मोर एप्रोप्रिएटली हमें रीड करि पारुची थ्रू यूजिंग द असेंबली लैंग्वेज. मने रहिबो. Next, which of the following is used for backend web development? Tell me, which of the following is used for backend web development? This is what? JavaScript, PHP, CSS or HTML. Which of the following is used for backend web development? Let's see. What? Now this is the PHP. PHP is for what? Na hypertext processor. Okay. So is widely used for backend web development. It runs on a server and processor. User requests interacts with database and generates dynamic web pages. PHP is used in popular platform like what? WordPress, Facebook and Wikipedia. Wikipedia, Facebook and WordPress. The most importantly हमर कौन यूज होची ना PHP यूज होची जोड़ा कि hypertext processor. माने रहिबा. So JavaScript used mostly for front-end but with Node. Okay. CSS used for styling web pages. So kind of कौन कहि परिबा ना front end. Okay. CSS कोथि पई ना styling web pages रे हमर यूज होची कोन ना
CSS. HTML, a markup language for structuring web pages. So what is na HTML? जदि पचारिबो सब जो HTTP थिबो, HTML थिबो, JavaScript थिबो या फिर C++ थिबो. Question आसीबो which is a markup language. So ML रो मार्क करिबो. M and L is stand for what? Na markup language. Okay, next. What is TypeScript mainly used for? Tell me what is TypeScript mainly used for? This is what? Na server side programming, web development, game development or AI programming. But what is TypeScript mainly used for? So TypeScript ame कोथि use करूछे? Let's see. This is for what? ना हमर web development पे use करूछे. Okay, so TypeScript is a super fast of JavaScript. So mainly JavaScript ro upper version जोटा कि very super fast rather than JavaScript that adds static typing and other features to make web development more scalable and maintainable. That's why आमे कोन JavaScript बदल रे TypeScript को use करूचे ताकू replace करिकी. Okay, so what is server side programming? While TypeScript can be used with Node.js for server side development. Okay, and game development, not AI programming. AI development is mostly done using what? Python, R or Julia. What is R? Amara next question अछि देखिबा. Which programming language is known for statistical computing? कोउथि पई? Now known for the statistical computing. Let's see. This is what? The R. So R is a programming language specially designed for the statistical computing and data analysis. So statistically कोउटा ना हमर RR. Okay, R मन रखिबो RR movie. Okay, सेथिरे कोन गोटे statistically record break करिथिला. So ताकू मन रखी कि R को relate करिबो कहा सहित ना this is a kind of statistical computing. Okay, it is widely used in data science, machine learning and कोन na bioinformatics and financial modeling. So Python is a popular for data science. Java primarily used for enterprises applications and the mobile development. C hashtag mostly used for game development. Next देखिबा. What does XML stand for? Guys, XML कोन कोथि पई stand करूची? Extra markup language, extensive markup language, extensible markup language, external markup language. What is XML stand for what? Now this is extensible markup language. XML. Okay, ML हमर जानि छ markup language. So X लागि गेले कोन? Extensible markup language. मन रहिबो त extensible को तमे कोन करी कि मन रखिबो, that's up to you, but confuse हबनी, right? कोन full form ही मन रख. Is a markup language used to store and transport data in structured format. Structured format रे हमर कोथि रे ना XML रे हमर कोन data store हे कि रुहे. Okay, next. Which of the following is an input device? Which of the following is an input device? This is what? Monitor, keyboard, printer or speaker. Tell me which of the following is an input device. What? That monitor, keyboard, printer or speaker. Let's see. What? This is the keyboard. An input device is any hardware component used to enter data and commands into a computer. Keyboard is an input device used to type text, enter commands and control operations. That's why this is an input device. Monitor is an output device, printer output device, speaker is the output device. Next, which of the following is an output device? Again, input gala, output. कोडा mouse अच्छी, scanner अच्छी, monitor अच्छी, joystick अच्छी. कोडा हबो जानि दउथुबो कोडा. This is monitor. Monitor is कोन separate हेगी अच्छी, so इटा कोन output device कहउचे. An output device is any hardware components that receives and displays or presents data from the computer to the computer is input, from the computer is output. Complete. Monitor is an output device that visually displays images, videos and text generated by the computer. White mouse is the input, scanner is the input, joystick is the input. Next. A scanner is used to what? A scanner is used to for कोथि पय हमें स्कैनर यूज करूचे ना प्रिंट डॉक्यूमेंट, कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू डिजिटल फॉर्मेट, डिस्प्ले इमेजेस ऑन स्क्रीन और रिकॉर्ड साउंड.
record sound तो जमा नु ऑड वन आउट कर नेक्स्ट देख कोटा होची ना दिस इज कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू डिजिटल फॉर्मेट व्हाट now a scanner is an input device that used to convert physical copy physical documents image or text into a digital format that can be stored edited or shared electronically print documents a printer is used for what printing कोथि पई प्रिंट डॉक्यूमेंट्स कोथि पई यूज हुए ना प्रिंटर यूज हुए प्रिंट डॉक्यूमेंट्स पई डिस्प्ले इमेज ऑन द स्क्रीन कोथि ना मॉनिटर रा काम एंड रिकॉर्डिंग साउंड माइक्रोफोन रा काम ओके नेक्स्ट देखिबा द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए प्रिंटर इज टू प्रिंटर कोन प्रिंटिंग करिबा ना एक्सेप्ट यूजर input display information convert digital document into hard copy or store data so what this is कौन digital documents into hard copy को हमारा convert करूँ किए ना printer मन पड़ला so a printer is an output device that takes digital documents digital documents form a computer and prints them on a paper producing a hard copy okay printer रा काम किछि भी हमें information देतबे input करूचे then हमको से गोटे paper रे hard copy format रे देउची so printer कोन ना hard copy दोउची from the digital documents so accept user input कोटा input devices like keyboard mouse and scanner these are कोन ना accept user input display information monitor and screens store data कोडा हमरो HDD रहिला SSD रहिला and USB drives these are कोन storing data purpose रे यूज हुए which of the following is an example of a pointing device which of the following is an example of a pointing device tell me the keyboard mouse printer or speaker which of the following is an example of pointing device pointing करूछे हमें कोथिरे obviously कोथिरे ना हमरा mouse रे करूछे mousing is a pointing device that allows users to interact with a computer by moving the cursor next keyboard is an input device printer is an output device speaker is an output device next which device is used to input handwritten signatures into a computer which device is used to input handwritten signature into computer कोथिरे हम यूज करूछे light pen scanner joystick barcode reader कोथिरे these are very important जोडा भी हमें भी डिस्कस करूछे up to the like कोन 300 पर्यंत जेती क्वेश्चन रहला सेरा बहुत ही इंपोर्टेंट एग्जाम रे मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन तो टिके भी देखि लाइक मिस्टेक करिवेनी टिके कोन माइंड डाइवर्ट करिकी वीडियो देखिबेनी जदी भी देखुचंदी 2x स्पीड रे भी देखंतु बट टिके कंसंट्रेटली देखंतु सो कोडा हमर यूज करछि सिग्नेचर को नेबा लागि सो इट इज लाइट पेन a light pen is a pointing device that allows user to draw or write directly on a computer screen. It is commonly used for what? Now inputting handwritten signature and digital drawings into a computer. Okay. So a scanner converts printed or handwritten documents into a digital format. Digital format रे हमको दबो joystick. A joystick is a gaming input device used for controlling movement in video games. Joystick रे काम मन रखो कोन हमें जते बेले कोनोसी गेम खेलुचे हमर मूवमेंट को कंट्रोल करिया पे हम कोटा रे हेल्प करूचे ना joystick रे हेल्प करूचे. What is the barcode reader? A barcode reader scans barcodes and retrieves information but is not used for handwriting note. Okay. Which of the following is an example of biometric input device? Tell me, which of the following is an example of a biometric input device? This is what? Webcam, fingerprint scanner, plotter or printer. देखो biometric कथा आसला माने कोन आमा मुंडा रे गोटे आसुचे आइदर आमे कोन पिन देगी रखुचे लॉक पकोचे नहले फिंगरप्रिंट दोचे सो कोटा हिथवा हमर राइट आंसर दिस इज फिंगरप्रिंट स्कैनर. A fingerprint scanner is a biometric input device that captures and analyzes a person's fingerprint to authenticate identity. It is widely used in security systems, smartphones, and access control systems. Webcam captures images and videos. Plotter, an output device used for printing large-scale images and designs. Printer, an output device that prints digital documents onto paper. A touchpad is mostly found in what? Touchpad हमारा mostly कोठी देखियो पड़े. So this is a
touchpad is mostly found in where? This is desktop computers, laptops, smartwatches or printers. Tell me, touchpad कोठे हमें देखा को मिले? Obviously कोथरे touchpad रे ही देखा को मिले, जोड़ा sorry touchpad कोठे देखा को मिले ना laptop रे ही देखा को मिले, right? So a touchpad also called trackpad. So touchpad and trackpad are the same thing. Okay, जो गोटे क्रॉसर थाए. So it is a built-in pointing device found mostly in laptops. It allows users to control the cursor by sliding their finger across its surface. मन रहिबो desktop computers, desktop typically use a mouse. Smartwatches uses touch screen. Printers रा कोन हमर त किछ नाही ना touchpad. Next. What type of device is a microphone? Tell me, what type of device is a microphone? This is input device, output device, storage device or processing device. ए दिटा तो हबनी केबे, right? So odd and out कोन हबो? This is a input device. So a microphone is an input device that captures sound waves and converts them into digital signal. सो माइक्रोफोन में कौन हुए ना साउंड वेव को कैप्चर करिकी ताकू अगेन हमको डिजिटल सिग्नल कौन रे कन्वर्ट करिकी हमको पठाए प्रोसेसिंग बाय ए कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर व्हाट वॉइस रिकॉर्डिंग कम्युनिकेशन एंड वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम output device displays or plays information but a microphone captures sound so output device monitor or displays को हमें कहि परिबा storage device जोडा हमर स्टोर करिक रखे जेमति कि जो HDD हैला SSD हैला USBs हैला ओके processing device कोन CPU या फिर GPU next what is the main function of a speaker in a computer system Tell me what is the main function of a speaker in a computer system? Input text, output sound, process data, store information. जे मनो सेडा कोन राइट आंसर क्लिक करि दबो. ओके नेक्स्ट देखिबा. A barcode reader is used to barcode reader आमे कोथि पे यूज करूचे it print barcode user like reader अछि ना obviously read करिया पई थोड़ी ना कोन print करिया पई यूज करूचे कि ना read करिया पई सो कोन print barcodes ना ऑड एंड आउट हे जाउची So read barcodes and convert them into digital data. ठीक ठाक लागुच right? So store products details or display information. What? Na read करूची barcodes and convert them into the digital data. Next. Which of the following devices is both an input and an output device? Which of the following devices is both an input and an output device? Tell me, keyboard, touch screen, printer or microphone. Which of the following device is both an input and an output device? This is what? Both input and output device पे हमें कोटा यूज करि परिबा. Let's see this is what? ना touch screen को. Right, a touch screen is both an input device and also an output device because it displays virtual output like a monitor and allows user to interact with the screen by touching it like an input device. Okay, touch करी कौन input है पारुची and output भी है पारुची. Okay, so it is commonly found in smartphones, tablets and smart laptops. Keyboard only an input device, printer output device, microphone input device. So both input and output जदि पचारला कोटा हबो ना touch screen. मन पकेकी आराम से लिखिबो. So the function of a webcam is to webcam रे use कोन print document, display images, capture and transmit video, store data. जेते बेले कैमरा कथा आसिला webcam means कोन web camera ही. So कैमरा कथा रे कोन print the documents जमा करी ही बनी. So store the data करबनी display image like camera सहित relate कोन either image नहले capture करबो कोन video image नहले video ए दिटा भितर गोटे let's see this is what capture करबो and transmit करबो का through the capture and transmit to video. So webcam is an input device. Webcam कोन गोटे input device बोली मन रखो that captures live video and transmit it to a computer or the internet for video calls, streaming and recording purpose रे. Okay, print document कार काम printer, display image, monitor, store data, hard drives रा. Next, which output device is used to produce large scale image or diagrams? Tell me, which output device is used to produce large scale image or diagrams? Is that printer, monitor,
फ्लटर और स्पीकर आमर कौन पचार ना यूज टू प्रोड्यूस लार्ज स्केल इमेज और डायग्राम देखो कोटा हो पार आमर फ्लटर एंड स्पीकर को तो ऑड वन आउट कर दियो प्रिंटर एंड मॉनिटर प्रिंटर को भी ऑड वन आउट कर दियो तो रहुची कोटा देखिबे कि आंसर यस सो व्हाट इज द आंसर ना दिस इज द प्लॉटर हाउ प्लॉटर हे गला केमती बिकॉज ए प्लॉटर इज ए स्पेशलाइज्ड आउटपुट डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस लार्ज स्केल इमेज सो प्लॉटर टा कोथि पे हम यूज करा जाए प्लॉट रू मन रखिबा प्लॉट कोन हम कहचे मतलब प्लॉटिंग करूचे तो गोटे बड़ प्लॉट को छोट 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 करके हम प्लॉटिंग करूचे सो प्लॉटर रू मन रखिबो का बड़ प्लॉट सो सेइथरु कोन मन रखिबो ना दिस इज अ व्हाट स्पेशलाइज्ड आउटपुट डिवाइस जोटा हमर कोन करे ना लार्ज स्केल इमेज क्रिएट करे प्रोड्यूस करे डायग्राम्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग सो प्लॉट ऊपर ही डायग्राम करके हम कोन प्लॉटिंग करूचे सेइथरु मन रखिबो कोथिरे ना प्लॉटर रे लार्ज स्केल इमेज हमर रिप्रोड्यूस हुए डायग्राम्स हमें करूचे एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग भी हमें करूचे ठीक अछि जोटा कॉमनली कोथरे यूज हुए ना आर्किटेक्चर माने यूज करूछंती इंजीनियर्स माने एंड जो माने कोन कैड एप्लीकेशंस यूज करूछंती से माने भी करूछंती ओके सो प्रिंटर रेगुलर प्रिंटर मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस स्पीकर ए स्पीकर ओके सो व्हाट इज जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड फॉर कहितली जॉयस्टिक कोथि पे यूज होची ना टाइपिंग टेक्स्ट ना गेमिंग एंड साइमल्टेनियस ओके एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स और लिसनिंग टू म्यूजिक तो नहीं एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स भी नहीं सो टाइपिंग टेक्स्ट गेमिंग दीटा ऑड वन आउट कर देली कोटा हबो ना दिस इज गेमिंग पर्पस रे आमे यूज करूछे सिमुलेशंस ओके सो गेमिंग एंड सिमुलेशंस कौन रोची ना जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस मेनली यूज्ड फॉर व्हाट ना गेमिंग एंड सिमुलेशंस अलाउइंग यूजर टू कंट्रोल जिते बेले कौन मुविंग किसी भी गेम खेलुचे आमर गोटे कंट्रोल बार को आम हाथ में रखापी मूव करुचे थ्रू व्हाट ना जॉयस्टिक मन रहिबो टाइपिंग टेक्स्ट कीबोर्ड्स आर यूज्ड फॉर टाइपिंग प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिंटर्स हैंडल डॉक्यूमेंट्स लिसनिंग टू म्यूजिक तो काम हो स्पीकर या फिर हेडफोन्स नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर गेमिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर गेमिंग कोटा जॉयस्टिक तो देखी ही हमें देइछ ऑलरेडी सो गेमिंग पर्पस रे कोटा ना जॉयस्टिक ही यूज हबो नेक्स्ट देखिबा which input device is used to read documents and convert them into digital format document को read करिवो then digital format रे किए printer तो नुहा monitor नुहा plotter नुहा सो रहिला किए let's see this is what हमरो scanner is an input device used to read physical documents image or barcodes and convert them into digital format next देखिबा which of the following is not an input device which is not an input device mouse monitor keyboard or barcode reader so कोटा हबनी जानि ही दोथबो so कोटा this is a monitor is an output device बाकी सब कोन input device mouse input keyboard input and the barcode reader obviously input device okay so the primary purpose of an OCR कौन ना ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सो प्राइमरी पर्पस ऑफ एन OCR कहीं डेवलप है तार कौन यूज रोचे से डिवाइस रो प्रिंट टेक्स्ट recognize and convert printed text into digital format display images or process sound what will be this is recognize and convert the printed text into what into a digital format kahar kam na OCR because it is optical character recognition R for recognition and option jodi asibo kaha ku na recognize karibo then convert karibo gote text ku into a digital format okay print text printers are used for printing not recognizing text display image monitors display images but OCR converts text process sound microphones okay a braille reader is an output device designed for braille reader रे को output device हमारा designed है कि input है इसी visually impaired users hearing impaired users gaming purpose or graphic so कौन braille is related to what visually impaired okay hearing impaired पाई कौन ना hearing aids जो माने जोड़ा भी हमारा बाहरी ची gaming purpose पाई joystick okay and graphic design पे monitor stylus pens and the drawing tablets next the primary purpose of a track wall is
So what is trackball and what is the primary use of that? So printing documents, navigator and the cursor, displaying image or storing files. Next, let's see. So what? Now this is navigating and navigating the cursor. So आमे जते बेले माउस को बुलाउचे cursor को डायरेक्शन को जाउची, माउस जो पट को आमे बुलाउचे cursor से पट को जाउची. So एटा कहार काम? ना this is because of the trackball is an because trackball is an input device. So trackball रहिबा फल रे कोन अछि ना आमे ताको navigate करि पारुचे ता डायरेक्शन को पट को बुलेले को पट को जिवो, right? So it is used to control the cursor by rotating a stationary ball. अच्छी ना मोर तले एमदी मूव लागुची. दिस इज व्हाट ए जो बॉलटा अछि. दिस इज द ट्रैक बॉल. ओके नेक्स्ट. What type of input device is a touch screen? So touch screen गोटे को प्रकार device? This is a mechanical input device, manual input device, direct input device or none of the above. कोटा हबो ना this is what ना हमर direct input device. Why? Because touchscreen is a device that can use as an input device or as also an output device. Okay. So touchscreen is a direct input device because users interact directly with the display by touching icons, buttons or text. Okay. So mechanical input device कोड़ा हबो ना keyboards and mouse हबो हमर कोन ना mechanical input device. And manual input device कोटा हबो ना हमरा manual input device कोटा while touch screen requires touch that manual कोन input device एमिति किछ नाही because हमर कोन सब जिंस ऑटोमेटिक ही रहउची. ओके manually किछ रहउची कि रहउनी. So none of the above is not. Let's see. What does a graphics tablet help with? What does a graphics tablet help with? This is creating and editing images using stylus, printing documents, producing sound output or storing files. What does a graphics tablet help with? What does a graphics tablet help with? This is what? Graphic tablets amar help करे कोथिरे ना this is creating and editing image using a stylus. ओके द ग्राफिक टैबलेट ग्राफिक रु मन रखिबे कोन से निहाती कोन एडिटिंग वगैरह करूथवा ग्राफिक कार्ड रे हम यूज करूचे. सो ए ग्राफिक टैबलेट इज एन इनपुट डिवाइस. कोन दिस इज एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउज यूजर्स टू ड्रॉ, sketch and edit images digitally using a stylus, making it popular among graphic designers, illustrator and कोन animators. Printing documents, printers handle documents printing, not graphic tablets. Producing sound, speaker द्वारा, storing files, hard disk. Okay. So which of the following is an input device used for computer aided design? So CAD is what? CAD is start for computer aided design. So को device को हमें use करूचे, को input device को use करूचे CAD फाई trackball, keyboard, speaker or printer. This is what? ना हमारा trackball को use करूचे. Okay. So trackball is an input device that used commonly for what? Na computer aided like CAD को because it provides a precise cursor control. Okay. गोटे smooth control हमको दोची use करिबा लगी. हम एमती बुलेले भी कोना ता भितरे जो राउंड एमती बुलुची या फिर लेफ्ट राइट जाउची because of presence of the what? ना हमारा trackball inside the mouse. Okay. Next देखिबा. Which of the following device is commonly used in ATMs for user authentication? Tell me which of the following device is commonly used where in ATMs for user authentication? User authentication पे कोटा joystick, touchpad, biometric scanner or monitor. कोटा हबो ना this is what? Biometric scanner. Otherwise केही भी आपन अकाउंट रासी किछि भी पैसा उठै कि नै परिबो. बायोमेट्रिक नथिले आपन पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पाखु भी जाई परिबो. सो एटीएम इज ए सिक्योर प्लेस. सेथरे हमर कोन निहाती बायोमेट्रिक लागि थिबो. सो आखि बंद करी कि जोठी बायोमेट्रिक ऑप्शन थिबो ताको चूज करिवो. So a biometric scanner is commonly used in ATMs for what? For user authentication by scanning fingerprints or other biometrics data to enhance security. अलगा कोन biometric method भी अछि जोथरे कि से माने securely data रखंती. Joystick used for gaming, touchpad used for cursor control on laptops, monitor and output device. So which input device allows visually impaired users to enter data? कोटा
visually impaired कथा आसिला माने कोन obviously braille ही हेइथिबो so braille keyboard got it next so the purpose of a KVM switch is to the purpose of a KVM switch is to what KVM switch रो purpose कोन देखंतु what is control multiple computers using a single keyboard monitor and mouse store files improve sound quality or enhance printing efficiently कोटा हबो ना control multiple computers use a single keyboard monitor and mouse a KVM switch KVM is कोन K for keyboard V for video M for mouse okay KVM switch stand for keyboard video and mouse switch allows use to control multiple computers using a single keyboard monitor and mouse making it useful in server rooms and multi system setups next देखिबा which of the following is not an output device कोटा गोटे output device नुह because बहुत नंबर कोन input device output device एथि पय क्वेश्चन आसुची because exam रे mostly एथरो गोटे ना गोटे क्वेश्चन लिखि के रख डेट एंड टाइम न पढ़ले मो ना चेंज करियो सीरियसली इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस गोटे ना गोटे क्वेश्चन पढुचे ओके सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस प्रिंटर मॉनिटर स्कैनर और स्पीकर कोटा आउटपुट डिवाइस गोटे नुह लेट्स सी दिस इज व्हाट ना हमर कोन स्कैनर because scanner is an input device that's why this is not an output device right so scanner is an input device printer output monitor displays visual output speaker भी output so the main function of a projector is to projector main function कौन रहुची display content on large screen print documents store files input data into a computer कोटा हबो odd one out ही करि दियो so रहिला कोटा ना हमर large screen रे हमर कोन content display करिवो काम होची projector समस्त जानि छथि एटा right next a voice recognition system is primarily used for voice recognition system हमें primarily कोथि पय यूज करू छे tell me कोथि पय ना displaying images storing data converting spoken words into text or printing documents a voice recognition system is primarily used for what कोथि पय voice recognition system यूज होउची because converting spoken words into text जो सपोज ब्रेली वर्ड्स भी जो माने यूज करूचंती सपोज किछि देखा जाउनी सपोज हमर के भी कोन eyesight problem अच्छी और एनीथिंग से माने कोन कहि कि जो माने भी सपोज दे डोंट नो हाउ टू यूज द इंग्लिश और हाउ टू यूज द कीबोर्ड एंड ऑल से माने कोन YouTube होला गूगल होला से माने सर्च करूचंती कहि कि ना ठीक अछि ओडिया रे भी कहि कि सर्च करि पारुचंती सो एटा कोन करूछि ना हम जे वर्ड्स को कहूचे ताकू कन्वर्ट करूछि कोथरे टेक्स्ट रे देन हमकु सर्च करि कि दोछि सो इट इज व्हाट ना कन्वर्टिंग स्पोकन वर्ड्स इनटू टेक्स्ट नेक्स्ट देखिबा what is the default file extension or for MS Word 2010 and later what is the default file extension it is कोन MS Word पय .doc .docs .txt .pdf obviously कोटा हिथिबो ना this is .docs okay 2010 onwards हमर यूज होछ okay which shortcut key is used to save a document now tell me which shortcut key is used to save document देखंतु V is for pasting P is for printing or X is for what cutting so रहिला कि obviously control plus S okay कोन होची control P is for print control V is for paste control X is for cutting next the default font in MS Word 2016 default font जोटा MS Word जो माने यूज करूचंदी भी 2016 न से कहि परिबे कोटा टाइम्स न्यू रोमन अरियल कैलिब्री और द वदना कोटा हबना दिस इज व्हाट ना हमर कैलिब्री साइज जोटा केते साइज 11 होची डिफॉल्ट जो माने 2016 रो यूज करूचंदी ओके व्हाट दिस इज कैलिब्री माने रहिबो टाइम्स न्यू रोमन रो साइज केते होची ना डिफॉल्ट इन MS Word 2003 रेटा यूज होथुला ओके अरियल ए पॉपुलर sans serif font जोटा की यूज होउनी बट कोन नॉट द डिफॉल्ट ओके 2016 हमरा कोडा कैलिब्री माने रखो 2003 रे भी पढ़ी पारे बट मोस्ट like asked question is what about the calibri that 2016 रहिछ
So what is the function of control plus B? Control plus B shortcut key also very important for the exam perspectives. So control B is kona stand for what? Now underline text, bold text, italize text or save document. Let's see what is this. This is the control B is used for what? Na amar format kariba pai use हुए जोटा कि कौन bold text को कहा को ना bold text करिया pai control B is for bold text मन रहिबा underline करिया pai कौन ना control U underline U करिबा italize परी I save document the S आउ the maximum zoom percentage in MS Word is what? The maximum zoom percentage in MS Word रे केते रहउची ना this is what? 500%. Maximum zoom अपन MS Word रे केते करि परिबे up to 500%. Okay? 100% is the default view size. Okay? But maximum केते ना 500%. Okay? So, which menu contains the find and replace option? Tell me, which menu contains the find and replace option? Is that home, edit, view or insert? Koda, find and replace. This is what? The home. होम को जाइकी आमे किछि भी कोन फाइंड एंड रिप्लेस ही करि पारुचे सो एमएस वर्ड 2007 एंड लेटर जेति की भी एमएस वर्ड आमे यूज करूचे फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इज लोकेटेड अंडर द होम टैब इनसाइड द एडिटिंग ग्रुप okay it allows users to quickly search and specified words and replace them जो मानकर भी किछि भी डाउट आसुची से माने कोन लैपटॉप ऑन करा हमर कोन एमएस ऑफिस ऑन करके बसी जाओ पीपीटी हो वर्ड हो किछि भी डाउट होची संगे संगे चेक करा सो दैट कोन थ्योरी पटे पढा प्रैक्टिकल करा मन रहिछो okay so edit in our older version like ms word 2003 re view used for adjusting documents layout and insert used to add tables image shapes and other elements. What is the shortcut for printing a document? What is the shortcut for printing a document? This is what? Control plus P. The shortcut control P is used for what? Na printing document. Control F for कौन? Na finding text. Control S कौन होची? Na save data. Control M is to increase the left indent in MS Word. Left side indent को increase करिया पे कौन use हुए? Na control plus M. Which tab is used to insert a table? Tell me, which tab is used to insert a table? Home, insert, layout, review. Which table is used to insert a table? This is what? Insert table करिया पे कौन? Obviously, insert ही मारिया को पड़िबा ना. The insert tab is MS Word contains the table option. ठीक अछि? Home रे कौन करूची? ना contains text formatting and editing tools. Layout रे used for page setup, margins and the alignment, and review used for the spell check. What is the function of Control plus Z? Tell me, what is the function of Control plus Z? Is that undo last action, redo last action, or select all text? Select all text कौन हबा? Control A हबा. Copy text तो हबनी. तो कौन हबा हमारा? Now this is undo last action. Is what? Is Control Z. Okay, redo last action is Control Y. Select all Control A. Copy text Control C. The thesaurus कहि परिबा ताकू को माने भी पढुसंदी कोन ना thesaurus भी कहि परिबो. So this is what? Na tool is used for what? Finding synonyms and antonyms, checking spelling, counting words, creating tables. कोटा हबो? So this is for what? Now finding synonyms and antonyms. The thesaurus, the
Okay, so what's next? This is okay. The thesaurus tool is used for what? The thesaurus tool is used for what? This is finding synonyms and antonyms or checking spell like spelling checking पाई या फिर word counting पाई या फिर table creating पाई कोथि पाई? This is what? Number of finding synonyms and antonyms पाई. Let's see. What? Number of finding synonyms and antonyms use हुए कोटा ना thesaurus tool. In MS Word, help users find synonyms and antonyms for a selected word. Checking spell पाई कौन use हुए? Like spell check पाई कौन? Done using the spelling and grammar tool use हुए. Counting words पाई word count use हुए. Creating tables पाई कौन use हुए? ना table option जोटा कौन? Insert tab use हुए. ठीक है जी? Insert tab रो table option रे use हुए table count पाई. So the shortcut key for select all text in a document is shortcut key for select all document. So control A is for yes. Control A is for what? Now select all. Next. Control S save document. Control V used to print document. Control C used to copy selected text. Next. The header and footer option is available in which tab? The header and the footer option is available in which tab? This is insert, layout, view or home. Code option number use हुए is that header and the footer option. Got a minute guys. Yes, the header and the footer options is available in which tab? Both insert, layout, view or home. This is what? Number insert. So header and footer option कोठी ना insert. Okay. Next the layout रे कौन हबो? Used for page setup, margins and the alignment. So view used to change document views. Home contains text formatting tools like font size, bold and alignment. Okay. Next. The word add feature is used for. The word add feature is used for what? Now word add feature use हुए कोथिरे ना spell check पाई, formatting text artistically पाई, creating chart पाई या फिर adding tables. कोटा हबो ना this is to what? ना formatting text artistically. Okay. So the word add ru मन रखिबा कोन artistically जते बेले हमें किछि text format करूछे that is used what? Word add feature. Okay, in MS Word is used to apply decorative styles to text such as 3D effect, shadows and transformations. Got it? So checking spelling पाई कौन use हुए ना spelling and grammar tool जेमती कही थिली and chart creating पाई कौन use हुए handled by the insert chart options. Adding tables पाई कौन done using the insert table options. Next देखिबा. What is the shortcut to open a new document? What is the shortcut to open a new document? What is that? Control plus N, Control plus O, Control plus S or Control plus M. So new is for what? N. Kuda? Control plus N is what? Na new ku. Control plus O opens an existing documents. So that existing document thiba taku open kariba kon hoji Control O. Save Control S. M is what? Na increase the paragraph indent ku amar kon enlarge kariba pe increase kariba pe kon karuche na Control M. ठीक अछि. Next देखिबा. Which option is used to split a table in MS Word? Which option is used to split a table in MS Word? MS Word रे table split करिया ପାଇଁ को option Control plus Enter, Control plus Shift plus Enter, Alt plus Shift plus Enter और कोटा बना this is Control plus Shift plus Enter. So MS Word रे Control plus Shift plus Enter is used to split a table into two separate tables at the selected row. Control plus Enter insert a page break. Okay, what? Now insert a page break. What is Alt plus Shift plus Enter? No specific function for that. कौन confuse हेपेनी एटा बस याकू कौन अपन मानकर illusion create करिया पई देछि. So
What will be? A control plus shift plus enter is the right one. So the track changes feature is available under which tab? Track changes कोउथिरे review रे, home रे, insert रे और reference रे कोउथिरे ना review रे. Again review कले ही हमें track टा change करिबा ना पुनी again. So कोउथिरो हबो ना the track changes feature is in MS Word is available under the review tab. It is used to track edits, comments and modification made to a document. So modify करिया पे कोन again ताको review करिया को पड़िबो. काकू ट्रैक चेंज करबा को हेले. सो मन रखिबो जे कोनोसे हमें ट्रैक रे जाउछे जदी गोटे भूल ट्रैक रे गले अगेन बैक करी की गोटे होम बटन को आसी की पुन थरा में जाउछे ना. सो सेमिति हमर कोन करबा रिव्यू करबा को पड़िबो. होम कंटेन्स बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस. इंसर्ट यूज्ड फॉर एडिंग टैबलेट्स सॉरी insert used for adding tables, images and other elements. Reference used for managing कोन footnotes and कोन ना bibliographies. Okay, next देखिबा which key combination is used to create a page break? Tell me which key combination is used to create a page break? This is control plus enter, shift plus enter, alt plus enter or control plus shift plus enter. Control plus shift plus enter तो हमें ऑलरेडी देखि सारी छ. सो ऑड वन आउट कर दबा. ठीक अछि. सो which key combination is used to create a page break? Page break पे कोडा आसीबो ना. This is what? Control plus enter only. What? Control plus enter only. Okay, कोथिरे ना MS Word रे मन रहिबो. पेज ब्रेक पई कोन ना कंट्रोल करी की एंटर चिपिले हमर कोन हबो ना पेज ब्रेक आसी जिवो. ओटे न्यू फेस न्यू टैब ओपन हे जिवो कहया गले. ओके, सो शिफ्ट प्लस एंटर इंसर्ट ए लाइन ब्रेक. लाइन ब्रेक करिया गले पेज ब्रेक करिया गले कंट्रोल प्लस एंटर. लाइन ब्रेक करिया गले शिफ्ट प्लस एंटर एंड यूज फॉर कॉलम ब्रेक करिया पे कोन ना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर. नेक्स्ट, what is the use of control plus E? Tell me what is the use of control plus E in MS Word? Control plus E कोथिरे हुए left, right, center or justify text. कोडा हबो ना. This is कोन align text to the center. So center रे रहिबा पे कोन हबो ना E. Okay, pressing control plus E in MS Word centers the selected text on the page. So align text to left कोन ना done using control plus L and right is को कोन control plus R. justify text करियो कोन ना control plus J is for justify, R for right, left for L and हमर रहिला कोटा E होची कोन ना center मन रखिबो कोन align text to center. Next, what does the mail merge feature do? Tell me what does the mail merge feature do? Creates a new email, merges two documents, combines a standard document with a data source, encrypts a document. What does the mail merge feature do? So mail merge कोथिरे हमें करूछे create सेतेबेले new mail करूछे ना merge को जेतेले two document सेतेबेले करूछे ना combine standard document with data source करूछे ना encrypt से documents. So कौन करूछे ना जेतेबेले हमरा combine करूछे a standard document with a data source. कोना combination of a standard document with a data source is what na mail merging कहूचे. So the mail merge feature in MS Word allows user to create personalized documents like letters, labels or emails by combining a template with a data source. Okay, example Excel file. So this creates a new email. Incorrect हबा हमरे सब option just for an illusion. So the spelling and grammar check shortcut key is. So check आमे तले spelling या grammar करूचे. So को माले की यूज करूचे F1, F2, F7 और F10 कोटा ना this is F7. बार बार F7 चेक करूचे ना कोना spelling ठीक अछि ना नहीं ताकू चेक करिया लगी. So pressing F7 in MS Word only opens the spelling and grammar check tools allowing users to check and correct spelling and grammatical errors in a document. So F1 कौन करूची ना opens the help menu. F2 कौन करूची moves text or objects. F10 कौन करूची ना active the maneuver. Next, what is the shortcut key for redo in MS Word? What is the shortcut key for what? Redo is
MS Word. So redo करिया पई हमर MS Word रे कोटा शॉर्टकट की Control Z होची कोन undo not redo एटा मन रखिथिबा ओके Control P Control X Control Y what is that redo करिया पई हमर कोन ना Control Y okay so Control Y is used for redo pressing Control Y in MS Word repeats the last undone action effectively functioning as the redo command Control plus Z used for undo Control plus X कौन ची cut फाइन Control P होची कौन print फाइन next the table of contents options is available in which tab tell me the table of contents option is available in which tab home reference insert or layout what now this is reference कोउथिरे ना reference रे हमर table of content option आसीबो जोथिरे के हमें कोन करूचे ना it helps use create an automated list of headings and subheadings in a document okay home कोउथिरे ना use for basic formatting पई हमर home को जाउचे insert use for कोन adding tables and images layout used for adjusting page setup and margins and all okay so the drop cap feature is used for enlarging the first letter of a paragraph changing font size inserting a table creating a page border so drop cap कोथि पे यूज होची ना this is what ना enlarging the first letter of a paragraph so first letter जे कोनसी paragraph हमें edit करूचे so तार enlarge करिया में हमें कोनटा यूज करूचे ना drop cap feature okay it is commonly used in books and articles for decorative purposes changing font size this is done using the font size option in the home tab inserting a table this is done using the insert tab creating a page border this is managed under the designer page layout tab okay next देखिबा the columns option is available under which tab tell me the columns option is available under which tab home layout reference or review the column option is available under which tab column option कोठी थाए let's see this is under what ना layout oops so column option कोथिरे ना layout रे थाए okay it allows what ना users to divide text into multiple columns commonly used for newsletters and articles home used for basic formatting like font size bold and alignment references used for citations and the footnotes and the bibliography and review kothre na condensed tool for spell check okay what does the format painter tool do format painter tool kon kare copies formatting from one text to another copies text changes font size deletes formatting कौन करूची format painter रा काम कौन होची ना this is what ना copies formatting from one text to another कोटा ना format painter रा काम कौन करूची ना गोटे text को copy करूची same format रू different page रे बस copy paste करूची okay so this allows users to copy the formatting font style size color everything from one section to just text to apply it to another it is useful to maintaining a consistent style in document copying text is done by Control plus C changes font size can be changed using the font group of home tab deleting formatting removing formatting can be done using the clear formatting option what is the use of Control plus Shift plus C कोथि पई copy text Control plus C तो copy text हे जिवो ना paste Control plus V paste formatting copy formatting कोटा हेथिबो obviously copy formatting ही हेथिबो okay and जोटा अछि कोन paste formatting कोन हबो ना Control plus Shift plus V control formatting ही जिवो okay so next देखिबा अच्छा अच्छी पेस्ट फॉर्मेटिंग पे कौन ना टू पेस्ट फॉर्मेटिंग यूज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी खाली पेस्ट पे कौन हबो ना कंट्रोल प्लस भी जेते बेले कौन फॉर्मेट यूज हे जिवो सेते बेले कौन शिफ्ट यूज करिया को पड़िबो
Next, which shortcut key is used to insert a hyperlink? Which shortcut key is used to insert hyperlink? कोटा कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस पी. सो कौन होची ना यू एंड पी को हमें कौन ऑड वन आउट कर दोची. कोटा हेबो ना दिस इज कंट्रोल प्लस के. सो कंट्रोल प्लस एस यूज फॉर कौन फाइंड एंड रिप्लेस पई हमर कौन एस यूज हुए. सो हाइपरलिंक को आखे आगे रखी कि एच मारी देबेनी. ओके, अदरवाइज गोटे मार्क गला स्वाहा. सो कंट्रोल प्लस के होची कौन ना द शॉर्टकट की. Control plus K is used to insert a hyperlink in MS Word, Excel and PowerPoint. Okay. Next देखिबा. The watermark feature is available in which tab? Tell me, watermark feature available अच्छी को tab रे, insert रे, layout रे, design रे और reference रे. कोथि रे हमर ना this is design रे हमर कोन अछि ना watermark. Design रे गला परे हमकु देखाए ना सब टाइप रो लाइक कौन डिस्प्ले रे चेंज करि परिबा तार बैकग्राउंड आसे ना वाटरमार्क रखिबो न रखिबो. सो एटा कोथरे आसे ना डिजाइन ग्रुप रे. सो द वाटरमार्क फीचर इन एमएस वर्ड, the watermark feature in MS Word is found under the design tab. It allows user to insert text or image watermarks on document for कौन ना branding, security or confidentiality. So जे कौन सी suppose I am an educator here कौन in the StudyIQ. सो मो StudyIQ ओडिसा रे लोगो ही लगेबी, तार लोगो को आउ के यूज करि परिबेनी. सो एटा को सेक्शन हमें जाई करि परिबा ना वाटरमार्क कोडे देई परिबा. सपोज हमर मो नेम रे लगेली, सपोज सुदीप्ता StudyIQ SSIQ मु लेखिली. सो एई ब्रांडिंग ता कोड करबी ना वाटरमार्क सेक्शन को डिजाइन न जाई. ओके. सो इंसर्ट यूज्ड एडिंग टेबल्स कहिथिली, लेआउट्स, कंट्रोल्स, मार्जिन्स, रेफरेंस यूज तो कोन फुटनोट्स, बिलियोग्राफी, द साइटेशन. The maximum number of columns in a table in MS Word. MS Word रे maximum केतेटा कलम रही परिबो गोटे टेबल रे. MS Word रो गोटे टेबल रे maximum कलम केते रही परिबो 10, 32, 63 और 256. This is what ना 63. गोटे MS Word रो गोटे टेबल रो कलम रे केते रही परिबो ना 63 of columns. Okay. Next. The read mode view is used for. So हमें हम मोबाइल भी देखिचे read mode view थाए. ओके, सेटा कोथि पे यूज करा जाय? एडिटिंग टेक्स्ट, viewing documents in an essay, to read layout, formatting text or inserting images. कोथि रे ना this is for viewing documents in an easy to read layout. कौन ना डॉक्यूमेंट्स व्यू करिया को हमको इजी हबो. गोटे प्रॉपर लाइट रही थिबो, सेटा कौन ऑलरेडी इनबिल्ट थाए कि एते की हमरो विजुअलाइजेशन कैपेसिटी गोटे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रो आई रो एते की. सो तांको मोड रे समान ऑलरेडी सेटअप करी रखी थांती. एते की लाइट रो अधिक हेबा दरकार नाही कि कम हेबा दरकार नाही. सो दिस इज अ कौन रीड मोड इन एवरी कौन MS Word optimization रे थाए. So in MS Word optimizes the document for reading by adjusting the layout, hiding the ribbon and providing a distraction free experience. Editing text, editing is limited in remote. Formatting text, this is also not a primary function. Next देखिबा. What is the default file extension of MS Excel 2016? What is the default file extension? कोडा होजी MS Excel 16 रे 2016 रे कोटा हमारे यूज होची as a what ना default file extension .xlx, .xlsx, .csv, .docs कोटा हबो ना हमरो .xlsx हबो. ओके, ए सोडे लागिबो because MS Excel 2016 and later version save files in the .xlsx. Before कौन यूज होतुला ना with Excel X only होतुला, S लगी नथिला. So which is based on the XML standard. Okay. So next देखिबा. The intersection of a row and column. The intersection of a row and a column is called a what? ना इंटरसेक्शन जेते बेले हुए कौन ना गोटे रो रो एंड कॉलम रो ताको हमें कौन कहूछे ना दिस इज अ टेबल चार्ट सेलर फार्मूला. कौन हबो ना दिस इज अ व्हाट ना सेल हैला ना. एटा कौन होची इंटरसेक्ट होचे ते बेले गैप टाको हमें कौन गोटे सेल कहूछे. सो इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम forms a cell where data is entered. Each cell identified by a unique cell address. Table, a structured range of cells.
Chart, a graphical representation of data. Formula, a mathematical expression used in a cell. Okay. Next, the function of control plus x in Excel is कौन? Control x कोथिरे हमर यूज हुए ना हमरा कट करिबा पे यूज हुए, राइट? Cut selected contents, control C, copy, control V, paste, remove content, कौन? Delete रो किछि न थाए, okay? So what is the shortcut? Wait a minute. Okay. So what is the shortcut key to edit a selected cell? So what is the shortcut key to edit a selected cell? What is select करी जे cell को ताको edit करिया पे हमें को shortcut use करूचे? Now this is what? F2. Pressing F2 in MS Excel. Okay, only Excel. File कना using edit the contents of a selected cell directly without retyping or कौन आम टच न करी रिटाइप न करी डायरेक्ट F2 मारिदेबा देन एडिट करदेबा. ओके, सो F1 opens the help window, F3 opens the name manager, F4 repeats the last action or toggles absolute relative reference. The shortcut key to create a new workbook is, the shortcut key to create a new workbook is what? The shortcut key to create a new workbook is what? Control plus N और वन आउट करिबा O S P, P कोन प्रिंट हे गला, S कोन सेव हे गला. सो O आउ N भितर कोन N त हबनी बोधे, सो कोन हबो? So this is control N. Okay, confuse हेबेनी. control O होची कोन ना opens an existing workbook. control N कोन होची ना instantly shortcut key to create a new workbook. Okay, new workbook, existing workbook को open करिया पे control O use हुए and pressing कौन control N is got a minute. So next question is what? Now this is the shortcut key to create a new workbook is what? Control plus N, control plus O, control plus S or P. P हमारा जानी चाहिए कोथि पाई ना print पाई. S पर सेव पाई. O टा होचो दी existing किछि वर्कबुक आमर ओपन अछि ताको ओपन करिबा लागि कोन existing नोटबुक को ओपन करिबा लागि कोन दरकार हबो? O दरकार हबो. whereas control plus N कोथि पई दरकार हबो ना this is for what ना गोटे new related to N मन रखियो. नेक्स्ट देखिबा. What is the function of control Z? Control Z कोटा करूची हमरा ना redo नाई, redo कोटा ना Y, undo कोटा ना Z. redo Y, undo Z, Y, Z. select all is A, copy text is C. Okay, next. The maximum number of columns in MX Excel 2016 is, the maximum number of columns in MX Excel 2016 रे केते अछि ना 16384. What is that? That 16384. 256 columns यूज होतले हमरा Excel 2003 मॉडल रे ता मन रखिबा. And 65536 was maximum number of rows जोटा यूज होतला कोठी ना Excel 2003 रे. columns यूज होतला केते, sorry 256 रा कोठी like columns यूज होतला 2003 रे, whereas rows यूज होतला केते ना 65536 in 2003. but as of 2016 according ही हमर question आसीबो. so what is that? ना 16354 is the last one. 16384, sorry. Next, the shortcut to select the entire worksheet is, the shortcut to select the entire worksheet is. so जेकोन सेंसा में कोन कंट्रोल ए चिपिले ही कंट्रोल ऑल सेलेक्ट जो सिलेक्ट ऑल हुए. सो एंटायर वर्कशीट भी कोन सिलेक्ट ऑल रही तो जीव ना. सो कोन हबो ना कंट्रोल ए हबो.
which symbol is used to start a formula in Excel? So आम Excel जिते बेले start करूचे को symbol use करूचे to कौन start the formula कोटा @ तो करिबानी hashtag करिबानी and करिबानी so what will be the right answer 9 equal to. So in MS Excel all formulas must start with what? With the equal sign that tells Excel that the following text is a formula and should be calculated. Okay, and at the rate कोठरे ना old Excel version रे हमर यूज होथुला. The shortcut key to save a workbook is the shortcut key to save a workbook कौन हबो ना Control A C हबो because B हेला paste, X हेला cutting, P हेला paste, sorry P हेला print. Next, which function is used to calculate the sum of range? Which function is used to calculate the sum of a range? कोटा ना equal to sum, equal to add, equal to total, equal count. कोटा ना calculate the sum of range करूछे हमें कोथरे ना obviously equal to sum रे ही करिबा. Okay. So the function equal average A1 is to A5 returns to what? Total of A1 to A5, maximum value of A1 A to 5, maximum value of A1 to A5 or average. जेते बेले average कथा पचारिची तो obviously कोटा हबो ना the average of A1 to A5. Okay. Next. So the VLOOKUP. So the VLOOKUP function is used for what? Searching a value in a vertical table, searching a value in horizontal table, sorting data or counting values. So कोटा हमर होची VLOOKUP function used करूचे कोना used for what? Now this is searching a value in a vertical table. कोना in a vertical table रे आमे value sorting करिबा को VLOOKUP रा use करूचे. मन रहिबो देखंतु look up up means कोन तळु ऊपर को हम अनेबा तळु ऊपर को माने कोन गोटे vertically way रे अनेबा that is what VLOOKUP searching for a value in vertical table. Horizontal table ले कोन ना HLOOKUP. V is for vertical, H is for horizontal, lookup is the same. Okay. Sorting data, sorting is done using the sort feature, not VLOOKUP. Counting values, count functions are used for counting values. What does Control plus Shift plus do in MX Excel? So Control plus Shift plus कोथरे यूज हुए ना insert a new row, insert a new column, insert a new cell or delete a row. कोटा यूज हुए ना this is insert a new cell. What? Now insert a new cell is used for what? Na kona new cell shift existing cells accordingly. So kon habo na insert a new cell amaro darkar hochi kona gote shift Control plus Shift plus use करूछे हमें कौन ना insert a new cell जिबा लगी. So insert a new row जिबा लगी insert a new row if the entire row is selected then हमें कहबे ताकू insert a new row. Insert a new column if the entire column is selected then insert a कौन एटा कहबा delete row then control plus minus to the use हबा control plus एसे यूज हेतिला एटी plus minus यूज हे गले कोन हबा ना delete a row. So the function equal to len A1 returns what? Number of words in A1, number of characters in A1, numbers of numbers in A1 or now total sum of A1. So the function is equal to len A1 returns to what? This is the number of characters in A1. So len n1 means कौन जिते number of characters अच्छी सेते कौन n1 मन रहिबो returns to the total number of characters including spaces also. Number of numbers in A1 len counts all characters only not just numbers. So what is the right option? A number of characters in A1 refers to the len n1. Next,
What is the use of the concatenate function? What is the use of concatenate function? What is that? To join text from multiple cells, to count values, to sum numbers, to sort data. What is to join the text from multiple cells? Concatenate of concat in newer versions merges text from multiple cells into one. Multiple cells को गोटे cells रे convert करूची कोटा ना concatenate. माने रहिबा to count values, count functions are used for count values. To sum number, sum function use हो. To sort data कौन use हुए ना sorting is done using the sort feature. Okay. The if function is used for, the if function is used for what? Conditional calculations, copying data, sorting values, or merging cells. Tell me, the if function is used for what? Conditional calculations, copying data, sorting values, or merging cells. What is that? That what? Conditional calculation. What if use हुए हमारा कोथिरे ना कोथिरे ना conditional calculations रे. Okay, based on the conditions. जदि कोठी ना if not एरा जदि लागि थिबो greater than or equal to ए सब जदि लागि थिबो देन हमें कोन यूज करछे ना if करूछे जोटा कोथिरे ना in a conditional calculations. अरे sorry. So what is the function of control plus D in Excel? Excel sheet रे control plus D रो कौन रहुची function? Deletes a row, fills down the selected cell, duplicates the sheet, deletes the worksheet. कोटा हबो ना control plus D is used for what? Now fills down the selected cell. What? Now fills down the selected cell. जोटा कि copies the content of the selected cell down to the cell below. Okay? Delete a row used for deleting a row. Duplicates the sheet, copying or duplicating a sheet is done through what? Now right click option. Delete the worksheet deletion is done by what? Now right click or shortcut kona Alt plus H plus D plus S. What does the function now return? Now return करिबा को function को? The current date को, current time को, both date and time or blank cell. कोठी की ना गोटे both date and time को. जदि now देखी space देलो, that means से कौन करिबो ना return back to both date and time. कोठी की ना recent जोटा की current और डेट एंड टाइम थिबो ताकू कोन रिटर्न करिवो. ब्लैंक सेल को कोन करिवो ना नाउ ऑलवेज डिस्प्लेस ए वैल्यू. ओके एंड द करेंट डेट डिस्प्लेस ओनली द डेट बट नाउ इंक्लूड्स टाइम एज वेल. ओके नेक्स्ट द फंक्शन हैज इक्वल टू लेफ्ट a1 3 रिटर्न्स टू व्हाट माने रखो केमिति टाको मने रखिबो. व्हाट इज द ट्रिक? लाइक देखो फर्स्ट 3 कैरेक्टर फ्रॉम a1 देखो लेफ्ट देइची फर्स्ट 3 कैरेक्टर फ्रॉम a1 द टोटल ऑफ a1 द सम ऑफ द फर्स्ट 3 सेल्स. लेखा आंसर कोन हबो ना द फर्स्ट 3 कैरेक्टर फ्रॉम a1 रु कोन देइची हमको लेफ्ट कथा पचारिची. क्वेश्चन इज कोन देइची लेफ्ट पचारिची. सो फ्रॉम a1 टू जदि पचारिची बिफोर ताहले हम को फर्स्ट 3 कैरेक्टर फ्रॉम a1 लास्ट 3 कैरेक्टर फ्रॉम a1 हले राइट हेसिबो. सो लेफ्ट केमिति हबो काउंट करिवो फ्रॉम जदि a1 नु देइची ताहले सेटा लेफ्ट हबो. आफ्टर a1 देइची देन सेटा राइट हेसिबो. सो फ्रॉम 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम a1 विल बी द व्हाट ना राइट आंसर. ओके सो द लास्ट 3 कैरेक्टर फ्रॉम a1 हले द राइट फंक्शन हे गला. Total of a1 केमिति हबो ना sum function is used for the calculating tools. Okay the sum of the first 3 cell हले कोन ला लेफ्ट कोन किछ काम करिबनी एठी sum रे sum टा कैलकुलेट हबो कोन sum रे ही only. So the merge and center option used for what? The merge and center option is used for what? Combining multiple cells into one. Kana merge and center, splitting cells, formatting text or changing font size.
the merge and center option is used for what? Let's see. This is what? Na combining multiple cells into one. Merging means कौन? जते सबू आमर separate है कि थिबो isolated like कौन जिनस थिबो ताको हमें merge करिबाटा को कौन merging ही कहूचे ना, combine करिबाटा को कौन merging कहूचे. So combining multiple cells into one is known as merge selected cells into one and center the content. Okay. Splitting cells, splitting is done using the text to column. Formatting text, formatting options like bold, italic and color are separate from merge and center. Changing font size adjustments are done through the font section. Next देखिबा. What is the use of conditional formatting? What is the use of conditional formatting? It is to change cell format based on conditions, to apply a standard format, to sort data, to copy formatting. What is the use of conditional formatting? Tell me what? Na conditional formatting पे कौन use होबो? Now this is what? To change cell format based on conditions. So conditional change केमिति होबो? ना गोटे cell format जो condition थिबो if हो not हो किछि भी हो तो ताकू बेस करिक जो condition clause ता थिबो change हेबाटा कोन होची ना conditional changing जोटा कि change the cell format based on the conditions. Applies formatting like color or bold text when specified conditions are met. Okay. So to apply a standard formatting it is done manually. To sort data, sorting is a separate function. To copy formatting, format painters is used to copy formatting. Next देखो. What does freeze panes do in Excel? What does freeze panes do in Excel? Excel रे freeze panes रा कौन work रहुची? Lock certain rows or columns freeze करिबा. Okay. Delete rows, merge two sheets, changes cell color. Freeze करिया माने कौन गोटे point रे ताको रखिबा. That means कौन lock करिकी रखिबा. So lock certain rows and columns. Okay. So delete rows कौन delete option देकी merge two टा कौन बस sheet कौन merge केमिति हबो sheet दिटा cannot ना using freeze panes. So changes cell color, formatting options control cell color. Next देखिबा. What is the function of wrap text? Tell me what is the function of wrap text in Excel? This is moves text to the next cell, adjust text with a cell, deletes text, changes font style. Wrap means कौन देची? Let's see. This is adjust. But ना adjust text within a cell टाको हमें कौन कहूचे ना wrapping. Okay, wrap text ensures that long text fits within a cell by displaying it on multiple lines. So कौन करूचे ना adjust कर दोचे जेते बेले हमें suppose गोटे एत्तिकी घरे लेखिबार अछि गोटे पीपीटी को हमें गोटे डॉक्यूमेंट को कॉपी करूचे पेस्ट करूचे पीपीटी रे देन ता सेल भीतर ताको रखिया पे केमितो सपोज गोटे लंबा लाइन ने सेटे लेखा आसुची देन ताको हमें जेते बेले कोन सिंक करि दोचे सेते बेले हमर कोन एडजस्ट हे जाउची ना देन लंबा लाइन टा धीरे धीरे कलम कलम हे कि छोटो छोटो लाइन ने कन्वर्ट हे जाउची. सो दिस इज व्हाट ना wrap text. Okay. So delete text कौन ना delete मारी की changing the font style changes are done by what ना font option रो. Next. The sort and filter feature is used to. The sort and filter feature is used to what? This is sort and filter data, merge cells, format text or copy formulas. What? The sort and filter feature is used to sort and filter data, merge cells, format text or copy formulas. Sort and filter कोथि पे use होची? And this is what? Sort and filter data. Okay, used to arrange data in ascending or descending order and filter specific values. Merging cell is done using the merge and center option. Format texting कौन होची? Formatting text is done through font setting. Copying formulas is done using कौन drag fill or copy paste. Sorry, not sort and filter. Okay, next देखिबा. The data validation feature is used for. The data validation feature is used for what?
Is that checking data accuracy, formatting text, or creating charts or splitting cells? The data validation feature is used for what? The data validation feature is used for what? Now this is for checking data accuracy. Data valid अच्छी ना नहीं हमें चेक करूचे केमिति तार accuracy को चेक करिकी যদি accuracy तार ठीक अछि then से data टा कोन valid, otherwise this is invalid. So restricts and controls the type of data entered in a cell. कोठी checking data accuracy रे. Formatting text रे कोन हुए? Text formatting is done using font setting. Creating charts created using the insert chart. Splitting cells is done using text and columns. Next, the pivot table feature is used for summarizing large amount of data, merging cells, sorting alphabetically, changing font color. Now this is summarizing large amount of data. Used to what? Analyze, summarize and organize large data sets dynamically. Merging cells, merge is done using the merge and center. Sorting alphabetically, sorting is a separate function through pivot tables, allowing sorting within them. Pivot table nahi हुए, but this is a different function. Changing font color changes are done through a formatting options. Next, what does Control plus K do in Excel? कौन हबो? Deletes a row, opens a new workbook, changes text color, or inserts hyperlink. कौन हबो? Now this is inserts hyperlink. Control plus K हमको कौन करूची? Opens the insert hyperlink dialog to add links to website files or locations. Okay, delete a row केमिति होची ना deleting a row is done using control plus minus जेमति कहितली add हे गले कोन होची ना delete होची. Opens a new workbook कोन हबो? control plus n. Changes text color केमिति हबो ना हमर font को जाई के हमें change करि परिबा control. So the goal seek feature in Excel is used for. The goal seek feature in Excel is used for what? Goal seek कौन use होची? Now finding required input for a desired result, sorting data, applying filters, formatting cells, or finding required input for desired result, sorting data, applying filters, or formatting cells. What will be? This is what? Finding required input for a desired result. Okay, finding required input for a desired result. Goal seek रा काम होची कोन? Goal set करूची माने कोन से तार कोन desiredness अछि सेटा को result रे convert करिया पई try करूची. एमिति मन रखिबो कि finding required input for a कोन desired result. Okay, that is goal seek determines the input needed. Sorting data, sorting is done using the sort feature. Applying filters are applied using the filter option. Formatting cell, formatting is controlled through the format cells. Next देखिबा. The remove duplicates feature is used to. आमे जदी किछि भी गोटे पैराग्राफ लिखुचे जदी बहुत सारा डुप्लिकेट वर्डिंग हे जाईची आमे जदी चाहिबा या फिर किछि गोटे डेटा आमे इनफॉरमेशन रखुचे देन से डाटा को आमे जदी चाहिबा रिमूव करिबा लागि देन केमिति करिबा डुप्लिकेट टा को रिमूव केमिति करिबा कोटा यूज करिकी delete duplicate values in a data set or copy cells, sort data or merge tables. कौन हबो ना में delete duplicate values in a data set को जाइकी duplicate values को delete करि देले जति duplicates अछि गोटे सिंगल वर्जन रही कि duplicates पूरा कोन delete हे जिवो. Okay, so copy is done using control plus C. Sort data कहितली. Merge tables can be merged using power query formulas. What is the default file extension for PowerPoint 2016 and later? What is the default file extension for PowerPoint 2016 and later? कोटा में यूज होची .ppt, pptx, pps or .docs. कोटा PowerPoint पाई this is pptx. 2016 letter पाई कोटा document ना d कोटा .docs. Okay, so PowerPoint 2016 and later we use the open XML format which saves presentation with a PPTS extension by default. Okay,
So PPT, this is the older format used in PowerPoint 97 to 2003. PPS, this is a PowerPoint show, and sorry, dot docs, this is the default file extension for Microsoft Word document 2016 रही थिला. Okay. So next, which shortcut key is used to start a slideshow from the beginning? Which shortcut key is used to start a slideshow from the beginning? So slideshow from the beginning आमे को shortcut key use करूचे? Now this is what? F5. Pressing F5 starts the PowerPoint slideshow from the beginning. Okay, F2 used to rename a selected file or edit text in a cell. F7 opens the spell check tool in Microsoft Office applications. F9 refresh fields in Word or recalculate formulas in Excel. Next, what is the function of the slide master in PowerPoint? What is the function of slide master in PowerPoint? What? To create animation, to apply a consistent design or design to all slides, to add audio to slides, to insert a new slides. कौन हबो? Slide masters माने कौन? Obviously slide सहित तार काम थिबो. देखिबा नेक्स्ट कौन अछि ना to apply a consistent design to all slides को हमको यूज करूचे कोउतरे ना slide master. It allows users to define themes, fonts, colors and layouts that apply to all slides in a presentation. Okay, to create animations are added using the animations tab. To add audio to slides, audio can be inserted via the insert. To insert a new slides are added using the new slide button or the Control plus M. New slide kona? Control plus M. Then the default view in PowerPoint when opening a presentation is. The default view in PowerPoint when opening a presentation is what? Is slide sorter view, normal view, notes page view or outline view. Default view in PowerPoint when opening is what? Now this is normal view. Normal view is the default view in PowerPoint where you can edit slides and content and navigate through the slide thumbnails. Slide sorter view is what? Now displays all slides as thumbnails for easy recording, but it is not the default view. Notes page view used to view and edit speaker. Outline view shows the text content of slides in an outline format. Okay. Next देखिएगा. Which tab contains the new slide option? को tab रे हमें contain रहुची new slide option टा. Home, insert, design or view. Obviously कोथरे ना हमरा home रे ही थिबो. So new slide option is found where? In the home tab of the home. Okay. Insert रे कौन रहुची ना used to add elements like image, charts and text boxes. Design helps customize slide themes, colors and layouts. View manages different viewing modes like normal, slide sorter and note pages. The function of Control plus M in PowerPoint is. The function of Control plus M in PowerPoint is what? Insert a new slide, more slides, move slides, minimize PowerPoint. The function of Control M is what? Now insert a new slide. Okay. What is the use of Control plus D? Duplicate slide, delete slide, design slide, change slide layout. D रे देखो तीनटा जाक ऑप्शन देई छै आपन को कंफ्यूज करिया पई. So कोन हबो ना duplicate slide is using for Control plus D use for duplicate slide. Delete slide only delete की को मारले ही हुए. Okay, design कले कोन ना design tab is different. And change slide layout जदि हमें कोन करिबा ना layout option को जाई कि ही चेंज करि परिबा जोटा कि home tab रे अछि. So, which of the following is not a view option in PowerPoint? Which of the following is not a view option in PowerPoint? What is that? Slide show view, reading view, print layout view, slide sorter view. Which of the following is not a view option in PowerPoint? View option कोटा हबनी slide show view तो view रे अछि, reading view, print layout view और slide sorter view कोटा हबनी ना print layout view हमरा हबनी. जोटा कि कोथरे ना एटा हमरा
कौन पावर पॉइंट ना जोड़ा प्रिंट लेआउट कौन ना आमर वर्ड रे अछि ओके नेक्स्ट and slide shutter view displays the presentation in full screen mode for presenting and reading view allows users to view the slideshow in a window without switching to full screen mode. Slide shutter view shows all slides as thumbnails for easy arrangement. The shortcut key to create a new presentation is the shortcut key to create a new presentation is what? Now this is control plus P, control plus N, control plus O or control plus S. What is that? The shortcut key to create a new presentation कौन रहुची ना control plus N. आ यदि existing को हमें open करिबा control plus O. Okay, save control plus S, print control plus P. Which feature allows text to appear letter by letter in a slide? लेटर बाय लेटर फीचर आमे कोथिरु पाई परिबा व्हिच फीचर रु आमे लेटर बाय लेटर्स गोटे स्लाइड रे कोन पाई परिबा स्लाइड ट्रांजिशन एनिमेशन स्लाइड लेआउट और स्मार्ट आर्ट कोथरे पाइबा दिस इज एनिमेशन रे पाइबा The animation feature in PowerPoint allows text to appear letter by letter, word by word in other effects. So letter by letter हो कि word by word हो जो question आसिला कोथरु पाइबो ना animation नु ही पाइबो. Okay. So slide transition controls how slides move from one to another. Slide layout, it determines the arrangement of content on a slide. Smart art helps to create diagrams and visually structured content. Okay. Next. Which option is used to apply the same design to all slides? Tell me which option is used to apply the same design to all slides? Slide layout, slide master, slide sorter or slide transition? Which option is used to apply the same design to all slide? Kota he jiba? Obviously this is called slide master. गोटे डिजाइन आमे चूज कले देन सेटा अप्लाई हे जाउची बाय द स्लाइड मास्टर फीचर in PowerPoint allows users to apply a consistent design including themes, fonts and layout to all slides in presentation. Okay, next देखिबा what is the purpose of a slide layout? Slide layout रो कोन रहउची purpose to control text animation, to arrange slide elements like title, text and images, to add music to a slide, to insert a new slide. कोटा हबो what is the purpose of a slide layout? This is to arrange slide elements like title, text and images. A slide layout in PowerPoint defines the arrangement of elements on a slide such as titles, text, images, chat and other objects. Different layouts help maintain consistency and organizations in a presentation. Okay. So, to control text animation controlled through the animations tab, to add music to a slide done using the insert then audio, to insert a new slide achieving using control plus M. Okay, new slide पे control plus M. भाबो new slide रे कोन हेबा कथा तम भाबु तो control plus N हेबा कथा किंतु टिके पूर्व को भाबो control plus M. Okay. Which tab allows you to apply a theme to a presentation? Which tab allows you to apply a theme to a presentation? Home, insert, designer, view. Apply करूचे हम गोटे न्यू थीम कोथरे ना obviously हमर कोथरे ना डिजाइन नहीं अप्लाई करूचे ना न्यू थीम ये सब कोथरे आसीबो डिजाइन अंडर रे सो the design tab in a PowerPoint allows user to apply themes to their presentation. A theme includes a set of predefined colors, fonts and effects that give a consistent look to all slides. Home रे contains basic editing tools. आमे जहाँ भी edit करिबा को चाहिबा home को जाइके edit करि परिबा. Insert used to add elements like image, table, chat or media जहाँ भी चाहिबा में insert करिबा पई सेटा insert रही परिबो. View रे helping adjust with displays of slides such as slide sorter, outline view and note pages आमे से सब कोठी ना view option ने पाई परिबा. Next, which feature is used to create an organizational chart? Which feature is
used to create an organizational chart? Chat, smart art, word art or shapes? Which feature is used to create an organizational chart? कोटा यूज हबो ना दिस इज व्हाट ना स्मार्ट आर्ट. ओके सो द स्मार्ट आर्ट फीचर इन पावर पॉइंट आमे वर्ड देखिले एबे पावर पॉइंट वर्ड देखिले एक्सेल भी देखिले एबे हमर कोन टाइम फॉर पावर पॉइंट. सो इन स्मार्ट आर्ट फीचर इन पावर पॉइंट is used to create organizational chart. It provides various diagram types including hierarchy, which is specially designed for organizational charts. User can easily add, edit and format elements with the hierarchy. So smart art feature कौन होची ना used to create organizational chart. ओके न्यू क्रिएट करबा लागि हमें कोन स्मार्ट आर्ट यूज करूचे स्मार्टली आर्ट करूचे कोन न्यू को क्रिएट करबा लागि न्यू ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को क्रिएट करबा लागि चार्ट कोन करूचे यूज फॉर क्रिएटिंग डाटा ड्रिवन चार्ट्स ओके लाइक बार ग्राफ्स पाई चार्ट एंड लाइन चार्ट्स. Word art used for decorative text formatting. Shapes provides individual drawing elements but lacks structural layout for organizational chart. The shortcut to align text to the center of a slide is. The shortcut to align text to the center of a slide is. What? Control plus L, Control plus E, Control plus R or Control plus J? The shortcut to align text to the center of a slide is what? Now this is shortcut Control plus E. Align ru मन रखिबो E. Though align is not starting with the alphabet E, still align ru मन रखिबो Control plus E. Okay. कोथिरे align text to the center of the text box or slide. Control plus L aligns text to the left. Control plus R right. Control plus J कौन कहतिली justify text. Next. Which key combination is used to group objects together? Which key combination is used to group objects together? कोटा हबा Control Z, H, M or D. M for कौन new, D for कौन हबा sorry. Next answer देखो Control G is the right one because D for duplicates, M for new, H for opens the find and replace होची H. So Control G is for what? ना shortcut use कौन group selected objects together करिबा like जे कौन सी selected objects को कौन group ली एकाठी करिबा लगी कौन यूज होची ना G group for G. Okay. And it कौन करछि ना this allows you to move, resize and format them as a single unit. Which feature allows inserting a company logo on every slide? Which feature allows inserting a company logo on every slide? Slide layout, slide master, slide sorter or animation pen. Kota habo na this is slide master. The slide master feature in Microsoft PowerPoint allows what? Na user to insert elements like a company logo ho, footer ho or a background on all slide at once. थरे प्रेस करले हमर कोन स्लाइड मास्टर यूज करी कि हमर जे कोनसी सपोज कंपनी रो लोगो किछि हेला हम जेंति StudyIQ ओडिसा रो लोगो अछि सेमिति किछि गोटे लोगो हम जदी कॉपी पेस्ट करबा को चाहिबा देन बाय द हेल्प ऑफ स्लाइड मास्टर हमर कोन यूज हे परिबो आगुरु भी कहिछि. ओके नेक्स्ट. What is the purpose of format painter in PowerPoint? What is the purpose of format painter? What is that in PowerPoint? Copy text in from one slide to another. Copy formatting from one object to another. Insert an image or add transitions to a slide. What will be? Now this is copy formatting from one object to another. Okay. The format painter in PowerPoint allows user to copy the formatting from one object and apply it to another. This helps maintain consistency in design without manually adjusting its element. मन रहिबो. So format painter हमर कोन copy formatting from one object to another format painter through रे होची. Formatting रू obviously delete ही करिवो ना. Okay. Then the remove background tool is found under which tab? रिमूव बैकग्राउंड कोठ हमें पाइबा इंसर्ट डिजाइन पिक्चर फॉर्मेट एनिमेशन. सो हमें ऐड करूचे कोठ पाउचे डिजाइन रो ही पाउचे राइट. देन हमें
रिमूव बैकग्राउंड कले कोथ्रु पाइबा ना पिक्चर फॉर्मेट रू रिमूव करबा को हेले कोन से जिंस कोथ्रु हम कहछ ना फॉर्मेट मारी दे सब रिमूव हे जिवो सो फॉर्मेट इज रिलेटेड टू कोन हमरो remove. Okay, so the remove background tools in PowerPoint is found under the picture format. When you insert an image and select it, the picture format tab appears in the ribbon. This tab contains various tools for editing images, including the remove background feature. Okay, insert. This tab is used to add image. Design. This tab is used for slide themes. Backgrounds add करिबा को हेले कोन आसीबो ना डिजाइन. एनिमेशन दिस टैब इज फॉर एडिंग कोन मोशन इफेक्ट्स एंड एनिमेशन जानि परुथबो मूवी रे केमती एनिमेशन हुए सेमिति आ. नेक्स्ट, which view allows you to rearrange slides easily? Which view allows you to rearrange the slide easily? Normal view, outline view, slide sorter view or reading view? What? Which view allows you to rearrange slide easily? Rearrange kariya pai kouta? And this is slide sorter view. The slide sorter view in PowerPoint allows users to see all slides are thumbnails on a single screen, making it easy to rearrange them by dragging and dropping. The view is ideal for organizing the presentation structure efficiently. So slide sorter view रे हमरा काम कोन होची ना slide sorter view in PowerPoint allows what ना to see all slides as thumbnails on a single screen. मन रहिबो normal view कोन ना the default view for editing कोन रहिबो normal view. Outline view कोन displays one text content of slides in an outline format. Reading view कोन designed for previewing the presentation in full screen. What is the difference between animation and transition in PowerPoint? What is the difference between animation and transition in PowerPoint? Animation applies to slides, transition applies to object. Animation applies to objects, transition applies to slide. Both are the same, neither affects the presentation. कौन होगा ना एनिमेशन अप्लाइज टू कोठी हुए एनिमेशन अप्लाई हुए ऑब्जेक्ट रे whereas हमर कोन ट्रांजिशन अप्लाई हुए स्लाइड रे मन रहिबो ट्रांजिशन हमें कोन करूचे ना स्लाइड को ट्रांजिट करूचे whereas ऑब्जेक्ट को एनिमेट करूचे. ओके, animation refers to effect applied to objects within a slide to make them appear, disappear, move or change in some way, whereas transition refers to effect that occur when moving from one slide to another during a presentation. So slide को के करछि transition, object को animation. मने रहिबो. Which tab contains the slide transition option? Which tab contains the slide transition options? कोड tab हमरा contain करूछि animations, transition, design or home. कोटा contain करिबो. Which tab contains the slide transition option? Slide transition is what? Na transitions. Slide transition option is found under the transition tab in Microsoft PowerPoint. This tab provides various transition effects that controls how slides changes during a presentation, whereas animation, designs and home are not. Which of the following is not an animation category? Animation category रे ए भितरु को ऑप्शन टा जीवनी entrance, emphasis, slide transition or exit. Which of the following is not an animation category? कोटा हबो this is what ना slide transition. Slide transition is not an animation category. Instead, it is a feature used to apply effects when moving from one slide to another. It's found under what? Na transition tab under हमें पाउच. Okay, बाकी entrance, emphasis, exit ये सब हमें कोथरे पाउचे ना animation effect रे. What is the use of the rehearse timings? What is the use of the rehearse timings feature? To record the time spent on each slide, to set up animation, to insert an audio file, to check spelling. Rehearse timing kothre na to record the time spent in each slide. Rehearse timing कौन होची ना features of Microsoft PowerPoint is used to record the time spent on each slide. हमें गोटे स्लाइड रे केते की टाइम स्पेंड करूचे सेटा केते टाइम हमको कोडा मेंशन करूची कोडा हमको शो करूची ना द rehearse timings. Okay,
To set up animation, animations are controlled separately under the animations. Insert audio, audio files can be inserted using the insert tab. To check spelling, amara spell check ପାଇଁ कोन review option जाई परिबा. So the shortcut to exit a slide show is आमे गोटे स्लाइड शो जते यूज करूचे देन शॉर्टकट पुणी बैक टू होम पेज को आसीबा पई कोन यूज करूचे ESC एंटर स्पेस बार और कंट्रोल एक्स कोन करूचे ना आमे जे कोनसी ES लाइक सॉरी आमे ओनली ESC को टैब करी की एस्केप को टैब करी की आमे कोन बैक टू होम पेज आसी परिबा. ओके एग्जिट टू स्लाइड शो रु एग्जिट करिवा पई कोन आमे यूज करूचे ना ESC यूज करूचे. Enter moves to the next slide or animation. Enter जदि आमे स्लाइड शो टाइम रे एंटर टैप करूचे देन कोन होउची ना नेक्स्ट स्लाइड को एनिमेशन को हम कोन मूव करूची. स्पेस बार एडवांस टू द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट डजंट exit. Control X, this is the shortcut key for cut, not work. There is no work of Control X in slide show. So what is the use of the slide show tab? So slide show tab रे use कौन होची to edit slides, to present slides, to add image, to create tablets. So कौन हबो ना to present the slides हबो. Okay, presentation देबा पई हमें slide show करू थाए. So the slide show tab in Microsoft PowerPoint is primarily used to present slides. It contains options like start slide show, set up slide show, rehearse timings, record slide show. So to edit slides, editing slides is done in the home, insert and design tabs. To add images, images are inserted using insert tab. To create tables, tables are added using what? The insert tab. What does the loop until stopped? What does the loop until stopped option in slide setting do? Co option loop until stopped. Okay. So what does the loop until stopped option in slide setting do? Slide setting रे हमर जदि option आसीबो loop until stopped सेटा कोन शो करिवो place the slide slow continues until stopped, stop the slide show after one play, rewinds the slides or changes the slide order. कोन हबो ना place the slide show continuously until कोन stop न करा जाय छी. Okay, so loop until stopped means कोन continuously show करिवो until it not कोन command to stop. So next देखिबा what is the function of presenter view in PowerPoint? What is the function of presenter view in PowerPoint? कौन हबो? Shows speaker notes while presenting, duplicates slides, records the screen, creates a new presentation. What is the function of presenter view in PowerPoint? What is the function of presenter view in PowerPoint? It is shows speaker notes while presenting, duplicates slides, records the screen or creates a new. This is what? Na so speaker notes while presenting. So presenter view ra काम कोन ना speaker notes रे कोन presentation provide करिवो. So speaker notes while presenting. This is in PowerPoint allows the presenter to view their speaker notes, upcoming slides and presentation controls on their screen while the audience only sees the slideshow. Okay? Duplicate slides because presenter view does not create duplicate slides. ये सब हमर कोन odd one out करिवो. Next. What is the shortcut to go to the next slide in slideshow mode? आमे shortcut कोटा यूज करूछे आगु जिबा लागि. So कोन हे परिबो like कौन ऑल ऑफ द अबव लाइक स्पेस बार को टच कले आगु जाई परिबा, एंटर को टच कले जाई परिबा या फिर राइट एरो को टच कले आमे जाई परिबा. Which of the following audio file format is supported in PowerPoint? को ऑडियो फाइल हमर सपोर्ट करूची PowerPoint रे? MP3, WAV, WMA or all of the above? This is what? Now all of the above. Microsoft PowerPoint रे हमर कोन both MP3 और कोन WAV and WMA हमर यूज होची. Okay. What is the latest version of what? So what is the latest version of Microsoft Windows as of 2025?
सो लेटेस्ट वर्जन ना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कोटा 2025 अकॉर्डिंग कोन देखो सबुठ लेटेस्ट 12 लिखा है दैट डजंट मीन कि 12 क्लिक कर दबो सो 2025 अकॉर्डिंग भी हमर केते विंडोज 11 इज द लेटेस्ट वन सो as of March 2025 the latest version of Microsoft Windows operating system is Windows 11 released on October 5 2021 रे release हेइथिला okay what is the primary function of an operating system what is the primary function of an operating system that is to run applications to manage hardware and software to store files to create documents what is the primary function of an operating system this is what na to manage hardware and software okay an operating system is the main software that manages the computer's hardware and software resources okay and these are the like detailed explanation if you want to read and if you want to know more about this then you can have a look what is the default file system used in Windows 10 and Windows 11 कोटा default file system हमर अछि Windows 10 and 11 ने FAT32 NTFS ext4 HFS X plus कौन होची ना NTFS the default file system used in Windows 10 and Windows 11 is NTFS that is what na new technology file system okay default file system used in Windows 10 रे and Windows 11 latest हमर कोन जोटा new थिबो सेटा ही हबो एमिति रिलेट करी कि मने रखिबो okay next what is the full form of NTFS कोटा कहि त देली एबे new technology file system okay which shortcut key is used to open the start menu which shortcut key is used to open the start menu कोटा control plus S control alt plus tab windows key or control plus ESC कोटा now windows key होची कना primarily use करा जाए to open the start menu okay next what is the default web browser in Windows 11 default web browser कोटा अछि Windows 11 ने Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge or Internet Explorer. What is this? This is कौन Microsoft Edge. Windows 11 ने default web browser भाबरे कोटा यूज हुए ना Microsoft Edge को यूज करा जाए which is built on the Chromium engine. It replaces Internet Explorer which was officially retired by. Okay. Google Chrome a popular web browser. Mozilla Firefox another well known these are the kind of browsers okay किंतु हमारा Windows 11 रे को browser use हुए ना this is Microsoft Edge so which Windows feature allows users to manage multiple desktops which Windows feature allows users to manage multiple desktops task manager task view control panel or file explorer tell me which Windows feature allows user to manage multiple desktops कौन हबो ना this is task view task view is a Windows feature that allows user to manage multiple virtual desktops it helps organizing work by what organizing work by what na create separate desktops for different tasks improving productivity okay task manager काम कोन used to manage running process and monitor system performance control panel काम कोन होची ना used for system setting and configuration file explorer काम कोन used to navigate files and folders which of the following is not an operating system so Windows is an operating system Linux is an operating system so Mac OS also an operating system so कोटा नुहा so Microsoft Office is not an operating system okay Windows developed by Microsoft Linux कोन होची open source गोटे open source रो example पढ़ी थिली कोन होय दबो ना Linux को गोटे open source रो operating system and Mac OS by Apple Microsoft Office not an operating system
Which key combination is used to open task manager? को key को आमे use करूचे open task manager करिया पई कोटा हबा control plus shift plus ESC control plus alt plus delete both A and B control plus P कोटा हबा ना both A and B कोटा हबा ना the task manager in Windows can be opened using the following key combination कोटा ना control plus shift plus ESC भी use करि परिबा control plus alt plus delete भी use करि परिबा Okay. Next. What is the function of the control panel? What is the function of the control panel? To browse the internet, to manage system settings, to create documents, to play videos. What is the function of the control panel? Kota haba. Now this is what? To manage system settings. To manage system settings. Okay. So control panel in Windows is used to configure and manage system settings such as hardware and sound, network and internet, user accounts and system and security. Okay. What is the function of Windows Explorer? Kota Windows Explorer got a function. This is managing files and folders, browsing the internet, playing videos or writing documents. Kota haba Windows Explorer got a function. This is what? Na managing files and folders. Okay, so Windows Explorer is a file management tool in Windows that allows users to view, organize and manage files and folders, copy, move, rename and delete files, access external storage devices, search for files and folders, navigation and the directory structure. Kouthire now Windows Explorer kaha dwara managing files and folders re. Which file format is used for Windows system configuration? Windows system configuration रे हमारा को फाइल टा को हम यूज करूचे .txt, .exe, .ini, .dll कोडा यूज करूचे ना Windows system configuration रे let's see this is .ini. .ini files are configuration files used by Windows and some applications to store settings. Okay. These files contain key value pairs of key values pairs to configure system's behavior are used in older versions of the Windows. Okay. Next देखिबा. What is the purpose of the recycle bin? What is the purpose of recycle bin? To store deleted files temporarily, to permanently delete files, to store software updates, to recover lost emails. कोटा हबा ना रिसाइकल बिन रा काम कोन ना किछि डिलीट फाइल को स्टोर करके रखिबो एंड टेम्पररी किछि सपोज तांकर सेटिंग थिबो 30 days फॉर 60 days और फॉर समथिंग डेज तो सेतिक भीतर कोन डिलीट हे जिवो तो टू स्टोर डिलीट फाइल टेम्पररीली. नेक्स्ट व्हिच कमांड is used to check system information in Windows? Which command is used to check system information in Windows? कोटा कोन mass configure and dxdiag, cmd or system info. Kota now this is system info. The system info command in command prompt. System info information command करूची किए ना command prompt द्वारा displays detailed system information including operating systems version and build, system manufacturer and model, installed updates and available memory and processor details. Next, what is the function of the disk cleanup utility? What is the function of the disk cleanup utility? What? To format a drive, to remove unnecessary files, to install Windows updates, to scan for viruses. What is the function of the disk cleanup utility? What is that? That is clean up करूची माने कौन remove करिबो ना to remove unnecessary files. Okay. Disk cleanup is a built-in Windows utility that helps free up space by removing temporary files, recycle bin contents, system cache files, old Windows update files. Okay. And to format a drive, formatting is done using disk management.
or the format command ame kale jeki format habo. To install Windows updates are handled by Windows update setting. To scan for virus, Windows Defender or third party antivirus software is used for the scanning viruses. Which command is used to shut down Windows from the command prompt? Which command is used to shut down Windows from the command prompt? Is the shutdown S, close W, exit V, or power off H? Kota habo? Now this is shutdown S. To shut down the command in Windows, kono shutdown hi use kariba na? The shutdown command in Windows is used to turn off the computer. Turn off kariya pe ame shutdown ko hi karuche. Next. What is the purpose of Windows update? Windows update ame kahi ki karuche nakale kon habo? Na to install new software, to update the operating system with the security patches, to delete old file. देखो delete पाई तो हबनी, uninstall drivers पाई हबनी, एदिटा भीतर कोटा हबा, let's see कोटा. Now this is to update the operating system with security patches. धीरे धीरे हमर अपडेट आसुची माने कोन डिफरेंट कोन लेटेस्ट हमको ऐड करी की दोउची, दैट मींस कोन हबो ना अपडेट होउची, राइट. So this is for what? Na update the operating system with security patches. Windows update, the update is a Microsoft service that provides security patches, bug fixes and features updates to keep the operating system secure and efficient. Which feature in Windows 11 allows users to run Android apps? Quota. Which feature in Windows 11 allows users to run Android apps? Windows subsystem for Android, Windows Defender, virtual machine or Hyper-V. Which feature na amara kono na Windows subsystem for Android WSA taku kuha jauchi jota ki introduce kara jaichi kothire na Windows 11 re. Okay, this is kon karuchi na allows users to install and run Android apps directly on their Windows PC. Okay. What is the shortcut key for renaming a file in Windows? What is the shortcut key for renaming a file in Windows? Windows रे file rename करिया ପାଇଁ को shortcut key use करा जाए F2 or F5 कोटा. Now this is what? F2. F2 presenting F2 allows users to rename. F5 कौन करूची ना this refreshing the Windows. F2 कौन करूची ना rename करूची select files रा name टाको. Okay. What does safe mode do in Windows? What does safe mode do in Windows? Tell me. Safe mode आमारो Windows रे कौन करूची ना runs Windows with minimal drivers, increase computer speed, disables all security features, installs updates automatically. कौन हबो ना this is Windows with minimal drivers. ओके सेफ मोड कौन करिबा गोटे मिनिमल ड्राइवर्स रे हमर कोन विंडो को रन करूची एंड इट इज डायग्नोस्टिक स्टार्टअप मेड इन विंडोज दैट लोड्स ओनली एसेंशियल ड्राइवर्स एंड सर्विसेज. इट हेल्प्स टू troubleshoot issues like software conflicts with driver errors or malware infections by running windows with a minimal set of programs. ओके सो ये थिला हमर 350 क्वेश्चंस कंप्यूटर जोड़ा कि बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव रो नो मैटर कि ओडिशा गवर्नमेंट हो अदर स्टेट एग्जाम पई हो चौथी पई में हमरा कंप्यूटर एमसीक्यूज पड़िबो. दिस आर द इंपोर्टेंट वन. ठीक अछि. सो थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, थैंक यू सो मच.